there in Madhya Pradesh as well. Harsha, who's been getting us all the updates. But these are the 8 Namibian cheetahs, in fact, that the Prime Minister Narendra Modi will release into the Kuno National Park. And we are being given the details of the Cheetah Conservation Fund as well that has been established, where the 5 female cheetahs that have been aged between 2 years and 5 years, and the male cheetahs are aged between 4.5 years and 5.5 years respectively as well. Now, these are the first visuals that we are putting out on your screen, where the cheetahs are going to be released into the Kuno National Park. Let me go across to my colleague Harsha, who's been tracking this story from the ground. Harsha, the moment that I guess everybody had been looking forward to is arriving here now. The cheetahs are coming to India, to Madhya Pradesh, into the Kuno National Park. Take it away. What are you picking up right now on the ground? What is the atmosphere there like? Exactly, Naveda. As you quoted, it is Prime Minister's 72nd birthday, and it is not the effort of a day or two. It is almost the effort of almost for 2 to 3 years, and more than that even, that the cheetahs from Namibia are arriving here, and they have already arrived in Kuno National Park. I'll show you the visuals as we are standing outside Kuno National Wildlife Sanctuary. The cheetahs, the 8 cheetahs from Namibia have arrived. From Namibia, they were taken from the special aircraft Boeing 747, which was specially designed for these 8 cheetahs, and from that place they came to Jaipur, and from Jaipur in Chinook helicopters they have arrived here in Kuno National Wildlife Sanctuary. The timing, we have been told that 9:40 a.m. Prime Minister will be arriving in Gwalior, and from there at around 10:45 he will be reaching at Kuno Wildlife Sanctuary, where he will release the cheetahs in the wildlife sanctuary. The age, as you told, of the female cheetah is between 2 to 5 years, and the male ones are from 5 to 5.5. So very important and exciting day for everyone, because the effort was so long, and Prime Minister's commitment towards the environment, towards the wildlife, towards the natural habitat, because he really wants to revitalize and diversify the natural habitat as well as the India's wildlife sanctuary, and therefore this was being done since long. Let me tell you that cheetah were declared extinct in 1952. Starting from 1970s, lot of efforts were being done to relocate cheetahs, but it couldn't be done. But from past 2 to 3 years, it was a regular and basic effort of the Forest Department, the Central Ministry, the government, and Prime Minister's his interest towards the ecosystem and biodiversity, that this effort and commitment could be seen today visually possible, that in Kuno National Wildlife Sanctuary, that the cheetahs are arriving. Let me tell you, there are very small villages here nearby, and they will also be benefited through the ecotourism, which will take place after once the cheetahs will arrive. As the cheetahs are arriving, and they will be released today at around 10:45 a.m. in the Kuno National Park. They will be living in the area of around 7 to 8 square kilometer. They will be 30 days quarantined in a closed space. They will be quarantined for 30 days. After that predator proof area, they will be living in 7 to 8 square kilometer of area. Let me tell you one more thing. These 8 cheetahs have been conserved by the Cheetah Conservation Fund in Namibia. Dr. Lauren Marker have been doing a lot of effort to make these cheetahs conserved, because as she prominently told in an interview, that in entire world almost only 7,500 cheetahs are only there, and it's our duty towards this extinct species, endangered species, to work towards it. Therefore, in that effort, today 8 cheetahs are being sent here. In all the 8 cheetahs in collar, there's a collar, and it is connected with a satellite device which will straight track through Namibia. Officials can also track them, and today, along with Prime Minister, there will be 10 to 15 more officials. There are vets from Namibia, there are vets from India, there is Indian Commission to Namibia will also be here, and there will be several dignitaries. And right now also the area is full of officials. Police officials are here, forest rangers are here, the district administration, the fleet of CM and SPG also has taken over this entire place of Kuno National Wildlife Sanctuary. As you can see, a definite board has also been made here at the entry point of Kuno National Park. I'll ask my VJ Hitesh to show you the entry board, where it is especially written Kuno National Park में चीता आगमन का.
So the people, the villagers of Kuno, the nearby villages, they're all welcoming cheetahs who were declared extinct in 1952 and finally being relocated to the Kuno National Park. They will set their foot in their new home in the soil of India, and really it will balance the ecosystem. The biodiversity. Well, all right. We will connect that audio line with Harsha in just a bit. But as she was also talking about how the entire effort has been taken up between India and Republic of Namibia, where in fact these cheetahs have been brought to India. 8 cheetahs that have been brought to India, where in fact 5 of them are female cheetahs and the others are males. And the Prime Minister Narendra Modi is all set to release these 8 cheetahs who are being brought from Namibia in the Kuno National Park in Madhya Pradesh. And of course, we are seeing that this is a consistent effort for saving of the wildlife and the environment, as well as India had in fact declared cheetah extinct in the country at around 1952, and since 1970s the efforts of the Indian government have been carried out to re-establish the species in its historical ranges in the country as well. And as a part of its transcontinental mission, these 5 female and 3 male cheetahs have been brought to India. In fact, some more interesting facts about how this entire journey had taken place. They have been brought in a customized Boeing 747-400 aircraft from Namibia's capital, and they had been traveling overnight as well. And we see that today the Prime Minister will be releasing these cheetahs into the Kuno National Park. And viewers, we are picking up several voices on this historic transcontinental effort for cheetah conservation as well. Shivraj Singh Chauhan has also spoken on this issue. Let's listen in. सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। लेकिन वो कभी जन्मदिन नहीं मनाते, वो तो एक एक क्षण का उपयोग अपने देश के लिए और देश की जनता के कल्याण और सेवा के लिए करते हैं। सारा देश उनका घर है और जनता उनका परिवार। इसलिए देखिए, जन्मदिन के दिन भी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य है। मध्य प्रदेश की जनता आनंदित है, प्रफुल्लित और प्रसन्न है। आज जब वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप लगा रही है, युवा मोर्चा हमारा लगा रहा है। रक्तदान शिविरों का आयोजन हो रहा है। दिव्यांग भाई बहनों को उपकरण अलग अलग भेंट किए जा रहे हैं। कई समाज सेवा के काम चल रहे हैं और आज ही पूरे प्रदेश में हर पंचायत में और वार्ड में जो अलग अलग योजनाएं हैं श्री मोदी जी की, केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की, उनसे अगर कोई पात्र हितग्राही वंचित रह गया तो उसको लाभ देने का अभियान भी चल रहा है। तो पूरा देश आनंदित और प्रसन्न है। प्रधानमंत्री जी, पूरा प्रदेश आनंदित और प्रसन्न है प्रधानमंत्री जी को अपने बीच पाकर। लेकिन कितनी बड़ी सौगात लेके आ रहे हैं। भारत में चीता समाप्त हो गया था 70 साल पहले। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पहले बाघों का पुनर्वसन किया। पन्ना टाइगर रिजर्व में खत्म हो गए थे, फिर से बस गए। मध्य प्रदेश अभी टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है। लेकिन अब देश में केवल मध्य प्रदेश के कूनों में चीते आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों वो बाड़े में जाएंगे। मतलब नीचे से जाएंगे, प्रधानमंत्री जी उनको प्रवेश कराएंगे। अपने आप में वाइल्ड लाइफ की इस शताब्दी की सबसे बड़ी घटना है। और चीते भी दूसरे महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप में, भारत में, और भारत में भी मध्य प्रदेश के कोनों में चीते आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि चीता, ये प्राणियों में सद्भावना हो, इसका प्रतीक तो है कि चीते भी बचे, उनके लिए भी तो आखिर ये धरती है। तो चीते का तो पुनर्वसन होगा ही,
लेकिन उसके साथ साथ उस इलाके में टूरिज्म के अपार अवसर खुल जाएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। एक लास्ट सवाल सर, कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी आप लोगों ने बहुत काम किया है और लगातार टूरिज्म को लेकर भी आप बात कर रहे हैं, मगर एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि मध्य प्रदेश में चीतों का आना क्या पर्यटन के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन एक परेशानी ये देखी गई, हमने देखी कि चीतों का जब पलायन हुआ या फिर चीते खत्म हुए तो लोगों का सहयोग नहीं मिल पाया। अब क्या उसको लेकर लोगों के जागरण के लिए भी कुछ होगा? चीता आने के पहले ही जन जागरण चल रहा है। हमने आसपास के गांवों के सभी साथियों को चीता मित्र बनाया है, उनको बताया कि चीता है क्या, चीता कभी आक्रमण नहीं करता इंसान पे, आदमी का शिकार नहीं करता, आदमी उससे सुरक्षित रहता है। इसलिए चीता, चीते की विशेषताएं, चीता आने से होने वाले लाभ उससे भी परिचित करा रहे हैं और चीता फ्रेंडली आसपास के गांव बन रहे हैं, वो स्वयं चीतों का संरक्षण करेंगे। लास्ट सवाल, आपको जब भी कोई टास्क मिलता है सर, आप सोते नहीं हैं और कोशिश करते हैं कि उसे सफल बनाया जाए। बाघों के समय भी हमने देखा और कई ऐसे मौके रहे जब आपको अगर कोई टास्क मिला है या फिर देश के लिए आपने अगर कुछ काम हाथ में लिया है तो आप जन जागरण अभियान चलाकर और खुद भी रात भर जाकर कोशिश करते हैं कि वो सफल हो। चीतों के लिए भी, उनके पुनर्स्थापन के लिए, देश में वापस चीते की वही स्थिति हो, उसके लिए भी आप कुछ ऐसे? देखिए, जब आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने का रोड मैप बनाओ, पूरी ताकत से भिड़ जाओ, तभी लक्ष्य पूरा होता है। जहां चाह होती तभी तो राह निकलती है। और चीते भी आज आ रहे हैं और फिर से उनका पुनर्वसन हो जाए, उनका परिवार बढ़े। और been seeing massive celebrations being taken up by the central government under the Hyderabad Liberation Day banner, whereas we have been seeing how there is a role between Liberation Day and Integration Day. As you can see right now, massive celebrations underway, and also at the same time Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde and also Karnataka Chief Minister along with Union Home Minister Amit Shah will take part in the Hyderabad Liberation Day celebrations in Hyderabad. We'll be right back after a short break. Watching Republic TV. Fulfill your dream of studying at the world's leading universities, and that too at a reduced cost with Amity's Global Study Program. Study in India with Amity for some years. Then take a transfer to leading universities in the USA, UK, Canada or Australia and earn a foreign university degree. Apply at amity.edu/global study. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। वर्ल्ड में, विश्व में जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि है जी। And if you ask Hindu not to come to India, where they will go? So भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, you cannot term them as a Pakistani and Bangladeshi. They are Hindu, they are proud Hindu. They are India. देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का जहां पर सवाल होगा, देश की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी का जहां सवाल होगा, भले ही हमारे विपक्ष की गवर्नमेंट हो, हमारे जैसे व्यक्ति कभी एक लफ्ज भी उसके खिलाफ नहीं बोले, देश का मनोबल किसी भी सूरत में नहीं तोड़े। तो इतना ही कहना चाहूंगा, भारत अब कमजोर भारत नहीं है। नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई? हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया, कितना अच्छा लगा। अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे या अपने झंडे के ऊपर गर्व नहीं करेंगे या अपने नेशनलिस्ट होने का गर्व नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको ही क्वेश्चनेबल है। I've traveled almost every country in the world and I'm proudly saying that we need to be proud that we are Indians. अनुपम खेर जी ने कहा
कि जो सिनेमा है बदल रही है और वो बदलते भारत और बदलते राष्ट्र की एक तस्वीर है। क्या भारत एक्चुअली बदल रहा है? जो अनुपम जी ने कही, जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं। हिंदुस्तानी थॉट, हिंदुस्तानी लिटरेचर, हिंदुस्तान का संत, हिंदुस्तान का एकेडमिक, हिंदुस्तान का साइंटिस्ट, हिंदुस्तान की साधारण सरपंच महिला, हिंदुस्तान की एक गायिका, वो हमारे एम्बेसडर हैं। There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pita Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset. Not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation. Top stories on the Morning Express, viewers. Shot to kick off the mega Hyderabad Liberation Day celebrations today. It's liberation versus integration in Hyderabad. Centre celebrates Liberation Day, but KCR government calls it Integration Day. It's Ghar Wapsi as 8 cheetahs from Namibia arrive in India. Prime Minister is all set to release the cheetahs at the Kuno Wildlife Sanctuary. Horrific brutality in Jharkhand's Hazaribagh. Pregnant woman crushed to death by a tractor. Kejriwal MLA Amanatullah Khan arrested to be produced in the court today. Prime Minister turns 72, wishes pour in from across the globe. Welcome back, viewers. Thank you for staying with Republic TV. We are on the Morning Express. I'm Priyanka Sharma and we are getting you all the updates of the Prime Minister's birthday celebrations as he turns 72 years old, and we are in fact tracking for you with respect to the ISRO former chief. Now we remember that visual after the Chandrayaan mission 2 where in fact the Prime Minister had consoled the former ISRO chief as well. Here's what he had to also say about the Prime Minister and his demeanor in the political life. India has come a long way in its space story. Prime Minister Modi's space appetite was testament to launching India's ambitious mission, the Chandrayaan 2, in 2019. If successful, could put India in League of Nations to land on the moon. But as luck would have it, ISRO lost contact with Vikram lander and it crashed on the moon's surface due to the last-minute technical glitch. Taking disappointment in his stride, Prime Minister Modi motivated the scientists at ISRO and even landing a shoulder of support to former ISRO chief K. Sivan, who was seemingly inconsolable after the failure of the mission. On his 72nd birthday, former ISRO chief K. Sivan shared what he felt that day. I told him, sir, I could not meet, unfortunately, the aspirations of 130 crore Indians. When I told that one, I broke down. And by seeing me that I broke down, when he hugged, not only hugging, he was in the back, he was rubbing and gently tapping. But he never spoke any word. And he was continuing that one. He understood my feeling just by touching. Just by touching, he understood my feeling. Hailing Prime Minister Modi's shoulder of support, former ISRO chief said that he felt as if the entire India was hugging him.
I felt when he was hugging and consoling, I felt the entire Bharat is hugging me and consoling me. That feeling I was going. As India forges ahead under Prime Minister's leadership, who aims in increasing India's share in the global space industry by also wooing the private sector, scientists all over India continue to heap praises on Prime Minister Modi, the visionary. Bureau Report, Republic TV. Now viewers, as the Prime Minister turns 72, we see that wishes are pouring in from across the globe, but also he is one of the few political figures who has tapped into the entrepreneurial spirit of the country as well. Here's what the entrepreneurs of the country have to say about Prime Minister's leadership. India's startup journey could not have been complete without Prime Minister Modi's contribution. Launching startup hubs state after state, he claimed that there are over 70,000 recognized startups and counting. और मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप स्टार्टअप नीति को लॉन्च करने की कृपा करें। प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, मोदी जी ने समय दिया और अपने हाथों से स्टार्टअप नीति जो पॉलिसी थी हमारी वो लॉन्च की।
literals of Amit Shah there in Hyderabad, wherein he has talked about in the morning as well. He had tweeted out and he had stated, "Greetings to the people of Telangana, Hyderabad and नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई।
हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया कितना अच्छा लगा। अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे या अपने झंडे के ऊपर गर्व नहीं करेंगे या अपने नेशनलिस्ट होने का गर्व नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको ही क्वेश्चनेबल है। आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट वी नीड टू बी प्राउड दैट वी आर इंडियंस। खेर जी ने कहा कि जो सिनेमा है बदल रही है और वो बदलते भारत और बदलते राष्ट्र की एक तस्वीर है। क्या भारत एक्चुअली बदल रहा है? जो अनुपम जी ने कही जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं। हिंदुस्तानी थॉट, हिंदुस्तानी लिटरेचर, हिंदुस्तान का संत, हिंदुस्तान का एकेडमिक, हिंदुस्तान का साइंटिस्ट, हिंदुस्तान की साधारण सरपंच महिला, हिंदुस्तान की एक गायिका, वो हमारे एम्बेसडर है। There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pita Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset, not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail. हम बहुत बाहुबली नहीं, केवल कोई ताकत बाहुबल के कारण ये ग्लोबल लीडर के रूप में इमेज बनी हो, ऐसा नहीं। और बाहुबली हम बनना भी चाहेंगे तो केवल अपने कल्याण के लिए नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम बाहुबली बनना चाहेंगे। भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, वी विल क्रिएट अ ग्लोबल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सॉइल ऑफ इंडिया। जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यू मे बी वन ऑफ द चैनल्स which is a national channel going regional and international both at the same time. My best wishes to you and your group. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। वर्ल्ड में, विश्व में जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि है जी। एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, यू कैनॉट टर्म देम एज अ पाकिस्तानी एंड बांग्लादेश। Welcome back, viewers. We see today on 17th September 1948 where Nizam's dominion of Hyderabad had been annexed into the Indian Union as well, and we had seen how the political war of words on this day has also broken out, where Amit Shah has just gone to Hyderabad. He's unfurled the tricolour. He's expected to speak on this issue as well. But the KCR government, in fact, is calling it the Telangana National Integration Day as well. My colleague Aneri is there on the ground tracking this story very closely. Aneri, good morning to you. Tell us more about this entire controversy of liberation versus integration that has broken out, and also take us through the itinerary of the Home Minister, who's about to speak and address the people as well about this entire historic day in India's history, really. Well, that's right, Priyanka. We have been seeing how there's a war of words between the political parties here in the state of Telangana. Well, BJP says it's Hyderabad Liberation Day, but the TRS and MIM wants to celebrate it as the Integration Day. And now, if we currently talk about the current visuals, as you can see on our screens, Union Home Minister Amit Shah has arrived here. He has paid his tributes to the martyrs
and also now he will be unfurling the national flag here at Parade Ground as a part of the Hyderabad Liberation Day celebrations. And also at the same time, we also have been seeing that the Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde and also Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis along with Karnataka Chief Minister Baswaraj Mumbai will also be a part of this event as the Hyderabad celebrates the Hyderabad Liberation Day on the 17th of September. We'll be right back after a short break. Keep watching Republic TV. There's a very saying in Pakistani Punjab, Khanda Pida Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset, not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail. बहुत बाहुबली नहीं, केवल कोई ताकत बाहुबल के कारण ये ग्लोबल लीडर के रूप में इमेज बनी हो, ऐसा नहीं। और बाहुबली हम बनना भी चाहेंगे तो केवल अपने कल्याण के लिए नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम बाहुबली बनना चाहेंगे। भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, we will create a global news organization from the soil of India. जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़ दोनों दिशा। You may be one of the channels which is a national channel going regional and international both at the same time. My best wishes to you and your group. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। वर्ल्ड में, विश्व में जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि है। जी। एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, you cannot term them as a Pakistani and Bangladeshi. They are Hindu, they are proud Hindu. They are India. देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता का जहां पर सवाल होगा, देश की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी का जहां सवाल होगा, भले ही हमारे विपक्ष की गवर्नमेंट हो, हमारे जैसे व्यक्ति कभी एक लफ्ज भी उसके खिलाफ नहीं बोले, देश का मनोबल किसी भी सूरत में नहीं तोड़े। तो इतना ही कहना चाहूंगा, भारत अब कमजोर भारत नहीं है। नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई? हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया कितना अच्छा लगा। अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे या अपने झंडे के ऊपर गर्व नहीं करेंगे या अपने नेशनलिस्ट होने का गर्व नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको ही क्वेश्चनेबल है। आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट वी नीड टू बी प्राउड दैट वी आर इंडियंस। खेर जी ने कहा कि जो सिनेमा है बदल रही है और वो बदलते भारत और बदलते राष्ट्र की एक तस्वीर है। क्या भारत एक्चुअली बदल रहा है? जो अनुपम जी ने कही जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं। हिंदुस्तानी थॉट, हिंदुस्तानी लिटरेचर, हिंदुस्तान का संत, हिंदुस्तान का एकेडमिक, हिंदुस्तान का साइंटिस्ट, हिंदुस्तान की साधारण सरपंच महिला, हिंदुस्तान की एक गायिका, वो हमारे एम्बेसडर है। श्री अमित शाह श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कृतज्ञ राष्ट्र सरदार वल्लभ भाई
पटेल के चरणों में अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हुआ माननीय प्रणाम करते हैं। और अब परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी जाएगी। धरा हिला गगन सा भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, we will create a global news organization from the soil of India. जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़ दोनों दिशा। You may be one of the channels which is a national channel going regional and international both at the same time. My best wishes to you and your group. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। वर्ल्ड में, विश्व में, जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि है। जी। एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, you cannot term them as a Pakistani and Bangladeshi. They are Hindu, they are proud Hindu. They are India. देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का जहां पर सवाल होगा, देश की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी का जहां सवाल होगा, भले ही हमारे विपक्ष की गवर्नमेंट हो, हमारे जैसे व्यक्ति कभी एक लफ्ज भी उसके खिलाफ नहीं बोले, देश का मनोबल किसी भी सूरत में नहीं तोड़े। तो इतना ही कहना चाहूंगा, भारत अब कमजोर भारत नहीं है। नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई? हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया कितना अच्छा लगा। अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे या अपने झंडे के ऊपर गर्व नहीं करेंगे या अपने नेशनलिस्ट होने का गर्व नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको ही क्वेश्चनेबल है। आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट वी नीड टू बी प्राउड दैट वी आर इंडियंस। खेर जी ने कहा कि जो सिनेमा है बदल रही है और वो बदलते भारत और बदलते राष्ट्र की एक तस्वीर है। क्या भारत एक्चुअली बदल रहा है? जो अनुपम जी ने कही जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं। हिंदुस्तानी थॉट, हिंदुस्तानी लिटरेचर, हिंदुस्तान का संत, हिंदुस्तान का एकेडमिक, हिंदुस्तान का साइंटिस्ट, हिंदुस्तान की साधारण सरपंच महिला, हिंदुस्तान की एक गायिका, वो हमारे एम्बेसडर है। There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pita Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset, not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail. सुरक्षा प्रहरियों की कमान कर रहे हैं श्री शेखर कुमार सिंह, सहायक कमांडेंट। और 9वीं टुकड़ी है
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सुरक्षा प्रहरियों की कमान कर रही हैं श्रीमती चेतना, सहायक कमांडेंट। आज की परेड की अंतिम टुकड़ी की ओर अग्रसर टुकड़ी है CISF की विशेष शाखा फायर विंग का अग्निदस्ता। कमान कर रहे हैं श्री विकास कुमार, सहायक कमांडेंट। India is a nation of heroes, and today we celebrate the spirit of Indianness that has inspired our leaders to change the course of the nation. Inspired by the selfless sacrifices of their companions and predecessors, these brave soldiers stand before you, ever ready to serve their motherland. गर्व से लहरा भारत के संकल्प परेड मैदान में एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को जीवंतता प्रदान की है। सरदार पटेल के सिद्धांतों को आत्मसात करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस महायज्ञ का प्रण किया है, उसमें राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपना सर्वोच्च योगदान देने हेतु तैयार है। हमें गर्व है, अभिमान है कि हम सब भारत हैं, हम सब में भारतीयता है। हमारा संकल्प है भारत जो जग में प्रसिद्ध हो, जिसमें अपनी परिभाषा हो, खंड खंड यह देश नहीं हो, खंडहर का अवशेष नहीं हो, हिमगिरी सा ऊंचा चरित्र हो, गंगा सा जीवन पवित्र हो, संस्कृतियों का संगम है यह, कर्म कर्म का उद्गम है यह, रहे सुरक्षित देश हमारा, सब विधि उन्नत सजा संवारा, सबसे प्यारा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। सभी टुकड़ियों के निरीक्षण के बाद निरीक्षण वाहन पुनः पहुंचता हुआ मंच के नजदीक। आज हमारे लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है कि हैदराबाद मुक्ति संग्राम परेड के इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। परेड कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय से मार्च पास्ट की अनुमति ली गई। परेड कमांडर की जोशपूर्ण पश्चात से उठी गूंज मानो हम सभी से ये कहती है कि हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर संख्य बलिदानों में, उन्नत मस्तक चौड़ा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। परेड कमांडर अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। परेड कमांडर एवं परेड द्वितीय कमान अधिकारी परेड के शीर्ष की ओर बढ़ते हुए आपके निरंतर बढ़ते हुए कदम यहां उपस्थित हर रणवीर के मन में यही भाव पैदा कर रहे हैं कि दो आदेश फूक दूं श्रृंगी, दो आदेश फूक दूं श्रृंगी, उठे प्रभाती राग महान, तीनों काल ध्वनित हो स्वर में, जागे सुप्त भुवन के प्राण। गत विभूति भावी की आशा ले युग धर्म पुकार उठे, सिन्हों की गन अंध गुहा में, जागृति की उनकार उठे। अश्वमेध की रणभेरी के साथ विजय का शंखनाद करते हुए ये जवान निकल पड़े हैं अपनी गौरव गाथा की महिमा के सौंदर्य से परेड स्थल को चमकाने हेतु। लय,
ताल चमकता भाल लिए ये जवान अपनी वर्दी का मान बढ़ाते हुए ये संदेश दे रहे हैं कि अमन के ये पहरेदार देश पर कभी आंच नहीं आने देंगे। ये वो रणबांकुरे हैं जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, जीत का निश्चय, गर्व से उन्नत मस्तक, अपनी क्षमता, प्रशिक्षण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास और बुलंद हौसले के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक मंच के नजदीक पहुंचते हुए सबसे आगे हैं परेड कमांडर श्री नीरज मीना, उनसे ठीक 3 कदम पीछे परेड द्वितीय कमान अधिकारी सुनील कुमार। सारे जहां से अच्छा की धुन पर डंके की चोट को अपनी कदमों तले दबाती परेड मंच के नजदीक पहुंचकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करना चाहती। हमारे ये वीर एक साथ मंच की ओर बढ़ते हुए जिनकी दहाड़ आसमान का सीना चीरकर हौसलों को परवान देती है। बड़े ही जोश के साथ अभिवादन किया परेड कमांडर, परेड 2IC और पहली टुकड़ी के कमांडर स्वाति तांडले सहायक कमांडेंट ने। ये सीआरपीएफ की महिलाएं हैं। Next comes the all-women contingent of CISF, commanded by Srimati Monica Sihag, Assistant Commandant. कंधे से कंधा मिलाकर कर्म गौरव से सीना ताने मंच के समक्ष सलामी प्रस्तुत करता तीसरा दस्ता सीआरपीएफ के रणबांकुरों का कमान कर रहे हैं श्री मोहम्मद फयाज, सहायक कमांडेंट। Next, contingent number 4 of CRPF is commanded by Shri Shahjahan PK, Assistant Commandant. मस्तक पर शौर्य की आभा लिए जोशीली कदम से आगे बढ़ती हुई 5वीं टुकड़ी सीआरपीएफ के जब्बाजों की कमान कर रहे हैं श्री श्रीराम मीना, सहायक कमांडेंट। The CRPF contingent is commanded by Shri Sudhir Kumar Singh, Assistant Commandant. कंधे से कंधा मिलाकर जोशपूर्ण कदमों के साथ मन से गुजरता आज की परेड का 7वां दस्ता कमान है श्री बाल किशन सहायक कमांडेंट के पास। Next comes contingent number 8, commanded by Shri Shekhar Kumar Singh, Assistant Commandant. सुरक्षा एवं संरक्षण के सजीव प्रतिरूप आंखों में स्वर्णिम चमक लिए मंच के समक्ष सलामी प्रस्तुत करता सीआईएसएफ के सुरक्षा प्रहरियों का दस्ता कमान है श्रीमती चेतना के पास। अग्निशमन में दक्ष जोशीली कदम ताल करता मंच से गुजरता सीआईएसएफ की विशेष शाखा फायर विंग का अग्निशमन दस्ता कमान कर रहे हैं श्री विकास कुमार साहेब कमांडेंट। और अब आ गई विश्व की सर्वोत्तम जंगल वारफेयर में दक्ष सुरक्षा बटालियन कोबरा के कमांडो वीर पराक्रमी जय के साथ जंगल के विजेता हम, घातक प्रहार करते हम। कमान है श्री विकास कुमार साहब संकेत के पास। और ये एनसीसी की टुकड़ियां हैदराबाद डायरेक्टरेट की, ये गर्ल्स हैं एनसीसी की, जो मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए मंच के सामने से निकल रही हैं। इनकी कमान है बी कल्याणी जूनियर अंडर अफसर के पास।
बड़े ही जोश के साथ कैडेट कैप्टन रमेश ने अभिवादन किया एनसीसी, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी विंग के साथ कुल 75 कैडेट मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए मंच के सामने से। और एनसीसी बॉयज, जूनियर बॉयज मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने हेतु मंच के नजदीक पहुंचते होते एक बार फिर पूरी परेड दुर्ग प्राचीर के सामने से गुजरती हुई इन्हें बढ़ते हुए देखकर ऐसा लगता है जैसे समुद्र में उठती और गिरती हुई लहरें, समय जैसे ठहर गया हो। बहुत ही शानदार परेड, बेहतरीन मार्च पास्ट। और इस बेहतरीन मार्च पास्ट के बाद स्वयं को सुव्यवस्थित करती हुई परेड द्वारा सच मत सच की कार्रवाई की जा रही है। Well, there were live visuals coming in right now from Secunderabad, where you can see Home Minister Amit Shah along with Eknath Shinde, who are present as Telangana today, Hyderabad today is celebrating state's integration to the Indian Union or liberation from the rule of Nizam. Aneri there getting us those live visuals and these are in fact the live visuals that are coming in right now of the Home Minister also paying tribute to the martyrs in Secunderabad. Remember KCR's 3-day celebration of Telangana National Integration Day, which began yesterday with rallies being taken out by students, women and youth in the constituency headquarters, will include him unfurling the national flag as well. సంగీతం ఆది ప్రణవనాదం, అందులో పురుడు పోసుకున్న నాదస్వరం, డోలు వాద్యాలతో కూడిన మంగళ వాయిద్యం, దక్షిణాదిన ఏ ఇంట శుభకార్యం జరిగినా మొదటగా వినిపించే కళ. నాదస్వరం కృతులకు పలికే వాటికి అనుకూలంగా డోలు లయ వాద్యాన్ని అందిస్తూ కళాకారులు ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. తెలుగునాట ఎందరో నాదస్వర విద్వాంసులుగా ఖ్యాతి గడించారు. వారిలో నాదబ్రహ్మ షేక్ చిన్మస్తాన్, షేక్ చిన్ మౌలానా వంటి ప్రముఖులు ఎందరో ఉన్నారు. ఈ కళకు గొప్ప గుర్తింపు. So Amit Shah's day-long visit for Hyderabad Liberation Day includes floral tributes to Sardar Vallabhbhai Patel, who was the first Home Minister of India who had unfurled the national flag after Hyderabad was acceded to the country. The live visuals that are coming in right now from the Army Parade Ground in Secunderabad. We'll try and go across to Aneri as well, who's reporting live from that very location. Remember the face-off that has also erupted between the AIMIM and the BJP over the Liberation Day versus the Integration Day, with the BJP calling it the Integration Day, whereas the TRS and the AIMIM calling it के समक्ष अपनी प्रस्तुति देता हुआ आगे बढ़ रहा है। हमारी ये परंपराएं और आज हैदराबाद मुक्ति दिवस का ये समारोह हम सब के लिए एक शुभ अवसर है और मंगल अवसर है, और इस मंगल अवसर को आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।
So, tracking closely all the updates coming in, the live visuals there on your screens from the Army Parade Ground in Sikandrabad. As the state today marks the Integration Day, which is being celebrated. Home Minister Amit Shah there, accompanied by the Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, as the state today celebrates the Telangana Liberation Day at the Parade Ground in Sikandrabad. Aneri getting us those live visuals from that very location. We'll go across to Aneri as well. But there we have the Home Minister Amit Shah and Eknath Shinde as well, as the state today celebrates the integration. वर्षा ऋतु के समापन और शरद ऋतु के आगमन से पहले तेलंगाना में बातुकम्मा फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और इस अवसर पर विशेष रूप से ये नृत्य किया जाता है देवियों सज्जनों। ఆ తర్వాత వస్తున్న కళాకారులు కొమ్మ కోయ నృత్యం ఆదివాసుల ఆదిమ కాలానికి ఆధునిక యుగానికి వారధులుగా కనిపిస్తారు. అలాంటి గిరిజన తెగకు చెందిన కోయవారు చేసే కొమ్మ కోయ నృత్యం అడవి అందాలకు సాక్షిభూతంగా కనిపిస్తుంది. తల మీద అడవి దున్న కొమ్ములతో చేసినటువంటి కిరీటాన్ని, దానిపై నెమలిని ధరిస్తారు. మెడలో డోలు వేసుకుని వాయిస్తూ అడుగులు వేసుకుంటూ ముందుకు వస్తూ ఉన్న కళాకారులకు గట్టిగా చప్పట్లతోటి అభినందనలు తెలియజేసుకుందాం. कोया डांस तेलंगाना का हमारा जनजातीय नृत्य सींग से बनी पगड़ी और उस पर मोर पंख की छटाई से बहुत ही आकर्षक बना देती है। कोया जनजाति के लोग खम्मम जिले के दुर्गम जंगलों और पहाड़ियों में रहते हैं और अपनी परंपराओं का अनुपालन इस रूप में करते हैं। खुशी और उल्लास का यह अवसर है। आज हैदराबाद मुक्ति संग्राम का ये शुभ अवसर और इस अवसर पर अपनी प्रस्तुति मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष उन्होंने रखा है। తరువాత వస్తున్న కళాకారులు డప్పు నృత్యం, ప్రాచీన సంగీత వాద్యం. డప్పు వాద్యం గ్రామీణులకు పట్టణ ప్రజలకు కూడా పరిచయం. ఈ డప్పు దరువులతో అడుగడుగునా వేసుకుంటూ అందంగా ముందుకు వస్తూ ఉన్న కళాకారుల్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. డప్పు జానపద సంస్కృతికి మన ప్రతీకగా నిలుస్తూ ఉంది. లయబద్ధంగా సాగే డప్పు వాద్యం పామరుల నుండి పండితుల వరకు ఆకర్షిస్తుంది. डप्पू का ये रंग तेलंगाना में बहुत ही लोकप्रिय है देवियों सज्जनों। केवल एक तालवाद्य यानी डप्पू के साथ इसे प्रस्तुत किया जाता है। मंदिरों में भी ये नृत्य खास तौर पर प्रस्तुत किया जाता है और यही नृत्य करती हुई हमारी महिलाएं इस समय मुख्य मंच से आगे की तरफ निकलती हुई। और एक रंग और है जो अब आपके सामने है। ఆ తర్వాత వస్తున్న కళాకారులు బోనాలు. పోతరాజు తెలంగాణ అంటేనే బోనాలు. బోనం అంటే భోజనం. ప్రజలందరినీ చల్లగా చూడాలని అమ్మవారిని బోనం సమర్పించడం ఆనవాయితీ. ఆషాఢ మాసంలో నెల రోజుల పాటు హైదరాబాద్లో బోనాల పండుగని ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. పచ్చికొండను పసుపు కుంకుమలతో అలంకరిస్తూ ఆదిశక్తి అయిన అమ్మవారికి స్త్రీలు భక్తి శ్రద్ధలతో బోనాన్ని సమర్పిస్తారు. 1677లో ఛత్రపతి శివాజీతో పాతనగరంలో అక్కన్న మాదన్న ఆలయంలో అమ్మవారిని సందర్శించిన గొప్ప చరిత్రను గుర్తు చేసుకోవాలి. तेलंगाना की ये परंपरा बोनालू और पोतुराजा 45 पुरुष और 30 महिलाओं का ये दल 75 कलाकार इसमें शामिल हैं। बोनालू तेलंगाना का एक ऐसा पर्व है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। सामान्यतः इसका आयोजन आषाढ़ मास में यानी जुलाई या अगस्त के महीने में होता है। पोतुराज को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और इसी रूप में उनकी पूजा की जाती है। అడుగడుగున ముందుకు వేసుకుంటూ వస్తున్న కళాకారులు డప్పు నృత్యం కళాకారులు. తొలుత పురుష ప్రాధాన్యంగా ప్రదర్శించే ఈ కళ మహిళలు కూడా గొప్పగా రాణిస్తూ ఉన్నారు. పట్టణ ప్రజలకు గ్రామీణులకు సుపరిచితమైనటువంటి డప్పు నృత్య కళాకారులకు గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులతోటి అభినందనలు తెలియజేసుకుందాం. तेलंगाना के सबसे लोकप्रिय और जोशीले लोक नृत्यों में से एक तेलंगाना के लोक और ग्रामीण जीवन में डप्पू का बहुत विशेष स्थान है। इस समय 75 ऐसे कलाकारों का दल तेलंगाना के डप्पू की प्रस्तुति सलामी मंच के सामने देता हुआ లంబాడి కళాకారులకి స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాము. It's a tribal dance of Telangana performed by the women, the artists wearing colorful costumes, the Lambadi or the Banjaras are
are known in Telangana are one of the Lambadi from the documenting their ancient history. It's believed that they are an Indo-Aryan race. A scholar ever suggests that they are the descendants of two brothers who intended Sri Krishna's cow. Banjaras, Lambada కళాకారులకు గట్టిగా చప్పట్లతోటి అభినందనలు. लंबाड़ी की ये प्रस्तुति लंबाड़ी समुदाय या जिन्हें बंजारा भी कहा जाता है, तेलंगाना के बहुत ही प्रसिद्ध जनजातीय नृत्यों में से एक है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य करने वाली महिलाएं रंग बिरंगे बहुत ही सुंदर आकर्षक परिधानों में सजी धजी इस नृत्य को बड़े उल्लास के साथ करती हैं। तेलंगाना का लंबाड़ी 75 महिलाओं की ये प्रस्तुति। తర్వాతి వస్తున్న అద్భుతమైన కళాకారులు మర్ఫా హైదరాబాద్ కళారూపం 18వ శతాబ్దంలో అరేబియన్ సంస్కృతి నుండి హైదరాబాద్ ప్రాంతానికి వచ్చి చేరింది. గుండ్రటి డఫ్ ను మర్ఫాగా So the centre for the first time is celebrating September 17th as Hyderabad Liberation Day. Remember, the former Hyderabad state under the Nizam merged with the Indian Union on this day more than a year after India's independence. ఊరేగింపుల్లో ప్రధానంగా మన కింగ్కోటి పార్కాకి చెందినటువంటి ఈ కళారూపానికి గట్టిగా చప్పట్లతోటి అభినందనలు తెలియజేద్దాం. तेलंगाना का मारफा बैंड 75 कलाकारों का ये दल, जिसे हादेराम मारफा भी कहते हैं, इसके संगीत का स्रोत मूलतः यमन का हदरामी क्षेत्र है। ये रंग है हमारे हैदराबाद का विशेष। తర్వాతి వస్తున్న కళాకారులు కోలాటం నృత్య కళాకారులు జానపద నృత్యం చేస్తూ చెక్క కర్రలతో చేసేటటువంటి ఈ సాంస్కృతిక వైభవం మన ప్రాచీనమైనది, తెలంగాణకి సొంతం. అలాగే దేవాలయాల్లో పండుగలప్పుడు ఉత్సవాల్లో ప్రత్యేకంగా మహిళలు చేసే కోలాటం నృత్యం. कोलाटम तेलंगाना की 75 महिलाओं का दल प्रस्तुति देता हुआ मुख्य मंच से आगे की तरफ बढ़ा है। तेलंगाना में महिलाओं द्वारा शुभ अवसरों या मंदिरों में किए जाने वाला एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है, जिसकी प्रस्तुति यहाँ हम देख रहे हैं। So colourful visuals coming in from Secunderabad, where you can see Home Minister Amit Shah along with Chief Minister Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, who are there to grace the occasion as Telangana celebrates the Hyderabad Liberation Day. In fact, the AIMIM chief on 16th of September, which is on Friday, regarded the celebration of Hyderabad's Liberation Day, saying that the word liberation is wrong, and that Hyderabad was and will remain an integral part of India, and that it should be celebrated as Integration Day. So it's Integration Day versus the Hyderabad Liberation Day, the face-off that has erupted between the BJP and the AIMIM. And as we speak, the colourful visuals coming in right now from Secunderabad, where the local, the people there are celebrating, marking the occasion with those performances that are also being held to mark the occasion. Remember, on this day, the former Hyderabad state under the Nizam merged with the Indian Union on this day, more than a year after India's independence. ఈ నృత్యానికి ప్రతీక డోలు మరియు ఒగ్గు డోలు కళాకారులు ప్రముఖంగా అందరికీ సుపరిచితం. పండుగలప్పుడు ఉత్సవాల్లో పాల్గొనే ఈ కళాకారులకి గట్టిగా చప్పట్లతోటి అభినందనలు తెలియజేసుకుందాం. आजादी के अमृत महोत्सव के काल में 75 पुरुष कलाकारों का ओगो डोला की प्रस्तुति तेलंगाना का एक और रंग है। कुरुमा समुदाय तेलंगाना का जिनका बहुत आकर्षक लोक नृत्य है ओगो डोलू। ओगो अर्थात एक विशेष तरह का तालवाद्य और इस ओगू के साथ किया जाने वाला नृत्य है ओगो डोलू। తర్వాతి వస్తున్న కళాకారులు గుస్సాడి నృత్యం. ఈ నృత్యం ప్రాచీన గిరిజన సంస్కృతికి ప్రతీకగా ప్రతిరూపంగా నిలుస్తూ ఆదిలాబాద్ ప్రాంతానికి రాజ్కొండలు కొమ్లాలు గుస్సాడి నృత్యానికి ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. వీరు దీపావళి పండుగని గొప్పగా జరుపుకుంటారు. గుస్సాడి బృందాలు దండారీలు అంటారు. వీరు గిరిజన సంగీత వాయిద్యాలను వాయిస్తూ ఒక్కొక్క గ్రామానికి అతిథులుగా సందర్శిస్తూ ఉంటారు. గుస్సాడి నృత్యంలో పాల్గొనే కళాకారుల వేషధారణ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. మెడలో రుద్రాక్షమాలలు, నడుముకు గజ్జలు, ముఖానికి విభూతి, తెల్లటి చారలు ఆదిమ జాతిని తలపిస్తూ ఉంటుంది. భుజాన జంతు చర్మం, చేతిలో మంత్రదండంకి పిలిచే కర్రను ధరిస్తూ
सुस्वागतम। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में रहने वाली जनजातीय समुदाय गोंडूरू का नृत्य गुसाडी जो इस समय मुख्य मंच के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आमतौर पर यह नृत्य शुभ अवसरों पर किया जाता है, लेकिन दिवाली के अवसर पर बहुत खास रंग होता है इस नृत्य का, जिसका नाम है गुसाडी। తర్వాతి వస్తున్న కళాకారులు డోలు కునీత డ్రమ్ డాన్సర్స్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక. The Dol Kunita is a popular folk dance from Karnataka. Fulfill your dream of studying at the world's leading universities, and that too at a reduced cost with Amity's Global Study Program. Study in India with Amity for some years. Then take a transfer to leading universities in the USA, UK, Canada or Australia and earn a foreign university degree. Apply at amity.edu/global study. The most renowned speakers, the most acclaimed legal eagles, the most distinguished academicians, and the biggest newsmakers come together on the most esteemed stage. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई? हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया कितना अच्छा लगा। अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे या अपने झंडे के ऊपर गर्व नहीं करेंगे या अपने नेशनलिस्ट होने का गर्व नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको ही क्वेश्चनेबल है। आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट वी नीड टू बी प्राउड दैट वी आर इंडियंस। For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? Mr. Jethmalani felt very passionately about this issue and had written several articles. He was an ardent believer that the issue promoted both social harmony and indeed promoted nationalism as well. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pita Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset. Not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series. Has the need for a uniform civil code become imperative today? Honorable guest speakers Shri Arif Muhammad Khan, The Prime Minister's office has tweeted regarding the cheetahs that have arrived in India, stating, and I quote, "Emplanes for Madhya Pradesh, where two major programs will be held in a historic occasions. Cheetahs will be released at the Kuno National Park." Now, Prime Minister Modi will also attend a program of self-help groups in Shirpur, is what the tweet said. This is, of course, in terms of the cheetahs that have arrived in India. Now, remember that the cheetahs were brought from Namibia to India in a special cargo flight, Boeing 717, the flight that did land in Gwalior today earlier. We can also see that Prime Minister Modi has arrived on his 72nd birthday. Modi will release the animals to an enclosure spread over 10 kilometers around 10:45 a.m. is what we understand, also in the presence of Chief Minister Shivraj Singh Chauhan and wildlife experts. Now, the cheetahs are
have been in fact flown in from southern Africa for their reintroduction in India 7 decades after the species were declared extinct in the country in 1952. So in the visuals that we can see right now, Narendra Modi has in fact arrived. Also interestingly, he will be releasing the cheetahs brought from Namibia in Madhya Pradesh's Kuno National Park as a part of his efforts to revitalize and diversify the country's wildlife and habitat. In fact, talking about the 8 cheetahs, 5 females and 3 male will be, are in this particular aircraft that they were bought. Now, the cheetah was declared extinct in India in 1952. The cheetahs that would have been released from Namibia were brought under an MOU signed earlier this year, is what we're learning. On the other hand, the release of the wild cheetahs by the Prime Minister in Kuno National Park is a part, of course, of his efforts to revitalize and diversify India's wildlife and its habitat as well. Now, the introduction of cheetah in India is being done under the Project Cheetah, which is the world's first intercontinental large wild carnivore translocation project. So this is, of course, the visuals that we're getting on our screens as well, where we've seen that Prime Minister Modi has arrived. In fact, it coincides with his birthday as well, where he will be seen releasing these cheetahs that have brought in from Namibia in Madhya Pradesh's Kuno National Park. And this, of course, is a part of his initiative to ensure and diversify the country's wildlife and habitat. Talking a little bit about the cheetah and the program as well. The cheetahs were declared extinct in India in 1952. So part of this initiative, what they've gone on to do is they signed an MOU earlier this year where the cheetahs will be released, which have been released are from Namibia, in fact, which was carried out in that special cargo flight as well. And the cheetahs, of course, came in from Namibia as well. The cheetahs, in fact, remained what we're told or what we're understanding so far is that the reason why they were also coming in this special cargo flight was to ensure that the temperature was also suitable for these particular cheetahs. Now, the 5 females and 3 female cheetahs aged between 2 and 5.5 is what we've understood so far, will each be fitted with the satellite collar. In fact, Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan will also be seen along with Prime Minister Modi when he will be coming there. Of course, we'll get those visuals later on where he'll be releasing those cheetahs as well. Well, on the other hand, of course, news coming in where Home Minister Amit Shah is also in Telangana and marking, of course, the Hyderabad Liberation Day celebrations at the Army Parade Ground in Secunderabad. This, of course, marks the celebration of the National Liberation Day in Hyderabad. We're also getting visuals in from Secunderabad, where all these celebrations are currently ongoing. We can see in the visuals as well, Amit Shah along with Maharashtra CM Eknath Shinde as well. Now, this is, of course, in terms of them celebrating the National Integration Day in Secunderabad. Now, this, of course, he also earlier paid tribute to the martyrs as well. And several cultural programs also are happening throughout the day to mark the celebration. He, of course... Gaurava Parliament Sabhyulu, Gaurava Shasana Sabhyulu, Gaurava Maji Mantrivariyulu, Gaurava Maji Adhikarulu, Ade Vidhanga Swatantra Samarayodhulu, స్వతంత్ర సమరయోధుల కుటుంబాల సభ్యులు, అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి భారత ప్రభుత్వ అధికారులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు, అనేక మంది పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీతలు, అదేవిధంగా కవులు, కళాకారులు, పోలీస్ అధికారులు, పారామిలిటరీ అధికారులు అందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను. అనేక విద్యా సంస్థల నుంచి విద్యార్థులు వచ్చారు, అనేక సంస్థల నుంచి కవులు, కళాకారులు వచ్చారు. Integration Day, and this, of course, we can see in terms of the celebrations that are happening. The KCR's 3-day celebration of Telangana Integration Day began yesterday, of course, marking off with all those rallies. But on the other hand, of course, Amit Shah's day-long visit for Hyderabad Liberation Day includes floral tributes to Sardar Vallabhbhai Patel as well. In fact, Patel, the first Home Minister of India who had unfurled the national flag after Hyderabad
ceded to India. So, of course, those visuals that we'd seen earlier of Union Home Minister Amit Shah participating in the Telangana Liberation Day celebrations at the parade ground in Hyderabad. Now, he, of course, he was also seen along with Eknath Shinde, the Chief Minister of Maharashtra as well. Now, the centre for the first time, of course, is celebrating September 17th as Hyderabad Liberation Day. Now, moving on, Prime Minister Modi is helping revive India's lost cultural heritage. Several in this field have hailed this initiative over the years and wish him the best in his future endeavours as he turns 72 today. India is known for its cultural heritage, and Prime Minister Modi is at the forefront to revive what's lost. Under Prime Minister Modi's leadership, the Indian government has recovered over 200 antiquities from around the globe that were either stolen or smuggled out of the country. From rebuilding the Ram Janmabhoomi to renovating the complex of Jallianwala Bagh Smarak and honouring tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda, to the Kartarpur corridor and building the Buddhist circuit, Prime Minister Modi has inspired the future generation to preserve India's cultural heritage. हमारे यहाँ साबरकांठा जिले में दड़वाव करके एक छोटा सा गांव है, ये विजयनगर के पास। वहाँ पर निहत्थे आदिवासियों पर जो चारों ओर से गोले दागे बंदूकें चलाई, कई लोगों को मार गिराया। जलियांवाला बाग के हत्याकांड से ज़्यादा लोग 1922 में वहीं मरे थे। It's very clear the Prime Minister understands that one of the things that colonialism did to the country was make us forget our culture, to hold our culture somewhat at as being not as important as the culture of the colonial rulers. हम भी अपनी लोकसभा में बहुत सारी शहीद स्मारक, कोई ऐतिहासिक स्थली, अब उसको सजाने में हम लगे हैं। तब जाके हमको झील पार्क बन रहा है, तब जाके हमको किसी शहीद की मूर्ति लगी थी उसको और सुंदर बना करके खड़ा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी न सिर्फ अपने से कर रहे हैं बल्कि करोड़ों लोगों को रोज वो प्रेरित भी कर रहे हैं। मोदी जी का जो विजन है, उनकी दृष्टि है, उनकी सोच है, वो बहुत विराट है और भारत के संस्कृति की जो संकल्पना ज़मानों से आ रही है उसको उन्होंने फिर से वापस वो लाए हैं। हमने उनके भीतर एक ऐसे भी साधु के दर्शन किए हैं जो भारत को मंदिर मानता है, भारत को अपना सर्वस्व मानता है। उसके परिणाम हमें देखने को तो मिले। केदार घाटी का एक कायाकल्प हो, राम मंदिर का निर्माण हो, अथवा कश्मीर के प्रति एक उनकी प्रतिबद्धता, और न केवल कश्मीर की प्रतिबद्धता, भारत की आर्थिक उन्नति, घर घर में प्रकाश पहुंचना, उज्ज्वला के माध्यम से जो इतने खाते, जनधन खाते उन्होंने खुलवाए और उत्थान किया। Indeed, Prime Minister Modi is a true custodian of India's culture. Bureau Report, Republic TV. Getting big news coming in. China has put a hold on a proposal moved at the United Nations by the US and co-supported by India to designated Lashkar-e-Toiba terrorist Sajid Mir. In fact, he's one of India's most wanted terrorists and the main handler of the deadly 2008 Mumbai attacks as a global terrorist. It is learned that Beijing put a hold on Thursday on the proposal moved by the US and co-designated by India to blacklist Mir under the 1267 Al-Qaeda Sanctions Committee of the UN Security Council as a global terrorist and subject him to assets freeze, travel ban and arms embargo. Now, this is the big news that is coming in, that China has put a hold on the proposal at UN to blacklist 2611 LET handler Sajid Mir. Now, remember, Mir is one of India's most wanted terrorists and has a bounty of $5 million placed on his head by the US
US for his role in the 26/11 Mumbai terror attacks. In fact, in June earlier this year, he was jailed for over 15 years in a terror financing case by an anti-terrorism court in Pakistan, which is still struggling to exit the grey list of the FATF. For more information on this, we're joined in by our executive editor, Niranjan, on the phone lines with us. Niranjan, we understand that China has put a hold on the proposal at UN to blacklist 26/11 LET handler Sajid Mir. How do we make sense of this move right now? Well, this is a part of the Chinese plan. But even in the past, there have been different times when Pakistan is, terrorists who are wanted or linked to attacks in India, they have tried to sort of put a hold on that in the past, and now China in its latest move has put a hold on a proposal moved at the UN, and this time the proposal was moved by the US. It was co-supported by India, and this was to designate Lashkar-e-Toiba terrorist Sajid Mir. Sajid Mir was one of the terrorists who planned the 2008 attack. Very few pictures are available of this terrorist called Sajid Mir. We wanted to designate him as a global terrorist along with America, and it is thought that last evening China put a hold on the proposal moved by America and co-designated by India to blacklist Sajid Mir under 1267 Al-Qaeda Sanctions Committee of the UN Security Council as a global terrorist, and also subjected him to assets freeze, travel ban and arms embargo. All of that has now been put on hold. All right, Niranjan, also in terms of this particular fact that he was jailed for over 15 years as well, and in fact he's one of the most wanted terrorists in the 26/11 attacks as well. So how do we look at that now, considering the fact that like you stated, US had proposed this and India had co-supported it? So how do we look at this move? Well, this is in terms of India's interest. One more thing that we need to consider and we can't ignore is that it was done on a day when the Prime Minister came face to face with Xi Jinping. So obviously the messaging is there, and I think it's evident. The messaging is evident from China. That's the most, significant takeaway. Because if China did this on a day, knowing well aware that the Prime Minister of India was going to be there at the SCO summit along with Xi Jinping, and of course the Pakistan Prime Minister was also going to be there. So the larger message here that is being sent out by China is that they will do anything to back their all-weather friend Pakistan or anybody linked to Pakistan, because Sajid Mir is directly linked to Pakistan. He's one of India's most wanted terrorists. He carried a bounty of about $5 million on his head for the 26/11 terror attacks. Pakistan itself is involved in this blame game on Masood Azhar. So while all of that, plays out on the sidelines, the fact that China has gone on to block such a move to designate Sajid Mir a global terrorist, they've tried to put a hold on the proposal of the United Nations. And I think that's the big message going out, because all of yesterday and the days preceding yesterday, we had a debate about where Lashkar-e-Toiba, where Masood Azhar was. And you had Pakistan blaming Afghanistan, Afghanistan blaming Pakistan. So while this blame game is on, I think China has just stepped in for Pakistan here once more to do them a favor. The United Nations to stop Sajid Mir from being labelled a global terrorist. Sajid Mir himself, there is no doubt about his Pakistani antecedents. He's a member of Lashkar-e-Toiba, and he was the Lashkar's operations manager for the attack. And he played a lead role in executing, planning, preparing for this attack. Something that even America has confirmed. American, the State Department in the US has gone on to, document his role. And similarly, just to tell you, it's not the first time that China has done this. They've done this in the past to hold a proposal by the US and India again to blacklist Abdul Rauf Azhar, who is a brother of Masood Azhar, who of course they have backed in the past. So this is perhaps the third or fourth terrorist that they've tried to shield for some reason. And they've repeatedly put holds on listings to blacklist Pakistan-based terrorists under Sanctions Committee.
For some reason, they want to shield terrorists, which is very, very bizarre. So, I think at a time when, the Prime Minister was there and everyone spoke about global cooperation, China essentially sending out a message to India saying that they will back terror and they will stand with Pakistan. And when the Prime Minister was there, I think these are indications that it will take a long time before India and China relationship can normalize ever again. All right, Niranjan, thank you so much for getting us all those details. This, of course, being on China putting a hold on the proposal at UN to blacklist the 2611 LET handler Sajid Mir. But moving on to other news now, we're getting in visuals from Uri sector of Baramulla area, where they're holding training for the Agnipath aspirants in remote areas of Baramulla in North Kashmir. Take a look. घूम जाओ हाँ ठीक है जम्मू कश्मीर ठीक है उसके बाद याद रखना 34 Fulfill your dream of studying at the world's leading universities, and that too at a reduced cost with Amity's Global Study Program. Study in India with Amity for some years. Then take a transfer to leading universities in the USA, UK, Canada or Australia and earn a foreign university degree. Apply at amity.edu/globalstudy. For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? Mr. Jethmalani felt very passionately about this issue and had written several articles. He was an ardent believer that the issue promoted both social harmony and indeed promoted nationalism as well. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pita Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset. Not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series. Has the need for a uniform civil code become imperative today? Honorable guest speakers Shri Arif Muhammad Khan, Justice Kurian Joseph, Shrimati Madhavi Goradia Diwan, Shri Asaduddin Owaisi, Shri Baijayant Jay Panda, Shri Faizan Mustafa. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series, 17th September from 5 p.m. to 7 p.m. only on Republic TV. भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, we will create a global news organization from the soil of India. जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़ दोनों दिशा. You may be one of the channels which is a national channel going regional and international both at the same time. My best wishes to you and your group. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है.
वर्ल्ड में, विश्व में जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि है जी। एंड इफ यू आर Now, India, of course, welcomed its Cheetahs. Namibian special aircraft landed at the Gwalior airport with Cheetahs. From there, the Air Force helicopter will fly to Kuno with the Cheetahs. Prime Minister Narendra Modi will release the Cheetahs into the Kuno National Park in Madhya Pradesh. The release of the wild cheetahs by the PM is, of course, a part of his efforts to revitalize and diversify India's wildlife and its habitat. In fact, the cheetah was declared extinct from India in 1952. Now, talking about the same, of course, an MOU was signed earlier this year. The introduction of cheetah in India is being done under the Project Cheetah, which is the world's first intercontinental large wild carnivore translocation project. For more on the story, we're joined in by Harsha, who is reporting live. Harsha, of course, you've seen the visuals of Prime Minister Modi as well, who has arrived for this. In a sense, it is ghar wapsi for these cheetahs. But what else can you tell us about the agenda, the itinerary, and everything about the 8 cheetahs? Exactly, as you yourself quoted, Ghar Wapsi, or you can say the Punarjanam, rebirth of the cheetahs, which is being happening in the Kuno National Park today. And it is quite a historic day. We are calling it historic because after 70 years, cheetahs are coming to the home soil. They are setting their foot in the Kuno National Park. We'll show you the visuals because everything is done. All the checks have been done. Protocols have been done. We are seeing the forest rangers, the officials, the district administration, the security forces, everything. One-on-one, whosoever is going inside, one-on-one checks are being done thoroughly because, yes, today Prime Minister is arriving at around 10:45. We are getting to know that around 10:45, Prime Minister Narendra Modi in a helipad will come inside Kuno National Park. So these are the updates and visuals, live and breaking and shots which we are showing you from the Kuno National Wildlife Sanctuary. You are seeing the visuals. We are here in Kuno, outside Kuno, giving you all the updates regarding the very important historic day in India's history where cheetahs are coming back to India. Stay tuned with us. You're watching Republic TV. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series. Has the need for a uniform civil code become imperative today? Honorable guest speakers Shri Arif Muhammad Khan, Justice Kurian Joseph, Shrimati Madhavi Goradia Diwan, Shri Asaduddin Owaisi, Shri Baijayant Jay Panda, Shri Faizan Mustafa. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series, 17th September from 5 p.m. to 7 p.m. only on Republic TV. भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, we will create a global news organization from the soil of India. जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़ दोनों दिशा यू मे बी वन ऑफ द चैनल्स which is a national channel going regional and international both at the same time. My best wishes to you and your group. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। वर्ल्ड में, विश्व में जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि जी। एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, you cannot term them as a Pakistani and Bangladeshi. They are Hindu, they are proud Hindu. They are India. The most renowned speakers,
the most acclaimed legal eagles, the most distinguished academicians, and the biggest newsmakers come together on the most esteemed stage. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई? हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया कितना अच्छा लगा। अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे या अपने झंडे के ऊपर गर्व नहीं करेंगे या अपने नेशनलिस्ट होने का गर्व नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको ही क्वेश्चनेबल है। आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट वी नीड टू बी प्राउड दैट वी आर इंडियंस। You're watching Republic TV. We are live from Kuno Wildlife Sanctuary. We are giving you all the updates regarding the 8 Namibian cheetahs who have been brought straight from Namibian to Indian soil. And cheetahs have already reached from Gwalior to Kuno National Park Wildlife Sanctuary, where outside this, the itinerary, the Prime Minister Narendra Modi has already left for Gwalior. He'll be reaching Gwalior at around 10:30, and from Gwalior straight from Chopper to Kuno National Park at 10:45, and then he will release the cheetahs. You're watching Republic TV. Stay tuned with us for all the live breakings regarding the cheetahs from Namibian to Indian soil. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। वर्ल्ड में, विश्व में, जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि है। जी। एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, यू कैनॉट टर्म देम एज ए पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी। दे आर हिंदू, दे आर प्राउड हिंदू, दे आर इंडिया। The most renowned speakers, the most acclaimed legal eagles, the most distinguished academicians, and the biggest newsmakers come together on the most esteemed stage. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई? हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया कितना अच्छा लगा। अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे या अपने झंडे के ऊपर गर्व नहीं करेंगे या अपने नेशनलिस्ट होने का गर्व नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको ही क्वेश्चनेबल है। आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट वी नीड टू बी प्राउड दैट वी आर इंडियंस। For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? Mr. Jethmalani felt very passionately about this issue and had written several articles. He was an ardent believer that the issue promoted both social harmony and indeed promoted nationalism as well. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pida Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset. Not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail. The
third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series. Has the need for a uniform civil code become imperative today? Honorable guest speakers Shri Arif Muhammad Khan. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pida Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset, not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail. Top stories, viewers, at 10 a.m. Home Minister Amit Shah kicks off mega Hyderabad Liberation Day celebrations at the Army Parade Ground in Secunderabad. It's liberation versus integration in Hyderabad. Centre celebrates Liberation Day, but KCR government calls it Integration Day. की स्मृति का मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, कर्नाटक के परिवहन मंत्री जो हैदराबाद कल्याण कर्नाटक क्षेत्र से आते हैं, श्री बी रामलू जी, अजय कुमार भल्ला जी, श्री तपन डेका जी, श्री उमा नंदूरी जी, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीद जिन्होंने हैदराबाद की मुक्ति के लिए सर्वस्व बलिदान दिया है, उनके परिवारजनों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना की जनता को ढेर सारी हैदराबाद मुक्ति दिन की अनेक अनेक अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज ही के दिन 1948 में पूरा तेलंगाना, मराठावाड़ा जो महाराष्ट्र का हिस्सा है और कर्नाटक का हैदराबाद कर्नाटक आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था। मैं सबसे पहले ये मुक्त हवा में जो आज भारत का ये ऐतिहासिक और बड़ा हिस्सा सांस ले रहा है, इसके लिए हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल को अनेक अनेक प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि सरदार पटेल न होते तो शायद अनेक साल और लग जाते हैदराबाद को मुक्ति दिलाने के। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने निजाम की सेना और रजाकारों को पुलिस एक्शन से परास्त कर कर इस समग्र प्रदेश को आजादी की सांस लेने का अधिकार दिया था। मैं फिर से एक बार सरदार पटेल को अनेक अनेक लोगों की शुभकामनाओं के साथ, विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को पूरे देश में आजादी का आनंद, उत्सव, मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। मगर हैदराबाद राज्य, निजाम का राज्य, एक ऐसा राज्य था जिसके भाग्य में अभी भी आजादी नसीब नहीं हुई थी। 13 महीने तक निजाम के रजाकारों की
असहनीय यातनाओं को ये पूरा क्षेत्र सहन करता रहा, अन्यायों को सहन करता रहा, अत्याचारों को सहन करता रहा। उसके बाद जब सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन लिया, तब जाकर ये हमारा तेलंगाना स्वतंत्र हुआ था। मित्रों, आज के दिन पर अनेक वीर शहीद जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, कोमाराम भील, रामजी गोंड, स्वामी रामानंद तीर्थ, एम चेन्ना रेड्डी, नरसिम्हा राव जी, साईक बनगी जी, केवी नरसिम्हा राव जी, विद्याधर गुरु जी, पंडित केशवराव कोरटकर जी जैसे अनेक अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को मैं प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, अनेक लोग ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। बीदर के रामचंद्र वीरप्पा, जेवर्गी के सरदार सारगोंड पाटिल, रायचूर के एम नागप्पा, शिव कुमार स्वामी, बाद में कनकगिरी के जयतीर्थ राजपुरोहित, यादगिर के कोलरू मल्लप्पा, कराटागी के बेनकाल भीमासेन राव, अनेक लोगों ने इस आजादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया। उनको भी मैं आज याद करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं आर्य समाज, हिंदू महासभा, बागनगर सत्याग्रह हो या उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छेड़ा गया वंदे मातरम का आंदोलन, गांधी जी द्वारा स्थापित हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, बीदर क्षेत्र के किसानों के उस वक्त के सत्याग्रह हो, ये सभी आंदोलनों को भी याद करना चाहता हूं। मित्रों, सालों के बाद यह क्षेत्र में एक मांग थी कि हैदराबाद मुक्ति दिन को सरकार की अनुमोदना के साथ मनाया जाए, मगर दुर्भाग्य की बात है 75 साल चले गए। जिन्होंने यहां पर शासन किया, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस नहीं किया। वादे तो अनेक लोगों ने किए, चुनावों में वादे किए, आंदोलनों में वादे किए, मगर सत्ता पर आते ही रजाकारों की भय से पलट गए। आज मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने निर्णय किया कि हैदराबाद मुक्ति दिन को मनाया जाएगा। और मुझे आश्चर्य भी नहीं है, आनंद है इस बात का कि जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की, अब सब लोग हैदराबाद मुक्ति दिन मनाते हैं। मनाते तो है, मगर नाम हैदराबाद मुक्ति दिन नहीं देते हैं। अभी भी जहन में डर है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, अपने दिल से वो डर उखाड़ कर फेंक दो। अब रजाकार इस देश का निर्णय नहीं कर सकते। इस देश को आजादी मिले 75 साल हो गए। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कर्नाटक, महाराष्ट्र और मेरे प्रिय तेलंगाना के सभी जनता की मन की भावना को समझते हुए इन्होंने ये हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का निर्णय किया। मित्रों, आज हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। इस मुक्ति आंदोलन की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। मुक्ति संग्राम के नामी अनामी अनेक योद्धाओं को, शहीदों को जनमानस में पुनर्जीवित कर कर नई पीढ़ी को देशभक्ति की लौ जगानी है। इस संघर्ष गाथा के बारे में मैं चाहूंगा कि पूरे पुराने हैदराबाद स्टेट के आज के तीनों राज्यों के हिस्सों में यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च हो और अत्याचारों के खिलाफ जो संघर्ष हुआ उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। और वो डॉक्यूमेंटेशन को न केवल पुराने हैदराबाद स्टेट
देश भर के कोने कोने में पहुंचाकर ये वीरों की वीर गाथा को श्रद्धांजलि दी जाए। हमारी नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना इससे पुनर्जीवित होगी और जिन्होंने भी देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया है वो उनके सम्मान के अधिकारी है, उनको अधिकार मिलेगा। मित्रों, ऑपरेशन पोलो का निर्णय महान सरदार पटेल ने, लोक पुरुष सरदार पटेल ने ढेर सारी कठिनाइयों के बावजूद लिया था, क्योंकि वो जानते थे जब तक निजाम के रजाकारों को परास्त नहीं करते, हैदराबाद स्टेट को आजाद नहीं करते, अखंड भारत का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। भारत के मध्य में ही इतना बड़ा हिस्सा अगर अपने आप को स्वतंत्र मानकर अत्याचारी शासन करता है तो महात्मा गांधी का स्वतंत्र भारत का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता। के.एम. मुंशी और सरदार पटेल, ये दोनों ने, मुंशी जी ने एजेंट जनरल ए नाटे रिपोर्ट ली और माउंटबेटन के थर्ड डोमिनियन की परिकल्पना को विच्छेद करते हुए सरदार पटेल ने यहां पुलिस एक्शन लिया और हमारा ये हिस्सा आजाद हुआ। मित्रों, 13 सितंबर से 17 सितंबर 109 घंटे तक अनेक वीर यहां पर शहीद हुए। मैं अभी अभी उन वीरों के शहीद स्मारक को श्रद्धांजलि देकर यहां आया हूं। मित्रों, रजाकारों ने अपना डर खड़ा करने के लिए ढेर सारे नए नए कानून लगाए, चाहे विधायी का अधिकार हो, निजाम की निजी संपत्ति को निजी घोषित करना हो, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगानी हो, हिंदुओं को मफूसा और गैर मफूसा के जमीन के अधिकार के कानून से अन्याय करना हो, महान तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा पर आक्रमण कर उर्दू माध्यम में ही शिक्षा होना ये आदेश करना हो, उद्योगों का निजीकरण करना हो, सरकारी भर्ती में अन्यायी भर्ती करनी हो या सांस्कृतिक आक्रमण करना हो, हर तरह से ये तीनों राज्यों की जनता को कुचलने का एक निकृष्ट प्रयास निजाम और उनके रजाकारों ने किया था, जिनके खिलाफ हमारे लोगों ने आंदोलन किया था और अंततोगत्वा हम विजयी हुए। मित्रों, कई सारे लोगों ने इसके लिए अपनी जान गंवाई। मैं 2-3 घटनाएं जरूर बताना चाहता हूं। परभणी जिले का गूड़ा गांव, जहां एक कुएं में गांव के 300 लोगों को डालकर कुएं को मिट्टी के तेल से आग लगाकर सभी लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसके साथ बिदर जिले के घोटा गांव में जिस तरह महिलाओं को अपमानित किया गया, आज भी हम नहीं भूल सकते। और मैं अभी तेलंगाना में मेरा बूथ प्रवास था, तब गुंडरामपल्ली गया था, वहां पर भी नृशंस हत्याकांड हुआ था। नरसिम्हा राव जी ने उसको दक्षिण के जलियांवाला बाग के नाम से स्वीकृति देने का काम किया था। ये सारे हत्याकांडों के खिलाफ, अन्यायी शासन के खिलाफ हिंदू महासभा, आर्य सभा और हिंदू जागृति समिति ने केशवराव कोरटकर और वामनराव नाइक जैसे महानुभावों ने महान लोकमान्य तिलक से प्रेरणा लेकर ये आजादी का आंदोलन चालू किया था। मुझे आज बड़ी संतुष्टि है, मोदी जी ने हैदराबाद मुक्ति दिवस को संपूर्ण शासकीय आदेश के अंतर्गत मनाने का निर्णय कर हैदराबाद मुक्ति के आंदोलन को एक प्रकार से स्वीकृति और श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और तेलंगाना की जनता को भी कहना चाहता हूं, आज भी जिन लोगों को 17 सितंबर को
हैदराबाद मुक्ति दिन बोलने में शर्म आती है, उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, ये हजारों लोग जो शहीद हुए हैं, जिसके आधार पर आज आप सत्ता पर बैठे हो, अगर उनको श्रद्धांजलि नहीं देते तो उनके साथ आप द्रोह कर रहे हो। तेलंगाना की जनता को भी मैं कहना चाहता हूं, ये महान तेलंगाना राज्य की रचना जिस उद्देश्य से हुई, सत्ता पर बैठकर उद्देश्यों को जो भूल जाते हैं, जनता ने उनको नहीं भूलाना चाहिए। मुझे विश्वास है मित्रों कि ये जो आज मोदी जी ने परंपरा शुरू की है हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने की, ये इससे भी ज्यादा जोर शोर के साथ अनेक सालों तक मनाया जाएगा और हैदराबाद को स्वतंत्र करने वाले सभी स्वतंत्र सेनानियों के शहीदों के सम्मान में यशोगान हर साल गाए जाएंगे। मैं फिर से एक बार पुराने हैदराबाद राज्य के आज के तीनों राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र और ये तेलंगाना के पूरा राज्य के सभी नागरिकों को हैदराबाद मुक्ति दिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जिस तरह से मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी जिस तरह से देश को समृद्ध करने के रास्ते पर आगे चल पड़े हैं, मोदी जी जिस तरह से भारतीय और भारतीयता को उच्चतम शिखर पर बिठाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मोदी जी जिस प्रकार से हमारे सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, वो उपक्रम निश्चित रूप से चालू रहेगा और हैदराबाद मुक्ति दिन का मनाना भी निश्चित रूप से चालू रहेगा। कोई मनाए न मनाए, भारत सरकार खुली छाती के साथ, हिम्मत के साथ हैदराबाद मुक्ति दिन मनाएगी। यही बात कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। फिर से एक बार सभी नागरिकों को तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के सभी नागरिकों को अनेक अनेक अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का। देवियों सज्जनों, गुजरात में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रेय जाता है अखंड भारत की नींव रखने का। आज वर्तमान में गुजरात की धरती पर ही जन्म लेने वाले देश के गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सरदार पटेल के संकल्पों को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं अपने चिंतन से, अपने विजन से और अपने एक्शन से। एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए हम आभार व्यक्त करें माननीय श्री अमित शाह जी का। धन्यवाद महोदय। और अब परेड द्वारा जय घोष किया जाएगा। परेड में शामिल सभी कमांडर अपने क्रिच को वापस अपने स्थान पर रखते हुए और कुछ ही क्षणों में इस भव्य परेड का विसर्जन होने वाला है। इसी के साथ परेड में शामिल टुकड़ियां अपने निर्धारित स्थान की ओर प्रस्थान करने के लिए एक निरीक्षण लाइन पर कदम ताल करती हुई हैदराबाद मुक्ति संग्राम दिवस परेड आज सिकंदराबाद के इस ऐतिहासिक परेड मैदान में संपन्न हुआ। आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टुकड़ियां अपने जोश और उत्साह के साथ समारोह के अनुसार सुंदर पोशाकों में बहुत ही शानदार परेड का नजारा प्रस्तुत किया है। గౌరవనీయులు శ్రీ అమిత్ షా జీ ఎంతో మంది స్వాతంత్ర సమర యోధుల కృషి పట్టుదల త్యాగానికి ఫలితంగా హైదరాబాద్ కి విమోచన లభించిన And there you have it, viewers, a very crucial, a very important speech that was just given by the Union Minister Amit Shah there in Hyderabad, where in fact he has spoken about the entire controversy that has broken out with respect to calling it a Hyderabad Integration Day and a Hyderabad Liberation Day,
And he has called out those political elements, including the KCR, in fact, taken a dig at them as well, saying that they are shying away from calling it a Hyderabad Liberation Day. He has reiterated the historic significance of today and the kind of operation that had been carried out by Sardar Patel as well, to then make Hyderabad accessing into the India as well. Now, viewers, Union Railway Minister Ashwini Vaishnav attends the opening of the Swachhata Pakhwara at the Hazrat Nizamuddin railway station in Delhi as well. Let's take a look as to what happened there. India's startup journey could not have been complete without Prime Minister Modi's contribution. Launching startup hubs state after state, he claimed that there are over 70,000 recognized startups and counting. और मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप स्टार्टअप नीति को लॉन्च करने की कृपा करें। प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, मोदी जी ने समय दिया और अपने हाथों से स्टार्टअप नीति जो पॉलिसी थी हमारी वो लॉन्च की। और केवल इतना नहीं, जो सफल स्टार्टअप्स थे उनको चलाने वाले हमारे नौजवानों से, बेटे बेटियों से उन्होंने चर्चा भी की, बात भी की, पूछा और उनका हौसला भी बढ़ाया। Calling startups India's backbone, Prime Minister Modi declared January 16th as National Startup Day, acknowledging the contribution they make in the country's growth story. I started Urban Company 8 years back, and at the time, India's startup ecosystem was very nascent. We only had 1 or 2 unicorns and a handful of startups. In the last 8 years, the ecosystem has grown tremendously. Today, we have over 110 unicorns and tens of thousands of startups across sectors. He is truly a startup prime minister. He has many attributes of an entrepreneur, right? He thinks big in terms of impact, but before doing so, he experiments that at a small scale. His ability of being able to look at large scale initiatives but then tracking its execution very closely. So today we have the third largest startup ecosystem in the world. Not just is Modi sir helping get more respect within the government, creating this fund of funds, getting the states to compete with each other, but he's also engaging with the startups. Entrepreneurs across India hailed Prime Minister Modi's vision and contribution in boosting India's startups, taking the country forward in the 21st century. In 2016, I very clearly remember how PM Modi ji inaugurated the Startup India mission at Vigyan Bhavan. But very few could actually sense what was going to happen. Cut to 2022, 6 years, and we have seen how the startup growth rate has increased. People talk about PM Modi being like the startup PM, but it's actually not the startup PM. He's more like the startup CEO, the entrepreneur himself, who's leading the largest startup on the planet. Since our Honorable Prime Minister took over in 2014, India's startup ecosystem has been thriving, and we are well on our way to become the startup capital of the world. The number of registered startups in India have grown to massive 73,000 this year. More than 50% of them come from Tier 2 and Tier 3 cities. We now have more than 100 unicorns and growing. All of this was never possible without PM's vision. I think this is the first government under the leadership of Mr. Modi that has comprehended that and understood the importance of startups to the Indian economy. That a lot of future growth. Infosys was a startup in 1980. Look where it is today. HCL Technology was a startup. All these companies are startups. They're giant companies today. So the giant companies of tomorrow are startups of today. And a lot of the growth in the Indian economy will be driven tomorrow by the startups of today. With Prime Minister Modi making India truly a startup nation.
Throughout our journey, one very important highlight was being nominated for Startup India Awards. While hearing his speech, I was just surprised when the Honorable Prime Minister mentioned my name and he gave a detailed, long feedback on the recommendations we put forward. I think that moment was truly a validation, not just for a startup like ours, but everyone who believed in the recommendations from the sector. What we have seen in the Indian ecosystem, especially since the Prime Minister took charge and brought spotlight on Startup India, is something that is very, very monumental and something that is a key instrument in putting India on the startup map of the world today. Even more inspiring for me was before our stall, next to our stall, before our stall, was a stall which had a young blind girl who had innovated and built a cane walking stick which could recognize the kind of obstacles ahead. He spent 15 to 20 minutes with her, understanding the technology and inspiring her to do more. As Prime Minister Modi turns 72, India's growth ambassadors are rooting for Prime Minister Modi as he continues to support India's startups. Bureau Report, Republic TV. You're watching Republic TV. Stay tuned. We will be right back after a short break. But after the other side of the break, we'll show you we are outside Kuno National Park, Wildlife Sanctuary, where Prime Minister Narendra Modi will release 8 Namibian cheetahs here in the Kuno National Park. So we are here. Stay tuned with us. We'll be right back after a short break. नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई? हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया कितना अच्छा लगा। अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे या अपने झंडे के ऊपर गर्व नहीं करेंगे या अपने नेशनलिस्ट होने का गर्व नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको ही क्वेश्चनेबल है। आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट वी नीड टू बी प्राउड दैट वी आर इंडियंस। For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? Mr. Jethmalani felt very passionately about this issue and had written several articles. He was an ardent believer that the issue promoted both social harmony and indeed promoted nationalism as well. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pita Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset. Not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series has the need for a uniform civil code become imperative today. Honorable guest speakers Shri Arif Muhammad Khan, Justice Kurian Joseph, Shrimati Madhavi Goradia Diwan, Shri Asaduddin Owaisi, Shri Baijayant Jay Panda, Shri Faizan Mustafa. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series, 17th September from 5 p.m. to 7 p.m. only on Republic TV. भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो,
We will create a global news organization from the soil of India. जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़ दोनों दिशा। You may be one of the channels which is a national channel going regional and international both at the same time. My best wishes to Welcome back, viewers. As the Prime Minister turns 72 and we are tracking the landing of the cheetahs, the 8 cheetahs into the Indian soil as well. We are tracking for you what Prakash Javadekar, the former Union Minister, as well had to say about the bold initiatives of the Prime Minister regarding safeguarding of the environment and the wildlife as well. Let's take a look. As Prime Minister Modi turns 72, the nation hails his contribution, not just to the environment, but preserving India's wildlife. और अब तो चीते जो लुप्त हुए थे वो भी प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं। तो ये उनका प्यार है प्रकृति का, और इसलिए भारत फले फूले और भारतीय जीवन शैली का उन्होंने दुनिया में प्रचार किया और नारा दिया कि वन प्लैनेट मेनी एफर्ट्स। And who can forget how Prime Minister Modi put the nation on the world map, giving wings to the International Solar Alliance. जहाँ सोलर एनर्जी बहुत अच्छी तरह से आ सकती हो सकती है, उन देशों का संगठन बनाना चाहिए, लेकिन उस समय नहीं बना। प्रधानमंत्री ने पेरिस में वो सफल कर दिखाया। आज 100 से अधिक देश इस अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के पार्टनर है। ये मोदी जी की लीडरशिप है। With 109 countries joining the alliance, the signatories have vowed towards making solar energy 24/7 affordable to all. Bureau Report, Republic TV. And slipping into a very short break here, viewers, tracking for you all the details as far as the 8 cheetahs are concerned from the Republic of Namibia who are landing in the Indian soil. And of course, the Prime Minister will be releasing them in Kuno National Park as well. Stay tuned for updates on the other side. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pida Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset, not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series. Has the need for a uniform civil code become imperative today? Honorable guest speakers Shri Arif Muhammad Khan, Justice Kurian Joseph, Shrimati Madhavi Goradia Diwan, Shri Asaduddin Owaisi, Shri Baijayant Jay Panda, Shri Faizan Mustafa. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series, 17th September from 5 p.m. to 7 p.m. only on Republic TV. भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, we will create a global news organization from the soil of India. जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़ दोनों दिशा. You may be one of the channels which is a national channel going regional and international both at the same time.
My best wishes to you and your group. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। वर्ल्ड में, विश्व में, जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि जी। एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, you cannot term them as a Pakistani and Bangladeshi. They are Hindu, they are proud Hindu. They are India. The most renowned speakers, the most acclaimed legal eagles, the most distinguished academicians. Welcome back, viewers. Straight away going to the biggest story that we are tracking today of the 8 cheetahs that are going to be released into the Kuno National Park today by the Prime Minister. And we had seen this is a part of an integrated effort for making sure that these cheetahs can be rehabilitated here in the Indian soil in the Kuno National Park. Now, the Indian government is in fact set to welcome these 8 cheetahs, 5 of which are females and 3 of them are males, for the cheetah reintroduction project in India from the Republic of Namibia. And we had seen that an customized aircraft, in fact B747 jumbo jet airplane, that had been carrying these cheetahs to the Indian soil, and then they will be brought to the Kuno National Park in Madhya Pradesh via helicopter. And then, of course, the Prime Minister will be coming there and releasing these cheetahs into the Kuno National Park as well, as this is an integrated effort by the Indian government to make sure that efforts are taken for the rehabilitation of them as well. Harsha, my colleague, is reporting from the Kuno National Park. Then we go across to her. Harsha, tell us more about the updates of these cheetahs that are expected to be there in the Indian soil. They'll be coming to the Kuno National Park. What's happening there? What are the facilities that have been made sure that have been made sure by the Indian government before the Prime Minister also comes there at the Kuno National Park? Exactly. We are getting to know that Prime Minister have already reached Gwalior, and in some time he will be inside Kuno National Park, because we are getting to know that at 11 a.m. sharp at 11 a.m. the program will start. At 10:45 Pradhan Mantri Narendra Modi is going to release all the 8 Namibian cheetahs from their boxes, from their cages, to the Kuno National Park. Let me give you a sense of the visuals of how this Kuno National Park Wildlife Sanctuary actually looks like, because if you will see the Aravali peaks, this is the entire spread of Kuno National Park in thousands and thousands of kilometers. But as you were stating, that cheetahs have been brought from Namibia to India, but the very basic things which have been made together to understand is that the habitation, the soil, the terrain, the grasslands, how they are very important. Now the cheetahs are coming from the African country to India. Many site inspections have already taken place after 2020, when Supreme Court finally gave its nod to Project Cheetah. Because if we not to forget, I'll like to tell you the sequences, what exactly has happened in India from 1947 till 2022. In 1947, there were the last 3 cheetahs which were hunted by the royalty. They forgot that there are only very less number of cheetahs who are left in the country. They hunted down those last 3 cheetahs. After that, in 1952, cheetahs were declared extinct. After that, after 1970s, the project that cheetah should be reintroduced to the country was being talked about. In 1972, the talks were beginning for calling the cheetahs, Asiatic cheetahs, to Iran. And then in 2008-2009, at the time of UP government, Jairam Ramesh talked a lot, and the panel discussion took place. The proposal was sent in 2009. Global experts
also met together to think about that now the cheetah should be bought from Africa. In 2013, Supreme Court quashed the cheetah relocation, reintroduction to India. In 2020, finally Supreme Court gave its approval in 2021. Then the inspection took place in Rajasthan and Madhya Pradesh. And then finally in 2022, MOU was signed between government of Namibia and Indian government under the campaign of Project Cheetah, which is a very important project. We really need to understand, if you are talking about environment, if you are talking about wildlife, if you are talking about ecosystem and biodiversity, how is very important, because this Kuno National Park used to be home for Asiatic lion. Therefore, some are also stating that Asiatic lion were the endangered species. The talks were about Asiatic lion. Now the cheetahs are being bought here, will be kept here in this Kuno National Park, and all the arrangements really have been made, because we went inside Kuno National Park, got the sense of how this exactly Kuno National Park looked like. It's spread in thousands and thousands of kilometers. The cheetahs will be kept in 9 different compartments. We are getting to know that among those 8 cheetahs, 2 male cheetahs are like brothers. They are really close since the time Cheetah Conservation Fund, which is in Namibia, which is looking after these 8 cheetahs, was working into it. So those 2 cheetahs compartments will be very close by, and the cheetahs will be kept in the area of 7 to 8 square kilometer. And before that, today, after they will be released, they will be kept in 30 days quarantine in an enclosed space. So these are the protocols which are really being followed. But before that, when the Project Cheetah was signed, when the MOU was signed between Namibia and India, after that many thorough inspections were taken place. In fact, the vets, the forest rangers, the environment ministry, the departments, biologists, ecologists, environmentalists, there are so many people who are involved in these projects. Even the training to Kuno National Park authorities were also given by the Cheetah Conservation Fund members to these forest rangers, how to look after these cheetahs. Let me also give you a sense of that these cheetahs who are bought, around their neck there is something is tied around their neck which has a satellite GPS transaction, and now this satellite will also track cheetahs with the Namibia authorities as well. The authorities in Namibia will get to know the tracks and records of the cheetahs who are here in Indian soil. So such management is being done 10 to 15 days. We are getting to know the vets from India, the vets from Namibia, even in fact the ecologists, in fact the Indian High Commission to Namibia was already here. Is already here. He came along with a convoy of people who were there in the aircraft. And initially, when we started our discussion, telling our viewers that there was a special aircraft which was specially designed for these cheetahs. Let me tell you that it is Boeing 747, especially designed, the box, the cages in which these cheetahs were kept. They were ventilated. They were in the prospect to were made like that. The cheetah should not feel aggressive. So these are all the updates we are giving to you. Keep watching Republic TV. We'll be right back after a short break. भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, we will create a global news organization from the soil of India. जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़ रहा है. You may be one of the channels which is a national channel going regional and international both at the same time. My best wishes to you and your group. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है. वर्ल्ड में, विश्व में, जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि जी. एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, you cannot term them as a Pakistani and Bangladeshi. They are Hindu, they are proud Hindu. They are India. The most renowned speakers, the most acclaimed legal eagles, the most distinguished academicians, and the biggest newsmakers.
come together on the most esteemed stage. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई? हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया कितना अच्छा लगा। अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे या अपने झंडे के ऊपर गर्व नहीं करेंगे या अपने नेशनलिस्ट होने का गर्व नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको ही क्वेश्चनेबल है। आई हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट वी नीड टू बी प्राउड दैट वी आर इंडियंस। For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? Mr. Jethmalani felt very passionately about this issue and had written several articles. He was an ardent believer that the issue promoted both social harmony and indeed promoted nationalism as well. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pita Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is. Welcome back, viewers. Once again, tracking for you all that is happening at the Kuno National Park, where the 8 cheetahs are expected to land. And in fact, the Prime Minister will be releasing them in the Kuno National Park as well. This is a part of the integrated effort between India and Republic of Namibia as well, where a special aircraft carrying these 8 cheetahs has landed in the Indian soil as well. Let me go across to my colleague Harsha, who's reporting live from the Kuno National Park. Harsha, take it away. Tell us more about the kind of arrangements that have been made, the kind of arrangements that have also been made to integrate these cheetahs into the Kuno National Park, making sure that the other wildlife is also not disturbed and they are also given the kind of habitat that they are also used to, Harsha. Exactly, Priyanka. As you stated that this is such a historic day and there's so many arrangements, so many relocation which is being done. After this, 8 Namibian cheetahs are being brought here in Kuno National Park. Just a wait of, Priyanka, 2 to 3 minutes more, because we are getting the news that Prime Minister Narendra Modi has already reached Kuno National Park, and in some time he will release the 8 Namibian cheetahs. The first visuals we already got from Didi, that how these cheetahs have been bought in cages. We have got to know that the stage in which Prime Minister Narendra Modi is, that is 12 feet long and the cage is almost 6 feet, and he'll be releasing by pulling the lever of the cage. But the excitement, Priyanka, can clearly be seen amongst the villagers, because this is Shiopur, very small village of Madhya Pradesh, where this Kuno National Park is located. I'll ask my video journalist Hitesh to show you the visuals, how so many villagers are gathered here to get a sense of, to see the visuals, if they can see the CM if they can get a first glance of cheetah, or will they get to go inside National Park, because so much inspection, site inspection, thorough checks were done before getting cheetahs to this Kuno National Park. It was thoroughly being thought which place will be better for cheetahs. Is it Rajasthan or is it Madhya Pradesh? Many site locations were, many site inspections were done, because Priyanka, we have to understand that these cheetahs are being bought from Namibian. The habitation, the soil, the terrain, the grasslands are very different, and we have got to know that for cheetah the favorable place is the long grass, and along with that the grassland also, because that is the perfect place for cheetahs to be there, to stay there. And you can clearly see that people, the excitement you can clearly see among the villagers, how happy they are waiting, because first time they have seen so much of media outside their village. All the protocols, the authority check, the security checks are being thoroughly done by the forest rangers, authorities, officials here. Everything is done. Just the wait for Prime Minister Narendra Modi to open the lever and release those cheetahs into the
Kuno National Wildlife Sanctuary. And also I would like to tell you, Priyanka, that this Kuno National Park is a home for Asiatic lion and also for leopards, and we are told that the 12 square kilometer of the range where this predator will roam free in this wildlife sanctuary, in this national park, that particular areas leopards have been cleared. Leopards have been sent to other place, not in that spread of not in that 12 square millimeter of area. So these are the updates and all the live and action and drama we are showing you from outside Kuno National Park. Stay tuned with us. You are watching Republic TV. A lot more to show you about the 8 cheetahs which are being brought from Namibian to Indian soil. Stay back, stay tuned, keep watching Republic TV. The most renowned speakers, the most acclaimed legal eagles, the most distinguished academicians, and the biggest newsmakers come together on the most esteemed stage. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई? हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया कितना अच्छा लगा। अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे या अपने झंडे के ऊपर गर्व नहीं करेंगे या अपने नेशनलिस्ट होने का गर्व नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको ही क्वेश्चनेबल है। आई हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट वी नीड टू बी प्राउड दैट वी आर इंडियंस। For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? Mr. Jethmalani felt very passionately about this issue and had written several articles. He was an ardent believer that the issue promoted both social harmony and indeed promoted nationalism as well. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pida Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset. Not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series. Has the need for a uniform civil code become imperative today? Honorable guest speakers Shri Arif Muhammad Khan, Justice Kurian Joseph, Shrimati Madhavi Goradia Diwan, Shri Asaduddin Owaisi, Shri Baijayant Jay Panda, Shri Faizan Mustafa. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series, 17th September from 5 p.m. to 7 p.m. only on Republic TV. Welcome back, viewers. Cutting across straight to the first pictures that we are getting of the Prime Minister arriving at Kuno National Park in Madhya Pradesh, where he is all set to release these 8 cheetahs that have been flown in from the Republic of Namibia. And we are tracking for you all the latest as far as the arrangements that have also been made for these 8 cheetahs, that are 5 female cheetahs and the other are male cheetahs, which are aged between 2 years, 5 years, 4.5 years and 5.5 years respectively as well. And we are tracking for you all the latest as far as the arrangements that have also been made while flying these cheetahs from the Republic of Namibia.
and the kind of aircraft that had been specially designed to make sure that these cheetahs had been safely relocated from Namibia to India to the Kuno National Park as well. And now we see the first pictures of the Prime Minister also arriving at the Kuno National Park. Harsha, my colleague, is right there at the Kuno National Park as well. Harsha, tell us more about what's happening around you now that the Prime Minister has arrived. Exactly, Priyanka. We are getting to know that Prime Minister Narendra Modi has reached, and now, as you can see, the visuals which we are getting from inside Kuno National Park. Just a few seconds left, and Pradhan Mantri Narendra Modi will open the lever, and the cheetahs will be released in the Kuno National Park. A very important day entire country was awaiting, because it is an effort, commitment, and also the wait of years and years. And finally, the colors of the wait are clearly being seen on screen, and Prime Minister Narendra Modi, on occasion of his 72nd birthday, is now releasing the cheetahs which have been brought from Namibia to Indian soil, and clearly their rehabilitation, their relocation, that taking care of those cheetahs are the top priority. And let me tell you that from Namibia, the executive director of Cheetah Conservation Fund, Lauren Marker, has also come here to the Kuno National Park. She'll be staying here for some while, monitoring the activities of cheetahs in Indian soil. Though there are many things which are very common if we compare to Namibia soil and Indian soil here in Kuno National Park. If we talk about the long grasses, if we talk about the grassland, if we talk about between those grassland, the water facility, the carbon sequestration which we talk about, all these things are very similar to one which is in South Africa, in Namibia, where these cheetahs were already living. So these are the visuals which we are getting, and such a historic day, almost after 7 decades, the cheetahs have been released in Indian soil, and everything depends right now. And so you are watching Republic TV. We are giving you all the updates from Kuno National Park. Stay tuned with me, because on the other side of the break, more updates on the Namibia cheetahs brought to the Indian soil. Stay tuned, stay back, keep watching Republic TV. We'll be right back after a short break. For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? Mr. Jethmalani felt very passionately about this issue and had written several articles. He was an ardent believer that the issue promoted both social harmony and indeed promoted nationalism as well. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th, only on Republic TV. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pita Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset. Not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series. Has the need for a uniform civil code become imperative today? Honorable guest speakers Shri Arif Muhammad Khan, Justice Kurian Joseph, Shrimati Madhavi Goradia Diwan, Shri Asaduddin Owaisi, Shri Baijayant Jay Panda, Shri Faizan Mustafa. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series, 17th September from 5 p.m. to 7 p.m. only on Republic TV. भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, we will create a global news organization from the soil of India. जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़ रहा है. You may be one of the channels
which is a national channel going regional and international both at the same time. My best wishes to you and your group. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। वर्ल्ड में, विश्व में, जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि जी। एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, you cannot term them as a Pakistani and Bangladeshi. They are Hindu, they are proud Hindu. They are India. The most renowned speakers, the most acclaimed legal eagles, the most distinguished academicians, and the biggest newsmakers come together on the most esteemed stage. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स। Top headlines at 11 a.m. Home Minister Amit Shah kicks off mega Hyderabad Liberation Day celebrations at Army Parade Ground in Secunderabad. It's liberation versus integration in Hyderabad. Centre celebrates Liberation Day, but KCR government calls it Integration Day. It's Ghar Wapsi for 8 cheetahs from Namibia arrive in India. Prime Minister Modi all set to release cheetahs at Kuno Wildlife Sanctuary in India. Horrific brutality in Jharkhand's Hazaribagh. Pregnant woman crushed to death by a tractor. Prime Minister Modi turns 72, wishes pour in from across the globe. Thanks for tuning in this Saturday morning. Our top story, India has welcomed the cheetahs. Nambian special aircraft landed at Gwalior Airport just a short while back with the 8 cheetahs from the Air Force helicopter that will fly to Kuno with the cheetahs. In fact, Prime Minister Modi will release the cheetahs into the Kuno National Park in MP. So that's a big day today as cheetahs are back in the country and India there welcoming the 8 cheetahs. And this, of course, comes on a day when Prime Minister has turned 72. We'll go across to Harsha as well, who's reporting live from Kuno. But remember, it's India's biggest year in a decade for wildlife. And MP's Kuno that has been picked up as home for the African cheetahs. Now remember, the cheetahs intercontinental translocation project is taking place at a time when India has completed 75 years of independence. We have Harsha there with us live from Kuno. Harsha, if you could talk to us more about how significant the day is, given the fact that it is almost like history in the making because the cheetahs are coming back after almost 7 decades. Exactly, Priyanka, as you quoted, after 70 years, 7 decades almost, the cheetahs are being relocated, reintroduced to the Indian soil. They are setting their foot on the Indian soil. We can say that they have already set their foot on Indian soil because we got the visuals of Prime Minister Narendra Modi, how the visuals of cheetahs could be seen and Prime Minister Narendra Modi could be seen. It is his 72nd birthday, and we, if not to forget that from the Prachir of Lal Killa on the 75th year when we were celebrating the 75 years of independence.
he clearly stated that we have to work towards Panch Pran, and this Panch Pran also involves to take care to protect our wildlife, our environment, the ecosystem, the biodiversity. We have to contribute towards it, and we can see that once after in 2020 when Supreme Court gave its approval to the project Cheetah, under which the MOU was signed, and sooner the site inspection, the thorough check, the habitation check was started sooner, and the Narendra Modi government, the BJP government and the central government jumped on this entire inspection of that. Really they have to get those cheetahs from Namibia to Indian soil, and therefore this project is very important. In 2022 only, earlier this year only, the MOU was signed, and after that we are seeing that this month how the Namibia cheetahs are coming to Indian soil, to the home soil. We can say it Ghar Vapsi, we can say it Punarjanam, we can say the relocation of these cheetahs have been done very nicely, very precisely, seeing all the activities have been taken care of, the attitude of cheetahs as well. Because not to forget, they were bought, these cheetahs were carried in Boeing 747, the very special aircraft which was specially designed for these cheetahs. Seeing their behavior, seeing how they could be calmed down, seeing that, all those people, cheetahs should not get aggressive, and the 16 hours non-stop flight from Namibia till Gwalior without even stopping for a fuel. Direct flight for all those cheetahs came here till Gwalior, and from Gwalior, from Chinook-Holi helicopter straight to the Kuno National Park. We are showing you visuals. These are the ways. This is entire lane. This is the entry of the Kuno National Park. We are standing here. We are showing you the entry point, the forest ranger, the officials here. You can see this is the road which straight goes to the Kuno National Park, inside where Prime Minister Narendra Modi and in fact all the officials of the Cheetah Conservation Fund and also the district officials, the state government officials, all the officials are present. Indian High Commission to Namibia is also here. So such a historic day is it now. The one challenge, a big challenge, it is to monitor all those cheetahs, to take care of those cheetahs, see how they are accepting this habitation which is told to be according to them where they already were living in Namibia. So these are the things which has to be monitored, because the first batch, Priyanka, not to forget, it is the first batch which have been sent to India, and this project Cheetah is a long project, as Dr. Lauren Marker says of Cheetah Conservation Fund. She clearly says this is the first batch. We are seeing the vision of 10 years that how many endangered species could be helped and they can be relocated and reintroduced to the places they are now extinct to. So this is the project of more than 10 years, vision of another 10-15 years. This is the first batch, and in second batch more cheetahs will be sent to India. And once the cheetahs, these Namibia cheetahs, 8 cheetahs, 3 male and 5 female cheetahs, if they survive nicely in this environment of Madhya Pradesh Kuno National Park, they will, from this national park, they will be again sent to different national park, because the reproduction process has to take place. The quantity of the cheetahs have to increase, because we are saying कि संख्या बहुत ज़रूरी है. The number is very important, because right now in India there is no cheetah. In 1947 there were only 3 cheetahs. They were hunted by the royalty. The British colonials didn't think that cheetahs were so important. They were so vulnerable that they got extinct. They were declared extinct in 1952. So it is a weight, effort and commitment of years. So we should not forget the ecosystem is so important. So balancing ecosystem. Yes. And also Harshal, one stay with us. Yes. If you could also, Samiksha, this side. Yes. If you could also talk to us more about the Kuno Wildlife Sanctuary, as to why has this particular wildlife sanctuary been chosen as the home for the 8 cheetahs, and also if you could throw some more light as to the kind of arrangements that have been made in this particular sanctuary so as the cheetahs really adapt to that change in environment in this sanctuary. Exactly. Samiksha, the first question which you stated, why Kuno was selected. So this was not a day, the day exemption or the day visit which was site inspection which was done. It was a months and months of inspection which were done in India by the Cheetah Conservation Fund authorities, by the forest ranger, by the central environmental authorities as well. Let me show you, Samiksha, the Aravali peaks, so you can get the sense of how this Kuno National Park actually looks like, because
because it is spread in thousands and thousands of kilometers. And the favorable things about Kuno in regards to those Namibia cheetahs are, Samisha, that in Namibia, the cheetahs, the place where cheetahs were living, the terrain, the grassland, the habitation, the water salinity, the carbon sequestration, the ecosystem, these all were the very important points which were seen, because the inspection were done by the authorities in Rajasthan and in Madhya Pradesh. And after a lot of research in the 2 years from 2020 to 2022, it came into light that the habitation of Kuno National Park was very favorable for the cheetahs of Namibia. Therefore, we got to know that the grassland, that there are the grassland area where cheetahs find very good to stay, to live. So that sort of environment is in Kuno National Park. They also live in the habitation of long grass to hide and to prey. So these were the things which we get in this Kuno National Park. So this is a favorable environment, and for some time these all things will be looked up by the authorities, whether they are adapting these habitation very well or not. Because your second question, as Samisha, you said that what arrangements are made. If we talk about the arrangements, the leopards. In this Kuno National Park, Samisha, there are so many leopards, and in the presence of leopard, cheetahs get very vulnerable. So in the range where these cheetahs will live, that 12 square kilometer of range, from that area, leopards have been shifted to different place. Right now, cheetahs will be living in the area of 7 to 8 square kilometer. For 30 days, they are made to be in quarantine for 30 days to see, to follow the health protocols, to see the hygiene, to see whether they are not carrying any disease while coming from Namibia or not. So 30 days quarantine, and then they will be made to live in compartments in the area of 7 to 8 square kilometer, where they will be made to they will be given the environment of predator free environment. They will be walking freely. The 9 compartments which we say no bade, the 9 compartments for all these 9 cheetahs are made in that area of 7 to 8 square kilometer. So Samiksha, right now these all arrangements have been done. And also to tell you, Samiksha, that around the neck of these cheetahs, a band is also put. It has a GPS tracker which straight connects to the satellite. So the authorities in Namibia, the Cheetah Conservation Fund authorities, will also get the tracking and movements of all those cheetahs, where they are moving, they are fine or not, they have been, what is their survival going inside in the Indian soil. They'll get all the checks. So right now, monitoring these cheetahs for some period of time, it's really challenging. So for now, we have to monitor. Also, the Harsha, authorities have to monitor. The live updates that we are getting as of now is that the Indian Air Force choppers have arrived at the Kuno sanctuary with those 8 cheetahs. At what time exactly can we expect the Prime Minister to release the 8 cheetahs in the wildlife sanctuary? Just some time more, we are getting to know from the forest official that the timing was of 10:45 AM because of some changes with the cages and with the boxes. And right now, Prime Minister having interaction with the officials of Cheetah Conservation Fund and with the officials of forest, he is interacting. And after some time, we can expect in few minutes, the liver of the cages will be opened by Prime Minister Narendra Modi on the occasion of his birthday. And then he will release the cheetahs to the Kuno National Park. Just few minutes more, Samisha, because everything is planned time after time. The sequence, the battery of people, so many people are involved. The convoy, so many people have reached here in Kuno National Park because the excitement. Samisha, let me show you the people who have gathered here. So much of media, I am sure they would have never seen in their entire life. They are also sensing it that cheetah is coming. So much of excitement amongst children, as well. Let us ask a few of them. नाम क्या है आपका? राहुल। तो राहुल, आप यहाँ इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। तो अभी आप देख रहे हैं इतने सारे लोग चीता को लेके बात कर रहे हैं, चीता आ रहे हैं यहाँ, तो जब ये सुन रहे हैं तो कैसा लग रहा है? चीता को कभी देखा है? टीवी पे देखा है केवल? देखा है। देखा है। तो लग रहा है कि हमारे बगल में नेशनल पार्क में आ रहे हैं, तो बहुत गर्व की बात है। अच्छा है ये। हाँ। तो आज जब बच्चे चीता के बारे में सुनते हैं तो पहला ख्याल क्या आता है? अच्छा लगता है चीता। अच्छा लगता है। तो अभी तक तो था ही नहीं हमारे देश में, अब 8 चीता आ रहे हैं, तो लगता है कि कुछ और जानकारी मिल पाएगी, समझ पाएंगे कैसा जानवर है जो अब तक विलुप्त हो गया था। हाँ, मिल पाएगी जानकारी। मिल पाएगी।
So these are the children of these villages, and Samiksha, also to tell you that not only doing effort towards eco development, also to enhance eco tourism and benefit these local people, the local support system, the local community who are around this Kuno National Park, because you will get a sense that the entry of Kuno National Park the entry starts with a village. This small village, we are getting to know that 5 to 10 years back, this village used to be inside the forest, but after some time this village was moved, the rehabilitation was done outside the national park. They were given the land, they were given some money to carry out their farming work there. So these all people are either involved in the daily wages work or either do the farming or agriculture work. But now with the cheetahs coming in, the scope for the ecotourism, the scope for the work, the scope for the not going for daily wages and getting some job here have been opened. So these are the prospects which are also being looked here by the arrival of Namibia cheetahs here in Indian soil. And also let me show you the security forces, because barricades have been set up. These are forest rangers. These are police officials who are here. All the checks have been done. No more vehicles, no more VVIP movements will happen from this place now inside Kuno National Park, because all the VVIPs have already gone inside. So just few minutes more, Samiksha, when we'll see the visuals of Prime Minister Narendra Modi pulling the lever of the cage in which the cheetahs are there. 12 feet stage of Narendra Modi, 6 feet. If you could talk to us more about the dignitaries who will be present along with Prime Minister Modi. Are we expecting Shivraj Singh Chauhan as well to be present with Prime Minister Modi as he releases those cheetahs in the wildlife sanctuary? Exactly, Samiksha, what we have told by the state government, that CM Shivraj Singh Chauhan will also be there, the governor of Madhya Pradesh will also be there, the district collector will be there, the forest official will be there, the central environment minister is here along with Prime Minister Narendra Modi is here, and not only that, the Indian vet and the wildlife experts are here, also the executive director and the chairman of Cheetah Conservation Fund, who have given the cheetahs, who have signed the MOU with India. The officials of that Cheetah Conservation Fund are also here with Prime Minister Narendra Modi, giving him all the detail and the background of these cheetahs, from where they were, from how long they were being taken care of, how this female cheetah reacts to, what is the age of female cheetahs, how the male cheetahs respond, because two of the male cheetahs, Samiksha, we have been told are brothers. They were trapped somewhere. They were released from some place by the Cheetah Conservation Fund. Those Cheetah Conservation Fund took care of them for almost 2 years. They are two brothers, and those two male cheetahs compartments are also being made nearby to each other, just close to each other, to give a sense of protection, the care, so that they don't feel like they are at some other place, to get a sense of that, yeah, they are at their own place, they can adapt the situation so well. So these things are very minute, which are also to be taken care of when we talk about animals, because the biodiversity, they contribute so much towards the ecosystem, towards the management of the wildlife, towards the restoration of the open forest. So these are the things, and the dignitary, all the state officials are here, the Kuno, the Sherpur district administration is here, the forest rangers are here, forest authorities are here, Prime Minister Narendra Modi, Governor of Madhya Pradesh, CM of Madhya Pradesh, the members of Cheetah Conservation Fund, the expert biologists and wildlife and environmental experts are also here inside. We can say the convoy of almost 20 to 25 people, Samiksha, are inside Kuno National Park, because we were there, just we were stay with inside us. there. Yes, just hold your thoughts for a moment. Let's also listen into that exclusive conversation we had with the MP Chief Minister on the 8 felines being translocated to the country. सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। लेकिन वो कभी जन्मदिन नहीं मनाते, वो तो एक एक क्षण का उपयोग अपने देश के लिए और देश की जनता के कल्याण और सेवा के लिए करते हैं। सारा देश उनका घर है और जनता उनका परिवार। इसलिए देखिए, जन्मदिन के दिन भी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य है। मध्य प्रदेश की जनता आनंदित है, प्रफुल्लित और प्रसन्न है। आज जब वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप लगा रही है, युवा मोर्चा हमारा लगा रहा है।
रक्तदान शिविरों का आयोजन हो रहा है, दिव्यांग भाई बहनों को उपकरण अलग अलग भेंट किए जा रहे हैं, कई समाज सेवा के काम चल रहे हैं। और आज ही पूरे प्रदेश में हर पंचायत में और वार्ड में जो अलग अलग योजनाएं हैं श्री मोदी जी की, केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की, उनसे अगर कोई पात्र हितग्राही वंचित रह गया तो उसको लाभ देने का अभियान भी चल रहा है। तो पूरा देश आनंदित और प्रसन्न है। प्रधानमंत्री जी, पूरा प्रदेश आनंदित और प्रसन्न है प्रधानमंत्री जी को अपने बीच पाकर। लेकिन कितनी बड़ी सौगात लेके आ रहे हैं। भारत में चीता समाप्त हो गया था 70 साल पहले। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पहले बाघों का पुनर्वसन किया, पन्ना टाइगर रिजर्व में, खत्म हो गए थे, फिर से बस गए। मध्य प्रदेश अभी टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, लेकिन अब देश में केवल मध्य प्रदेश के कूनों में चीते आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों वो बाड़े में जाएंगे, मतलब नीचे से जाएंगे, प्रधानमंत्री जी उनको प्रवेश कराएंगे। अपने आप में वाइल्ड लाइफ की इस शताब्दी की सबसे बड़ी घटना है। और चीते भी दूसरे महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप में, भारत में, और भारत में भी मध्य प्रदेश के कोनों में चीते आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि चीता, ये प्राणियों में सद्भावना हो, इसका प्रतीक तो है कि चीते भी बचे, उनके लिए भी तो आखिर ये धरती है। तो चीते का तो पुनर्वसन होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ उस इलाके में टूरिज्म के अपार अवसर खुल जाएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। एक लास्ट सवाल सर, कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी आप लोगों ने बहुत काम किया है और लगातार टूरिज्म को लेकर भी आप बात कर रहे हैं, मगर एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि मध्य प्रदेश में चीतों का आना क्या पर्यटन के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन एक परेशानी ये देखी गई, हमने देखी कि चीतों का जब पलायन हुआ या फिर चीते खत्म हुए तो लोगों का सहयोग नहीं मिल पाया। अब क्या उसको लेकर लोगों के जागरण के लिए भी कुछ होगा? चीता आने के पहले ही जन जागरण चल रहा है। हमने आसपास के गांवों के सभी साथियों को चीता मित्र बनाया है, उनको बताया कि चीता है क्या, चीता कभी आक्रमण नहीं करता इंसान पे, आदमी का शिकार नहीं करता। So just in a short while from now, the 8 cheetahs will be released by the Prime Minister in that wildlife sanctuary of Kuno. Harsha continues to be with us reporting live from Kuno. Also remember the IF choppers have already arrived in the Kuno wildlife sanctuary with those 8 cheetahs. Before I go across to Harsha, let's also listen into what Ellie Walker, conservation biologist of Cheetah Conservation Fund, had to say. My name's Eli Walker. And tell us about the condition of the cheetahs. So they had a very great flight, very calm, relaxed. We had no issues throughout the entire flight. And now we're here on the ground in India. First time in over 70 years that there's been cheetahs here in India. So it's extremely exciting. And Harsha, they're reporting live from the Kuno sanctuary. Harsha, the countdown has really started. People are really waiting with bated breaths to catch the glimpse of the 8 cheetahs. When can we really expect the cheetahs to be released by the Prime Minister? Samiksha, we all are eagerly waiting, even the villagers, the nearby people who reside by the Kuno National Park, everyone is eagerly waiting. I'll show you the visuals because visuals speak more than my words. I'll show you the visual because the sloganeering for Pradhan Mantri Narendra Modi, the sloganeering for cheetahs who are arriving are being done by the villagers who reside here nearby to Kuno National Park. Everyone is waiting to get their first glimpse of the release of cheetahs into the wildlife sanctuary, into the Kuno National Park. Samiksha, I don't know how to put it, but I really want to say it that cheetahs are the fastest animal, fastest species on land, and we can say that they have taken the longest, the fastest leap from Namibia to India.
So we can say this is a very different journey for even these cheetahs as well, going from different habitation to coming from a different habitation, the climate, the weather, the terrain, accepting and adapting all of that. And one thing which I really want to tell our viewers also, that Kuno National Park is a home to Asiatic lion, is a home to so many leopards, and now from that particular area where cheetahs will be there, the leopards have been shifted to a different place. Asiatic lions are very endangered species, and initially in after 1970, Samiksha, in 1952, when cheetahs were declared extinct, after 1970 the efforts to relocate and reintroduce Asiatic cheetah from Iran to India were being done. Global talks were taken. Jairam Ramesh passed the preliminary, the proposal, the reports were done, the preliminary site inspection were done in 2008 and 2009. In 2013, Supreme Court quashed the relocation proposal of Project Cheetah. Then in 2020, Supreme Court approved the Project Cheetah, and then after that we know it's all in front of our eyes. After 2020, what were the efforts, how the inspection were done. In 2022, MOU was signed. So this is a long effort and long wait and long commitment of the ministers towards the environment and wildlife, and under the leadership of Modi government, Samiksha, the protected areas coverage has really increased in our country. I would like to tell you through the numbers. Initially the protected areas coverage was 4.90% of the geographical area. Now after 2014 it has increased to 5.03%. The government has contributed a lot towards wildlife and towards ecosystem, towards the environment. The tree and the forest cover is consistently increasing. Now the forest and tree cover in our country has increased to 16,000 square kilometer, which is really amazing. The plantation of more trees being done, the forest cover is increasing, the community reserves which used सालों से इस चीज का इंतजार कर रहे थे, जो चीता विलुप्त हो गए थे। हमें यहाँ बहुत बड़ा खुशी का माहौल है कि सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र सोपुर जो आज विकसित होने के लिए जा रहा है। हमारे सब काफी लोगों के बेरोजगार लोग थे, वो रोजगारी के तार पहुंचने वाले हैं। हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मोदी 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 मोदी। तो आज अब तो यहाँ पर लोगों का आने का तांता लगा रहेगा, क्योंकि चीते को देखने के लिए हर कोई यहाँ पर आएगा। जब दिसंबर से आम लोगों के लिए चीते देखना शुरुआत होगी। बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या पहले हमारे इधर हुआ करते थे पहले समय में, अब मोदी जी ने जो किया बहुत अच्छा है। हमारे इधर चीते हैं, सब लोगों के लिए खुशी का लहर है। सब आदिवासी लोग यहाँ हैं, जो पिछड़े हैं वो भी समझ रहे हैं कि मतलब आगे चल के बहुत अच्छी तरक्की होगी, और अच्छा लग रहा है कि चीते आए हमारे। चीते आए हैं क्या? इससे पहले आपने कभी चीतों का जिक्र सुना था? हाँ सुना, बिल्कुल। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो बताते हैं यहाँ सभी जानवर एक साथ रहते थे। शेर भी रहते थे, चीता और ये तेंदुआ वगैरह सभी। तेंदुआ तो अभी है हमारे क्षेत्र में, और ये सभी साथ यहाँ इसी जगह पे आप खड़े हो, इस जगह पे बहुत जंगल होता था, यहाँ भी आ जाते थे पहले से। कोई 4 बजे 5 बजे टाइम तो यहाँ आ जाते थे। तो यहाँ पर भी लोग यहाँ पर भी चीते आ जाते थे, ये बता रहे हैं। बड़े बूढ़ों से सुना हुआ था, लेकिन आज इस मौके पर, इस खास मौके पर ये लोग खुद मौजूद हैं। आज आप गवाह बन रहे हैं आज इस खास मौके के, क्योंकि चीते यहाँ पर काफी सालों बाद यहाँ पर आ रहे हैं। 70 साल बाद चीते आ रहे हैं। हमें बहुत खुशी है। मोदी जी ने जन्मदिन पे हमें बहुत गिफ्ट दिया। बड़ा गिफ्ट है, बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए तो। और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से, और हमारे क्षेत्र में चीते लाने पर उनका बहुत बहुत आभार। देखिए लोगों में कितना। So those are the first visuals also coming in right now. The countdown has already begun when the Prime Minister will be releasing the 8 cheetahs in the Kuno Wildlife Sanctuary. Slipping into a very short break, but on the other side, live updates to continue from Kuno Wildlife Sanctuary. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series has the need for a uniform civil code become imperative today. Honorable guest speakers Shri Arif Muhammad Khan, Justice Kurian Joseph, Shrimati Madhavi Goradia Diwan, Shri Asaduddin Owaisi, Shri Baijayant Jay Panda, Shri Faizan Mustafa. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series, 17th September from 5 p.m. to 7 p.m. only on Republic TV.
की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, we will create a global news organization from the soil of India. जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़ दोनों दिशा. You may be one of the channels which is a national channel going regional and international both at the same time. My best wishes to you and your group. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है. वर्ल्ड में, विश्व में जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि जी. एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, you cannot term them as a Pakistani and Bangladeshi. They are Hindu, they are proud Hindu. They are India. The most renowned speakers, the most acclaimed legal eagles, the most distinguished academicians, and the biggest newsmakers come together on the most esteemed stage. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. नेशनलिज्म की कितनी जरूरत? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक और ये देखिए, प्रधानमंत्री उन तमाम 8 चीतों को, उनके क्रेट्स को अभी ये खोल दिया गया. और ये देखिए, पहला चीता खुद फोटोग्राफी करते हुए. ये बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण पल. आप सोचिए, 70-75 साल हो गए हमारे देश में चीते विलुप्त हो गए थे, और उस विलुप्ति के बाद कई सालों तक बहुत विचार विमर्श के बाद कि आखिरकार फिर से हमारे जंगलों में कैसे चीतों की वापसी हो सके. ये देखिए, ये वही चीते, अब हमारे नामीबिया के ये चीते अब कूनो नेशनल पार्क में पहुंच चुके हैं. ये आसपास के वातावरण को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही अलग इन्हें एहसास हो रहा होगा. नामीबिया के जंगलों से अब ये सीधे भारत के जंगलों में कूनो नेशनल पार्क में अब ये पहुंच चुके हैं. प्रधानमंत्री इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण का लुत्फ उठाते हुए और उन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते हुए, साथ में आपने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे. कुल 8 चीतों को हिंदुस्तान लाया गया है. जैसा कि हमने बताया कि इनमें 5 मादा चीता हैं और 3 नर चीता हैं. इन 8 चीतों को आपने देखा, प्रधानमंत्री ने विशेष जो क्रेट्स थे उन क्रेट्स को खोल दिया गया, और फिर वो सभी 8 चीते अब मुक्त हो चुके हैं. लेकिन ये अभी जंगलों में नहीं जाएंगे. ये एक बहुत ही ख़ास एरिया बनाया गया है. उन्हीं ख़ास एरिया में अभी ये 1 महीने तक रहेंगे, और उसके बाद फिर इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. मॉनिटरिंग की जाएगी. आप देख सकते हैं इन चीतों के जो गर्दन है उस पर एक कॉलर, जो जीपीएस टैग है वो लगा हुआ है, ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके. और मैं उसी पर लौट भी रहा था कि सभी चीतों के गर्दन पर उनके नाम या फिर कोड के हिसाब से सैटेलाइट या फिर जीपीएस VHF कॉलर्स लगा दिए गए हैं. और इसी नेशनल पार्क में जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क, इसमें एक डेटा डाउनलोड फैसिलिटी सेंटर बनाई गई है. और इस इक्विपमेंट को, रेडियो टेलीमेट्री इक्विपमेंट को खरीदने और फैसिलिटी बनाने की सारी प्रक्रिया 4 से 6 महीने में पूरी कर ली जाती है. और ये जो आप देख रहे हैं इनके गर्दन में, इनको वहीं पे इन चीतों को लाने से पहले ही इनको नामीबिया पहुंचा दिया गया था, और फिर इन्हें ये तमाम जो कॉलर हैं RF ये कॉलर, इनको लगाकर ही इन्हें लाया गया है.
रेडियो कॉलर हैं इन्हें, और इनकी ताकि इनकी जो ट्रैकिंग है, इनकी निगरानी वो हो सके रेडियो कॉलर के ज़रिए। और फिर इन्हें हम जैसे कि बता रहे हैं कि इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा और फिर इन्हें जंगलों में मुक्त किया जाएगा। तो ये कुछ अहम बातें हमने आपको बताई कि किस तरह से वहाँ पे इन्हें पकड़ा गया, और फिर उनके बाद उनको जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके ज़रिए इन 8 चीतों को भारत लाया गया है। 70 साल पहले हमारे देश में बहुत सारी चीते हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं न किन्हीं वजहों से वो सारे विलुप्त होते चले गए। कुछ अवैध शिकारियों के शिकार बन गए। एक भी हमारे देश में चीता नहीं बचा, लेकिन सरकार लगातार कई सालों से प्रयास कर रही थी कि हम जो है वो इन चीतों को वापस से एक बार फिर से लाएं, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र भारत का भी बहुत बेहतर है। और जैसे कि हमने कहा कि नामीबिया के जो वैज्ञानिक थे वो महीनों तक यहाँ पे आते रहे, जाते रहे, और यहाँ का जो भूवैज्ञानिक स्थिति है, यहाँ की जो जलवायु है, उनका उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इन तमाम चीतों को मध्य प्रदेश में जो कूनो नेशनल पार्क है, वहाँ की जो स्थिति है, परिस्थिति है, जलवायु है, उसके हिसाब से छोड़ना ज़्यादा उचित होगा। तो उसके बाद ही ये फैसला लिया गया। और हमने आपको बताया कि इन तमाम चीतों के गर्दन में रेडियो कॉलर लगे हुए हैं ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और विशेष हमने बताया कि आपको चिनूक हेलीकॉप्टर के ज़रिए इनको यहाँ पे लाया गया। और प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं इनको विशेष जो क्रेट्स थे उनको खोलकर, और प्रधानमंत्री ने इनको खुद वहाँ मुक्त किया। वो वहाँ पे अब विचरण कर रहे हैं। जो चीता प्रोजेक्ट है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि किस तरह से भारत में चीतों को एक बार फिर से बसाने की यहाँ पे कार्य योजना बनाई गई। और इस योजना के तहत 5 साल में देश के कई नेशनल पार्क में ऐसी उम्मीद की जा रही है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ये ट्रांसलोकेशन और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सही अनुमान के मुताबिक, प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा, तो आने वाले 5 से 10 साल में इनके ज़रिए और भी जो बच्चे होंगे उनको ऐसे उम्मीद की जा रही है कि 40 से 50 चीते पैदा होंगे, और फिर उनको देश के अलग अलग नेशनल पार्क में फिर उन्हें बसाया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी तो सिर्फ ये 8 चीते कूनो नेशनल पार्क में आए हैं, लेकिन इन के बाद इनकी जब आबादी बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 40 से 50 के तादाद में इनकी आबादी होगी आने वाले 5 सालों में। तो उसके बाद इनको फिर देश के अलग अलग नेशनल पार्क में फिर इन चीतों को बसाने का काम किया जाएगा। और इस कार्य योजना के जरिए, जैसा कि हम कह रहे हैं कि भारत एक बार फिर दुनिया के सबसे तेज रफ्तार वाले जानवर चीता का घर अब बनने जा रहा है। और भारत सरकार ने चीतों को फिर से देश के जंगलों में लाने का काम किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। और प्रधानमंत्री जैसा कि आप देख सकते हैं कितने उत्साहित हैं, खुद कैमरे के जरिए उन तस्वीरों को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद भी चीतों को देश में लाने और इसे बसाने में निजी, बिल्कुल पर्सनल लेवल पे निजी रुचि दिखा रहे थे, और उसी का नतीजा है कि आज ये 8 चीते अब हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंच चुके हैं। ये हम आपको बताएं, चीता आपने भी देखा होगा तमाम टेलीविजनों के जरिए, नेशनल ज्योग्राफिक पे, एनिमल प्लैनेट चैनल पे, कि किस तरह से ये जंगलों में रहता है। और ये एक मांसाहारी जानवर होता है। भारत से इसका लगभग 70-75 साल पहले खात्मा हो गया था। और कहा जाता है कि अवैध शिकार जो रहा वो एक बहुत अहम वजह रहा इनके एक्सटिंक्ट होने के, इनके विलुप्त होने के। ज़्यादा शिकार, और ये भी कहा जाता है कि जो चीतों का जो नेचुरल हैबिटेट था उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था, इसलिए धीरे धीरे विलुप्त हो गए। बहरहाल देश में चीतों को फिर से लाया गया है, और हमारे जो जंगल हैं उनका जो इकोसिस्टम है, उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये अब उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो जानवर है, ये जो चीता है, वो खुले मैदानों में रहते हैं। उनका आवास मुख्य रूप से वहीं होता है जहां उनके लिए शिकार अच्छी खासी तादाद में मौजूद होते हैं। घास के मैदान हो, झाड़ियां हो, खुले जंगल हो, अर्ध शुष्क वातावरण और थोड़ा सा ज़्यादा तापमान उनके लिए सही होता है। तो थोड़ा ज़्यादा तापमान हो, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का ये इलाका ज़्यादा तापमान इनका रहता है यहाँ पे 12 महीने,
इसलिए भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि ये काफ़ी उचित होगा यहाँ पे इन्हें रखना। घास के मैदान हैं, झाड़ियाँ हैं, खुले जंगल हैं, ये तमाम चीज़ें इनके अनुकूल हैं इनको यहाँ पे रखने के लिए, इसलिए यहाँ पे इन्हें लाया गया। चीतों को बचाने के लिए उनके शिकार करने के आधार, उनको हमें बचाने की ज़रूरत है। उनके शिकार के आधार करने के आधार को हमें बचाना होगा, जिसमें कुछ खतरे में पड़ी प्रजातियां भी शामिल हैं, बल्कि घास के मैदानों की जो दूसरी अन्य लुप्तप्राय प्रजातियां हैं और खुले वनों का जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उन्हें भी हमें बचाना होगा। जिस बेस पे हम वही कह रहे हैं, जिस बेस पे, जिस आधार पे ये तमाम चीते यहाँ जिंदा रहेंगे, यहाँ रहेंगे, उस बेस को भी, उस आधार को भी हमें बचा कर रखना होगा, तभी तो ये उस इकोसिस्टम में आराम से रह पाएंगे। इसलिए भी हम बार बार ये कह रहे हैं और सरकार भी कह रही है कि उस सिस्टम को, उस बेस को हमें बचा कर रखना होगा। चीतों को वापस लाने से देश में खुले जो जंगल हैं उनको बचाने के काम को भी अब काफ़ी मजबूती मिलेगी। और ये भी देखा गया कि बड़े जो मांसाहारी जानवरों में मानव जो इंटरेस्ट है, ह्यूमन इंटरेस्ट, मानव हितों के साथ संघर्ष चीतों में सबसे कम पाया जाता है। दूसरे जो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके साथ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं, लेकिन चीतों के साथ ऐसा नहीं है। चीतों के साथ जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बाकी जो ऐसे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके मुकाबले काफ़ी कम ऑब्जर्व किया गया है, काफ़ी कम देखा गया है। वो सामान्यतया मनुष्यों के लिए खतरा नहीं होते हैं और जो बड़े पशु हैं उन पे भी वो सामान्यतया हमला नहीं करते हैं। और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की थी कि किस तरह से इसको लाया जाए, और दुनिया भर के विशेषज्ञों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित भारत सरकार के कई अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों ने इसके लिए कई दौर की बैठकें की। भारत सरकार के अधिकारी, मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, नामीबिया से जुड़े अधिकारी, इन तमाम अधिकारियों की कई महीनों से लगातार बैठकें हो रही थी ताकि ये सारा जो काम है वो बहुत ही ईजी वे में हो सके। और इसके लिए जो साइट सर्वे का काम है उसका फैसला लिया गया था। और हालांकि इसके बाद ये भी खबरें आई कि वैसे राज्यों में इन्हें छोड़ा जाए जहां की पहले से चीता पाए जाते थे और उन्हें ही प्रायोरिटी बेसिस पर उन राज्यों को सिलेक्ट किया जाए। तो उसके बाद नाम आया, गुजरात का नाम आया, राजस्थान का नाम आया, छत्तीसगढ़ का नाम आया, मध्य प्रदेश का नाम आया कि ये ऐसे राज्य हैं जहां की आज से 70 साल पहले चीता पाए जाते थे। अब हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो अधिकारी थे, उनके मन में ये आया कि फिर अब इन तमाम जो राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्यों में से नामीबिया से जो चीते लाए जाएंगे उनके लिए सबसे मुफीद, सबसे एडेप्टेटिव एटमॉस्फेयर कहाँ होगा जहाँ की वो अपने आप को अच्छे से ढाल सकें। So the 8 cheetahs who have been released by the Prime Minister in the Kuno Wildlife Sanctuary, as you can see, colourful visuals also coming in from Kuno, where the locals are seen celebrating as the 8 cheetahs have been released by the Prime Minister. They will be in quarantine for a month, where they will their health will be monitored. We also understand a GPS tag band that has been put around their neck to monitor their health, as it would be important to take down the adaptation that happens after they've been translocated from Namibia. We go across to Harsha as well, but take a look at those visuals of celebrations taking place in Kuno as the cheetahs were released by the Prime Minister. Yes, Samiksha, as you can see there, how come the celebrations are going on here? How the celebrations are going here at Kuno National Park. This is the fun element. This is the happiness which is being delivered by the locals and community people of here who live near the Kuno National Park. चीता आ रहा है, कैसा लग रहा है? चीता आ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत ही आज खुशी हो रही है हमें, और दिल से
around Kuno National Park, that this is the happiness which we clearly see among the locals, among the community members. We'll show you more visuals from here because celebration is going on. The dhol, the nagaras are here. All the locals who are living nearby this Kuno National Park are really very happy with the cheetahs, with the Namibia cheetahs who have been released by Prime Minister Narendra Modi here in Kuno National Park. So these are all the people. Dhol is here, dance is being done, and they are all only sloganeering Prime Minister Narendra Modi, 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 Modi. So the sloganeering of Narendra Modi clearly is an example. We clearly witness it that they all know that this is the effort of Prime Minister Narendra Modi towards wildlife conservation, towards environment, towards the ecosystem that is being delivered by him. Therefore, these people are very much happy. आप लोग एक बात बताइए, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? ना चर्च का हूँ, चर्च। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आप लोग चीता यहाँ पे आ रहा है तो आप लोग को लगता है कि आप लोग के लिए मौके बहुत खुलेंगे, काम करने का मौका मिलेगा, इस जगह को लोग ज्यादा जानेंगे, पहचानेंगे? बहुत जान गए, पहचान गए। मध्य प्रदेश के पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर चीता आ रहा है 70 साल बाद। बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये है कि मोदी जी इतना पैसा खर्च इसमें कर रहा है, इससे अच्छा है कि गरीबों की भलाई के लिए देखा जाए तो आप लोग को लगता है कि आप भाई साहब, आप सब लोग को लगता है कि चीता यहाँ पे आया है तो रोजगार के सृजन खुलेंगे, काम करने का मौका मिलेगा, थोड़ी आसानी होगी, मौके मिलेंगे? जी मैम, इसमें क्या है कि भारत में पहला जो कि चीता की प्रजाति खत्म हो गई थी, जो कि मोदी जी अपने जन्मदिवस पर मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत को ऐसी सौगात दे रहे हैं अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कि सारे क्षेत्र में ये बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र होता था, तो इसके कारण चीता के आने से पर्यटक बढ़ेगा, दूर दराज से लोग आएंगे और काफ़ी क्षेत्र में तरक्की होगी, रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह खुलेंगे। आप लोग खुश हैं कि चीता के लिए यही जगह चुनी? बहुत काफ़ी खुशी है मैम, काफ़ी हद से ज़्यादा खुशी है। देखिए आप देख सकते हो पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और सभी बहुत खुश हैं सभी लोग। Samisha, I'll give you the view of everywhere. I'll give you overall view of what this time the entry gate of Kuno National Park looks like, the entry which leads towards Kuno National Park, how it looks like. All the villagers are here everywhere. You will find everywhere, you will see locals, people, community people who are standing here. They are very happy with the cheetahs who have been who from Namibia have been taken to Madhya Pradesh, Kuno National Park. Very happy. Environment can clearly be seen. We'll go more towards people because here are so many people here inside who are dancing on the dhol. We'll clearly ask them, आप लोगों को कैसा लग रहा है चीता फाइनली मध्य प्रदेश? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बता नहीं सकते, इतनी खुशी है आज कि बस बता नहीं सकते। प्रधानमंत्री के जन्मदिन की खुशी है या चीता के आने की खुशी? मैम दोनों। मैम सबसे पहले तो बधाई देना चाहेंगे हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और बहुत खुशी है आज। इस गांव को कोई नहीं जानता था, आज पूरा इंडिया जानता है। आप लोग को लगता है कि अब दूर से लोग आएंगे यहाँ पर देखने के लिए चीता को, आप लोग को रोजगार मिलेगा? जी कि हमारा श्योपुर जिला सबसे पिछड़ा वर्ग था, इसको हमारे कोई भी नाम से जानता नहीं था। आज चीतों के आने से हमें इतनी बड़ी खुशी हुई है कि हमारा जिले का बहुत ही नाम रोशन हुआ है। मोदी जी को चीता छोड़ने की बहुत ही बधाई। आप लोग को लगता है कि चीता कभी किसी ने 1952 के बाद देखा ही नहीं? कम से कम अब चीता देखने का मौका मिलेगा, बच्चों को बता पाएंगे चीता दिखता कैसा है, क्या है। अब हमने देख लिया है चीता से, मैं तो महसूस कर रहे हैं कि चीता आने से बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्या है, हमारे यहाँ श्योपुर जिले में सबसे पिछड़ा हुआ जिला हमारा श्योपुर आज विकसित होने के लिए जा रहा है। इस जिले को भी अभी कोई पूछते तो बताता नहीं था कि श्योपुर कहाँ है कहाँ नहीं है। आज हम लोगों को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है माननीय नरेंद्र मोदी की वजह से और चीता की वजह से, हमें बहुत बड़ी खुशी है, खुशी का माहौल है और नरेंद्र मोदी जी के लिए हार्दिक बधाई, हम शुभकामना हम लोग देते हैं। भैया आप एक बात बताइए, आप सब लोग यहीं के रहने वाले हैं, लोकल सब, तो कभी इतनी मीडिया, कभी इतना यहाँ खुशनुमा माहौल कभी नहीं देखा। इतनी मीडिया, इतनी गाड़ी, इतने एरोप्लेन हमने कभी नहीं देखे। पहली बार इतनी पुलिस कभी नहीं देखी हमारी लाइफ में, कभी नहीं देखा हमने। तो खुश है कि कुनो नेशनल पार्क को चूज किया गया? खुश है। मोदी 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 मोदी। 5 बजे से हम सुबह से यही है और पूरी रात तक है, जब तक आप रहोगे मीडिया वाले। खाना भी नहीं खाया सुबह से अभी तक, खाना भी नहीं खाया हमने। These are the visuals. We are showing you the happiness which can clearly be seen amongst the locals, I mean the community people. These are the villages of Shiopur. It is exactly an area. We are giving you all the updates on Republic. बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर
नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता व गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया।
हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को एक शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। साथियों, दुनिया आज जब प्रकृति और पर्यावरण की ओर देखती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए एक केवल सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। हम वो लोग हैं जिनका सांस्कृतिक अस्तित्व सर्वम खलविदम ब्रह्म इस मंत्र पर टिका हुआ है। अर्थात संसार में पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, जड़, चेतन जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, हमारा अपना ही विस्तार है। हम वो लोग हैं जो कहते हैं परम परोपकारार्थम यो जीवति सह जीवति, अर्थात खुद के फायदे को ध्यान में रख करके जीना वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन वो जीता है जो परोपकार के लिए जीता है। इसलिए हम जब खुद भोजन करते हैं उसके पहले पशु पक्षियों के लिए अन्न निकालते हैं। हमारे आसपास रहने वाले छोटे से छोटे जीव की भी चिंता करना हमें सिखाया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि कहीं अकारण किसी जीव का जीवन चला जाए तो हम अपराध बोध से भर जाते हैं। फिर किसी पूरी जीव जाति का अस्तित्व ही अगर हमारी वजह से मिट जाए,
ये हमें कैसे स्वीकार हो सकता है? आप सोचिए, हमारे यहां कितने ही बच्चों को ये पता तक नहीं होता है कि जिस चीता के बारे में सुनकर वो बड़े हो रहे हैं वो उनके देश से पिछली शताब्दी में ही लुप्त हो चुके हैं। आज अफ्रीका के कुछ देशों में और ईरान में चीता पाए जाते हैं, लेकिन भारत का नाम उस लिस्ट से बहुत पहले हटा दिया गया था। आने वाले वर्षों में बच्चों को इस विडंबना से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुझे विश्वास है वो चीता को अपने ही देश में कूनो नेशनल पार्क में दौड़ता देख पाएंगे। चीता के जरिए आज हमारे जंगल और जीवन उसका एक बड़ा शून्य भर रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी कोई विरोधाभासी क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है। ये भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। आज एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है, तो साथ ही देश के वन क्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। साथियों, 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद से देश में करीब करीब 250 नए संरक्षित क्षेत्र जोड़े गए हैं। हमारे यहां एशियाई शेरों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आज गुजरात देश में एशियाई शेरों का बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। इसके पीछे दशकों की मेहनत, रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज और जन भागीदारी की बड़ी भूमिका है। मुझे याद है, हमने गुजरात में एक संकल्प लिया था। हम जंगली जीवों के लिए सम्मान बढ़ाएंगे और संघर्ष घटाएंगे। आज उस सोच का प्रभाव परिणाम के रूप में हमारे सामने है। देश में भी टाइगर्स की संख्या को दोगुना करने का जो लक्ष्य तय किया गया था, हमने उसे समय से पहले हासिल किया है। असम में एक समय एक सींग वाले गैंडों का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा था, लेकिन आज उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। हाथियों की संख्या भी पिछले वर्षों में बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई है। भाई और बहनों, देश में प्रकृति और पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो एक और बड़ा काम हुआ है वो है वेटलैंड का विस्तार। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का जीवन और उनकी जरूरतें वेटलैंड इकोलॉजी पर निर्भर करती हैं। आज देश में 75 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया गया है, जिनमें 26 साइट्स पिछले 4 वर्षों में ही जोड़ी गई हैं। देश के इन प्रयासों का प्रभाव आने वाली सदियों तक दिखेगा और प्रगति के नए पथ प्रशस्त करेगा। साथियों, आज हमें वैश्विक समस्याओं को, समाधानों को और यहां तक कि अपने जीवन को भी होलिस्टिक वे में देखने की जरूरत है। इसलिए आज भारत ने विश्व के ये लाइफ
LIFE, लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट जैसा जीवन मंत्र दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्रयासों के द्वारा भारत दुनिया को एक मंच दे रहा है, एक दृष्टि दे रहा है। इन प्रयासों की सफलता दुनिया की दिशा और भविष्य तय करेगी। इसलिए आज समय है कि हम ग्लोबल चुनौतियों को दुनिया की नहीं, अपनी व्यक्तिगत चुनौती भी माने। हमारे जीवन में एक छोटा सा बदलाव पूरी पृथ्वी के भविष्य के लिए एक आधार बन सकता है। मुझे विश्वास है भारत के प्रयास और परंपराएं इस दिशा में पूरी मानवता का पथ प्रदर्शन करेगी, बेहतर विश्व के सपने को ताकत देगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस मूल्यवान समय पर, ऐतिहासिक समय पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। And there you have it, viewers. The Prime Minister addressing the nation over the 8 cheetahs that have now been brought to the Indian soil from the Republic of Namibia. And we are seeing how he has spoken about preserving the wildlife, talking about preserving the environment, and also talking about how this is a responsible duty of every citizen of the country to make minor lifestyle changes that will help in the preservation of the environment, preservation of the wildlife as well. And he has particularly spoken about these cheetahs as well that have been brought to the Indian soil from the Republic of Namibia in a special aircraft as well. We just saw a few minutes ago the Prime Minister also releasing these cheetahs into the Kuno National Park, and he has spoken about how it will take some time for these cheetahs to also get acclimatized to this entire environment of the country. And then, of course, he's spoken about how there needs to be some changes that need to be made with respect to how we can, what citizens can really do to preserve the wildlife, to preserve the environment as well. Let me go across to my colleague Harsha, who's been on the ground at the Kuno National Park reporting for us on this story. Harsha, we just heard that addressal by the Prime Minister speaking about these cheetahs, speaking about the wildlife preservation, the importance of environmental preservation as well. And of course, this coincides with his birthday as well. And this is the addressal to the nation on his birthday with respect to the preservation of the environment and wildlife. What are you picking up from the salient points of the Prime Minister's speech, and also the kind of arrangements that have been made for the cheetah on the ground? All right, we will connect that audio line in just a bit with Harsha, my colleague. But we just saw the Prime Minister really addressing the nation and talking about the environment preservation, wildlife preservation. He has spoken about how the world talks of sustainable development when it looks at the environment protection, and he has also spoken about how this is a part of our sensibility and spirituality as well. He's spoken about how the citizens of the country need to take it up as their personal duty to make some minor lifestyle changes as well, so that there can be a better preservation of the environment. And I believe we're getting several voices on the broadcast with respect to the Prime Minister's speech and the cheetahs also being brought to the Indian soil as well. I believe we are getting Narottam Mishra as well on the broadcast. Mr. Mishra, if I could come to you about this entire transcontinental, rehabilitation of the cheetahs after 7 decades that we are seeing that they have been brought to the country. और प्रधानमंत्री ने खुद एक जो अपना भाषण दिया है उसमें भी उन्होंने कहा है कि हर एक जो भारतीय है उनकी एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करना, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन करना.
All right, we will connect that line in just a bit, and we are tracking for you viewers the latest when it comes to the kind of speech that has now been given by the Prime Minister. In fact, we're tracking for you the latest visuals as well of the Prime Minister there and the Kuno National Park. And of course, he has spoken about his time as the Chief Minister of Gujarat as well. During the tenure that he was the Chief Minister, he had spoken about several measures that need to be taken for the preservation of the environment. He has reiterated those points and has stated that this needs to be taken extremely seriously when it comes to the sustainable development of the environment as well. Now, apart from that, he's also spoken about the single-horned rhinos. Now, apart from the cheetahs, because he has spoken about the cheetahs and he has spoken about how it will take some time for the cheetahs to get acclimatized to the environment. And of course, that after 7 decades, India has gotten the cheetahs that had been declared as extinct, and that this was an attempt by the Indian government to make sure for the wildlife preservation. And talking about that, he's also spoken about the single-horned rhinos as well that are on the decline. Let's put a pin on that, viewers. Let me once again go across to Narottam Mishra, who's joining me on the broadcast. Mr. Mishra, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, प्रधानमंत्री ने बोला है कि ये हर एक भारतीय नागरिक का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक ड्यूटी होती है, एक कर्तव्य होता है उनका कि वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन और एनवायरनमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ उनका ध्यान जाए. क्या आप समझते हैं उस पूरे प्रधानमंत्री के स्पीच के लेके और जो चीता को आज भारत में लेकर आया है उसके ऊपर? पहले तो उनका जन्मदिन है, उनको ढेर सारी बधाई. जन्मदिन के दिन वो मध्य प्रदेश में, उनका ढेर सारा आभार. जन्मदिन पर उन्होंने हमें मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी, उसके लिए साधुवाद. हमारे ग्वालियर चंबल अंचल की इकोनॉमी बदल जाएगी इस सौगात से. हिंदुस्तान में हम टाइगर स्टेट थे, लेपर्ड स्टेट थे, अब चीता स्टेट भी हो गए. चीता भी, टाइगर तो और जगह मिलेंगे आपको, शेर सब जगह मिलेंगे, चीता सिर्फ ग्वालियर में ही है, कूनो में ही है. और इसलिए उनका कोटि से आभार है कि उन्होंने जन्मदिन के दिन हमारे बीच में हमको इतनी बड़ी सौगात दी है. हेलो हेलो जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अपने जन्मदिन के लेकर भी आज वो कूनो नेशनल पार्क में थे, पर जो उनका भाषण अगर आप सुने तो उन्होंने ये पूरी बातें कही है कि जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं तब से वो ये बात की बात कर रहे हैं कि एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन होना चाहिए. जो एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन की बात है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए. इसको लेके आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप खुद गवर्नमेंट में हैं उधर मध्य प्रदेश में, और किस तरह से मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट भी इसकी पूरी देखरेख करेगी कूनो नेशनल पार्क को लेकर और जो चीता वहां पर आए उनको लेकर? All right, we will connect that audio line in just a bit, viewers, but we are tracking for you the latest when it comes to All right, viewers, cutting across to some more breaking updates that we are picking up with respect to now Jairam Ramesh, in fact, who has tweeted out and he has stated that the Prime Minister hardly ever acknowledges the continuity in governance. Cheetah project, going back to my visit to Cape Town on 25th of April 2010, is the latest example. Now, the tamasha orchestrated by the Prime Minister today is unwarranted and yet another diversion from the pressing national issues and Bharat Jodo Yatra. Now, this is a tweet that has been sent out by Jairam Ramesh, taking a dig at the Prime Minister, trying to politicize this entire event today as well, speaking about how the Prime Minister, who has in fact released these cheetahs, these 8 cheetahs from the Republic of Namibia into the Kuno National Park, he has called it a tamasha. He's saying that this was a tamasha that was orchestrated by the Prime Minister today, and he's called it an unwarranted attempt and diversion tactics from the pressing national issues
as well. And he has talked about the Cheetah project going back to his visit to the Cape Town on 25th of April 2010. And he has also talked about the Prime Minister hardly ever acknowledging the continuity in governance. Now, we are tracking for you the latest when it comes to the Prime Minister being there at the Kuno National Park and what it really means, viewers, for the wildlife preservation, that the 8 cheetahs have been brought from the Republic of Namibia and they are being relocated there in the Kuno National Park. They will be acclimatized to the climate, and of course, this will be a transcontinental attempt for rehabilitation and preservation of the cheetahs as well. And this has been reiterated by the Prime Minister in his speech. But now we see that a political war of words that has also broken out, with Jairam Ramesh taking a dig at the Prime Minister, calling it a tamasha. Let me also bring in my colleague Harsha, who's been on the ground at the Kuno National Park reporting on this story. Harsha, we see that since morning we have been tracking the entire movement of the cheetahs, how the Prime Minister has spoken about the wildlife preservation. But we now see Jairam Ramesh also politicizing this entire issue, calling it a tamasha and saying that the Prime Minister is only doing this as an eyewash. What are you making of this, and also what's happening on the ground right now? Tell our viewers that. Exactly. The first thing I would like to say that many a times we have seen that many a times the Prime Minister, if inaugurates something or participates in an event, Congress party again and again tries to tell that they are doing the same thing which Congress has done since years. I was telling you, I was quoting it few hours back in my life, that how after 1970 the proposal were made, the preliminary inspection were done. Through the tweet of Jairam Ramesh, I got to sense it that he was trying to say that this is not the very first translocation fund, the translocation project which has taken place. The first translocation took place between 2009 and 11 in Panna and Sariska, but that entire project got to be doomed, and that time also there were high expectations. He's trying to say that BJP party tries to jump on everything which Congress has already done. The Prime Minister is trying to divert the entire issue which is going on right now, the Bharat Jodo Yatra and others which are in a very successful mode. And now I'll try to show you the visual, because again I'm hearing the dhol visual, the sound of dhol can be heard behind me. We are seeing again and again the happiness amongst the public here, because everyone is dancing on the tune of dhol as they are very happy that cheetahs from Namibia has been released by Prime Minister Narendra Modi in Kuno National Park. So this is the state right now here with the locals of Shivpur, because recently according to people, no one knew about Shivpur, but now when the cheetahs by Prime Minister Narendra Modi has been released in Kuno National Park, after that everyone knows about Shivpur. More people will come to Shivpur, the development will go on, the infrastructure will be better, the eco-tourism will increase, and more job prospects will also open for the people. So these are the visuals that I'm showing you right now. This is the state, but Jairam Ramesh, the tweet of Jairam Ramesh clearly tells us that he's trying to say that Congress tried hard for the project Cheetah, tried to relocate them from other places, from Iran and Afghan to India. Proposals were made, but it was not successful because of many reasons. Therefore, he has sarcastically said that all the best to the government who is trying to divert the entire issue of Bharat Jodo Yatra and others with these such of event and try to eyewash and play with the public sentiment. This is what Jairam Ramesh tries to do that. But we have always seen in such historic events, whenever there's a historic event, Congress party some or the other way tries to demean the entire event or the historic things which actually happen. They used to politicize the event on one way. The people are saying that this is a very big event. We'll try to ask to people. Harsha, stay on with us. Harsha, stay on with us as you speak to those people around you as well. Let me bring in RP Singh as well on the broadcast. Mr. Singh, what do you make of these kind of statements that are coming in from Jairam Ramesh, who is saying that this entire event of the relocation of the cheetahs, the 8 cheetahs that have been brought to the Indian soil, he's called it a tamasha. He's saying that the Prime Minister is carrying out an eyewash and not acknowledging the continuity of governance as well. And of course, viewers will connect that line with RP Singh in just a bit. But we are tracking for you all the latest when it comes to the Prime Minister's speech and how the opposition party leaders, including Jairam Ramesh, who have taken a dig at the Prime Minister and trying to politicize this entire issue and have called it a tamasha completely. And they have said that this is an eyewash. This is something that is being used as a distraction tactic
from the people to not focus on the real pressing issues of the nation. And he's also talked about the Bharat Jodo Yatra. But of course, we are seeing on the ground where the Prime Minister had been just a few minutes ago, releasing these 8 cheetahs into the Indian soil, into the Kuno National Park that had been brought from the Republic of Namibia, and the kind of arrangements that had also been made and the kind of message that the Prime Minister has tried to send out today with respect to the environment preservation, wildlife preservation. And he has talked about the resolve that each and every Indian needs to take with respect to environment preservation as well, and increasing in the number of wild animals as well. He's talked about the single horn rhino. He's talked about the cheetahs as well. And he's talked about how it is important, it's completely pertinent to make sure that the government policies also reflect towards environment preservation and wildlife preservation as well. But now we see a lot of criticism from the opposition leaders, including Jairam Ramesh, who's called it a complete tamasha of the Prime Minister being at the Kuno National Park. Let me once again go across to my colleague Harsha, who's right now at the Kuno National Park. Harsha, over to you. You were getting us some more voices from around you, because I believe there's still a lot of celebration going on. Let's hear those voices of the people around you as well. Exactly, you spoke exactly right, because right now there are so many people who are from Sherpur. After Pradhan Mantri Narendra Modi released cheetahs, 8 cheetahs from Namibia to the Kuno National Park, the celebration, the dance and everything could clearly be seen here. If I'll give you the view of the people who are standing near to me, I'll ask some of them if they're here. भाई साहब, आपका नाम? देवेंद्र गुप्ता। तो आप यहीं के श्योपुर के रहने वाले? शिवपुरी से आए हम। से आए, तो एक बात बताइए, चीता जब आज प्रधानमंत्री ने रिलीज किए कुनो नेशनल पार्क में, तो आपको लग रहा है कि अब यहाँ का बोलबाला थोड़ा बढ़ेगा, लोग थोड़ा ज्यादा आएंगे, लोग जानेंगे शिवपुरी? बिल्कुल जानेंगे शिवपुरी सोपुर को, पूरी वर्ल्ड में जानेंगे। इससे चीतों के आने से बहुत फायदा होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा, यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, सब चीजों का तरक्की होगी इस क्षेत्र का। अच्छा, आप लोग से जानना चाहते हैं, चीते 1952 में विलुप्त हो गए थे, आपको लगता है बच्चे भी समझ पाएंगे कि चीते कौन से जीव हैं, कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं, अब उनको भी जानकारी मिलेगी? चीता तो चीता ही है, लेकिन जानते हैं, सब जानते हैं चीता, लेकिन सब बच्चे देखना चाहते हैं, लेकिन चीता के ऊपर, लेकिन देखना नहीं चाहते। लेकिन भी क्या है कि मिल जाए तो और बढ़िया है, कुछ ही बातें आ जाए तो और बढ़िया जंगल में देखने में। एक और बात आप लोग से जानना चाहूंगी, आप लोग को लगता है कि यहाँ पे रोजगार बहुत बढ़ेगा, दूर दूर से लोग आएंगे यहाँ पे देखने के लिए कुनो नेशनल पार्क? सब लोग जाएंगे और उधर होटल वगैरह ही बन रही है उधर। आपको लगता है डेवलपमेंट बहुत बढ़ेगा? डेवलपमेंट बढ़ेगा, सब कुछ व्यवस्था होंगी यहाँ पे, और बहुत अच्छा था, डेवलपमेंट तो होने ही वाला है, बहुत डेवलपमेंट। खुश है भाई साहब, आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, आप लोग प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहेंगे? मोदी 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 मोदी, चीता चीता चीता। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, क्या बात आप कहना चाहेंगे? हम उनको जन्मदिन पे बहुत बधाई देते हैं मोदी जी के लिए, और हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पे चीता आए, हमारे गांव का क्षेत्र का विकास होगा, इसीलिए मोदी जी की हार्दिक बधाई, हम शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा, इतने सारे लोग यहाँ शिवपुरी में प्रधानमंत्री के आने से ज्यादा खुश हैं, चीते के आने से ज्यादा? चीते के आने से ना, प्रधानमंत्री, दोनों चीजों की वजह से हम खुश हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पहली बार हमारे शिवपुर, कोई ऐसा नहीं आया, मध्य प्रदेश में पहली बार है जो मोदी जी आए हैं शिवपुर जिले में। वैसे एक बात आप लोगों से ये भी जानना चाहूंगी, इतने सारे लोग आप लोग हैं, इतना बड़ा मौका है, ये तमाम चीज़ें, प्रधानमंत्री ने कहा कि पेड़ और लगाने चाहिए, फॉरेस्ट और बढ़ाने चाहिए, हम लोग को देश में पर्यावरण की तरफ बहुत काम करना है। ये कितनी बड़ी सीख है कि हमारे देश में पर्यावरण बढ़े, फॉरेस्ट बढ़े, और इस तरीके से जो जानवर विलुप्त हो गए उनको दोबारा से बसाया जाए। जी, बसाया जाए, बिल्कुल बिल्कुल बसाया जाए, क्योंकि ये चीज़ जो पुरानी चीज़ थी ना, वो सब सारी चीज़ खत्म हो गई। And we are also getting several voices on this developing story. Viewers, Gaurav Bhatia of the BJP is also joining me on the broadcast. Gaurav Bhatia, what do you make of these statements that have been made by Jairam Ramesh, who's called this entire issue today of the cheetahs being brought to the Indian soil as a complete tamasha and an eyewash? What is your response to these kind of statements being made, sir? These are all very shallow statements and reflect the current mindset of the Congress party, which is perpetually depressed, critical and pessimistic.
And I would say that at least the Congress party and the leaders should not talk about Nautanki, because we've seen actually winking on the floor of the House. We have seen how there was a statement by a Congress leader saying that Sonia Gandhi was crying when there was the Batla House encounter. And today is a day when, the country is celebrating. It's a beginning of a new era. This shows the keen interest that India has in wildlife. And Congress party yet again is pessimistic and is criticizing for the sake of criticizing. But Mr. Bhatia, they've also tried to claim credit to this entire issue. They've said that this was the Congress party that is responsible for this kind of a government policy towards wildlife preservation. See, we need to understand that it is very easy to conceptualize and dream about something, and that is the trait of the Congress party. They dream a lot, but when it comes to implementing the policy matters, they are zero. And that is where Narendra Modi ji has shown that through diligence, perseverance and sincerity, dreams can be fulfilled and they can turn into reality when you pursue them with all the vigor and the commitment you have. This is the difference between Shri Narendra Modi ji and the current Congress. All right, Gaurav Bhatia, thank you for joining us on the broadcast. And viewers, we are tracking for you the latest and several voices as well that we are getting. Akhilesh Pratap Singh of the Congress is also joining me on the broadcast. Akhilesh ji, what do you make of these statements of the Congress party? Why is the Congress party criticizing this, calling it at one hand a tamasha, and in the same breath also claiming credit for this kind of a wildlife preservation policies? ये प्रधानमंत्री जी आज हमारे देश के जो हैं हिंदुस्तान में इतनी समस्याएं हैं उसके कब संबोधित करेंगे, उसके तरफ कब ध्यान दिलाएंगे? और ये प्रोजेक्ट तो इसमें कोई दुविधा तो है नहीं कि कांग्रेस के समय शुरू हुआ था। तो ये मेरे बीच में कौन बोल रहा है? आपका पीसीआर गाड़ी के लगाया सब कुछ, और मोदी जी तो अभी भी कांग्रेस के जी बोलिए अखिलेश जी बोलिए। मोदी जी अभी भी तो 8 साल हो गए प्रधानमंत्री हुए, लेकिन कांग्रेस के कामों का फीता काट रहे हैं। अपना काम कब करेंगे? कब कहेंगे देखो मैंने काला धन ला दिया? कब कहेंगे देखो मैंने 2 करोड़ नौकरियां दे दी, 15 लाख सबके खाते में डाल दिया, गंगा मैया को साफ कर दिया, राशि को क्यों बना दिया, 100 स्मार्ट सिटी लहा रहे हैं। ये अपने पीसीआर को कहिए तो अपना तो लाइन डिस्कनेक्ट करें, बीच में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं ये लोग। मैं रखूं क्या फोन? अखिलेश जी बने रहिए हमारे साथ बीजेपी के शहजाद पूनावाला भी जुड़ चुके हैं। शहजाद, इफ यू कैन हियर मी, अखिलेश जी का कहना ये है कि कांग्रेस पार्टी का ये पूरा विचार था, ये पूरा उनका आइडिएशन जो था उनका था, और अब मोदी इनका क्लेम ले रहे हैं, पर वो एक तरह से उसको ये भी बोल रहे हैं कि पूरा एक तमाशा था। आप अगर अखिलेश जी को रिस्पांस दे पाए तो। All right, we seem to be having trouble connecting the audio lines, but we are getting to you the latest, viewers, as far as the Prime Minister's speech is concerned, and the subsequent political war of words that has also broken out now that the Congress party, specifically Jairam Ramesh, has taken a dig at the Prime Minister and has said that this is a complete tamasha that is being orchestrated by the Prime Minister. And he has also stated that this was the Congress party that had ideated these policies towards wildlife preservation. And this is the Prime Minister. सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है?
आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। वर्ल्ड में, विश्व में जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि जी। एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, you cannot term them as a Pakistani and Bangladeshi. They are Hindu, they are proud Hindu. They are India. The most renowned speakers, the most acclaimed legal eagles, the most distinguished academicians, and the biggest newsmakers come together on the most esteemed stage. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई? हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया कितना अच्छा लगा। अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे या अपने झंडे के ऊपर गर्व नहीं करेंगे या अपने नेशनलिस्ट होने का गर्व नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको ही क्वेश्चनेबल है। आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट वी नीड टू बी प्राउड दैट वी आर इंडियंस। For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? Mr. Jethmalani felt very passionately about this issue and had written several articles. He was an ardent believer that the issue promoted both social harmony and indeed promoted nationalism as well. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pida Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pida Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset, not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail. For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? The hijab issue, the nikah halala issue, the triple talaq issue, they've all suddenly landed up at the Supreme Court as with constitutional challenges. Had there been a UCC, perhaps these issues would have been ironed out. The speakers are both distinguished, very learned, they're well known, and this edition of the memorial lecture would make for extremely compelling viewing. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture only on Republic TV. From Namibia to India, cheetahs are back in India after 70 years. A historic day for India, but Vadra Congress politics on claims credit for the move. Liberation versus integration debate rages on, but mega celebrations in Hyderabad. Shah sets the record straight, says India will celebrate Liberation Day. Prime Minister turns 72, wishes pour in from across the globe. And later
latest update coming in on the AAP leader Amanatullah Khan, who was arrested by the Delhi Anti-Corruption Bureau on Friday in connection with Delhi's Waqf Board corruption case. We are told that Amanatullah Khan has been taken to the ACB office after his medical test was performed. That's the update coming in. In fact, reaction coming in from the AAP as well, calling it all vendetta politics and calling it a bogus case altogether. That's the update coming in on Amanatullah Khan. Well, we'll go across to Anuj as well, who will get us more updates. Remember, Amanatullah Khan is all set to be produced before the court this afternoon. Anuj joining us on the phone line. Anuj, if you could give us more details. We understand that Amanatullah Khan will be produced before the court this afternoon. Well, that's something what we have been told, that this is around 2 p.m. in the noon when Amanatullah Khan will be produced in the Route 70 court. Right now, we are in the ACB office where Amanatullah Khan is, and what we have been told that the ACB chief, that's Madhu Verma, is also expected to go with the off-camera briefing where he will be briefing about the things which have been recovered till now, the case which has been registered against Amanatullah. Remember, this was yesterday when Amanatullah Khan was arrested by the ACB, and finally now he is under the custody. He is with the ACB team. Yesterday night he was kept at the Civil Line police station. Today in the morning from the Civil Line police station he was taken to the hospital for the medical formalities. After that, now he is again being taken back to the ACB office where we are reporting from. And at this point in time, the Okhla MLA, the Aam Aadmi Party MLA, is still inside. And now he's going to be produced in front of the court. That's the Route 70 court. If we talk about the things which have been recovered till now, then this is in total 24 lakh rupees cash, illegal weapon, cartouche which has been recovered. So that's something, what's the official statement of the ACB. We have seen the raid which was conducted by ACB at the residence of Amanatullah Khan and the aides of Amanatullah. So there the FIR has been already registered. Now it is going to be at 2 p.m. when Amanat will be produced in front of the Route 70 court. But prior to that, as I was pointing it out earlier also, the ACB chief Madhu Verma is expected to brief off camera where he will be telling about the things, what exactly has been recovered, and if we talk about this particular case, under what section this FIR has been registered, and what we have been told is that the ACB and the Delhi police is going to look for the police custody of Amanatullah Khan, that's the Okhla MLA, the Aam Aadmi Party MLA. So they are going to look for the police custody. We will see, wait and watch what is going to happen in the Route 70 court. But yes, Amanatullah, Aam Aadmi Party MLA, has been arrested by the ACB now. Also, Anuj, if you could talk to us a little more about the recoveries that have been made, because from what we understand so far, that it's going to be a very strong case that will be presented against Amanatullah in the court because of the mega recoveries that have been made from him. This is first, let me tell you regarding the Waqf Board case, the appointment in the Waqf Board where Amanatullah is the chairman of the Waqf Board, and yesterday it was the raid which was conducted by the ACB to the eight places of Amanatullah, like the people who are of Amanatullah Khan, his close aid places were raided. Other than that, this was none other but Amanat's residence which was raided. So if we talk about the recovery till now, this is 12 lakhs from one aid, 12 lakhs from one aid, to in total 24 lakh cash which has been recovered. Other than that, a pistol, an illegal weapon has been recovered. Other than that, some cartouches also has been recovered by the Delhi police. So there the police is going to take ahead all these recoveries as a part of an investigation where it has been recovered. The illegal weapon is going to play an important role. What exactly Amanat has to do with that is going to be the part of the investigation. When we are talking about the Delhi police investigation, then they are going to go ahead in the court today where Amanat will be produced, as I was telling it earlier also, in the Route 70 court at 2 p.m. But yes, if we talk about the recoveries, then the cash which has been recovered is an unaccounted money, whereas if we talk about the weapon, then this is an illegal. ज्वेलर के घर पे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा और ज्वेलरी मिलेगी, सोना चांदी मिलेंगे, और चला दिया इतने सोने के बिस्कुट मिले, ये मिला, ईडी लिख के जो है नोटों के बंडल के साथ और सत्येंद्र जैन का फोटो लगा के चला दिया। क्यों चलाया? क्योंकि ईडी को कहा गया था कि आप इस तरीके से खबर मीडिया में दे जिसका फायदा उठा के हम जो है आम आदमी पार्टी को बदनाम कर सकेंगे। आगे कुछ करेंगे इसके खिलाफ जिस तरीके से चलाया जा रहा है? ये आप लोग भी हैं,
मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप लोगों को ही सच बताएंगे ताकि आप वो आगे बढ़ाएं। 2020 जनवरी का मामला है, 2 साल 9 महीने हो गए, अब चल रहा है सितंबर 2022। ये तो इन्वेस्टिगेशन है, करें, मगर ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हैं? अगर 2 साल 9 महीने में इनसे इन्वेस्टिगेशन तो हुई नहीं अब तक, और ये कोरी ड्रामेबाजी करके माहौल बनाया जा रहा है। ये सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई। And AAP there in its briefing calling it all a vendetta politics and saying that the ED is working at the behest of the centre. So Amanatullah there in the dock over graft charges, and he will be presented before the court this afternoon. So yes, mega recoveries have also been made from the aids of the AAP leader Amanatullah. We'll go across to Anuj as well to get us more details. Anuj is there with us. Anuj, if you could talk to us more about the reactions coming in, especially the AAP when they are talking about this vendetta politics and claiming that all of it is being done at the behest, ED is working at the behest of the centre. Well, this is the repetition of the same as we have seen it earlier also. The line taken is very much similar by the Aam Aadmi Party. Aam Aadmi Party is again calling it a political vendetta, and that Saurabh Bharadwaj of Aam Aadmi Party who just did a press conference where he called it a political vendetta. We have seen it in the same. We have seen the same line which was taken by the Aam Aadmi Party at the time of CBI, which was in action in the liquor scam. We have seen the same when enforcement directorate questioned Sateen Jain. And now when Amanatullah Khan has been arrested by the ACB, the line taken is very much similar. They are calling it a political vendetta. They are hitting hard on the agencies. They are hitting hard on the Delhi police as it comes under the Home Ministry. On the other hand, now this is going to be the war of words, which is expected to start again, as we have seen it earlier, because BJP is also going to be the counter on the same, what I have been told. Whereas Aam Aadmi Party, yes, if we talk about the political ramifications of the same, is calling it a witch hunt, is calling it a political vendetta again. But the most important point here to mention is that this is going to happen at 2 p.m. now. When 2 p.m. the police will be producing the evidences, the police there will be giving all the facts and figures of the investigation where the Aam Aadmi Party MLA, the Okhla MLA has been already arrested. So they are going to put in the investigation point, the facts and figure in front of the court, where this is going to be the next course of action. But the most important here is that they are going to look for the police custody. They are going to look for the custody in which they are going to take the investigation ahead, and they are going to connect the dots, whereas we have seen it earlier also, how the people and the close aid of Amanatullah has been already dated, whereas we are telling this to our viewers, 12 lakhs from one, 12 lakhs from another, one pistol, cartouche has been already recovered. Anuj, I'm sorry I'm interrupting you there. If you could just clarify on one point. Just a short while back, we also reported how Amanatullah was taken for the medical. If you could tell us exactly where has he been taken now? Has he been taken back to the ACB office, following which he'll be produced before the court? Well, at this point in time, let me tell you, Amanatullah is very much in the ACB office from where I am reporting. And prior to this, let me remind you that yesterday night from ACB, Amanatullah was taken to the hospital, then to the civil line police station. And in the morning today, again was taken to the hospital to do the medical formalities. And from the hospital now, he has been again taken back to the ACB office. And from ACB office, this is going to be toward the Route 7 court, which I have been told that this is going to be around at 1:45 or 1:30, because the timing is at 2, what we have been told, when Amanat is going to be produced in front of the Route 7 court. So at this point in time when we are talking, Amanatullah is very much here at the ACB office and the investigation is going on. Yes. All right. Anuj, thank you for those details. We'll keep coming back to you. So remains to be seen what happens really when he's produced before the court this afternoon. So closely tracking this big story from the national capital, AAP leader, another AAP leader in the dock over graft charges, Amanatullah, who will be presented before the court at 2 p.m. And a very short break, more on the other side. Tributes pour in for Queen Elizabeth II as mourners continue to pay tributes to the Queen Elizabeth II.
नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई। हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया कितना अच्छा लगा। अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे या अपने झंडे के ऊपर गर्व नहीं करेंगे या अपने नेशनलिस्ट होने का गर्व नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको ही क्वेश्चनेबल है। आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट वी नीड टू बी प्राउड दैट वी आर इंडियंस। For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? Mr. Jethmalani felt very passionately about this issue and had written several articles. He was an ardent believer that the issue promoted both social harmony and indeed promoted nationalism as well. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pida Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset, not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series has the need for a uniform civil code become imperative today. Honorable guest speakers Shri Arif Muhammad Khan, Justice Kurian Joseph, Shrimati Madhavi Goradia Diwan, Shri Asaduddin Owaisi, Shri Baijayant Jay Panda, Shri Faizan Mustafa. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series, 17th September from 5 p.m. to 7 p.m. only on Republic TV. भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, we will create a global news organization from the soil of India. जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़ दोनों दिशा. You may be one of the channels which is a national channel going regional and international both at the same time. My best wishes to you and your group. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था. News in brief, in Secunderabad, Home Minister Amit Shah kicked off mega Hyderabad Liberation Day celebrations. Shah hoisted the national flag as part of Liberation Day celebrations with much pomp and show. Amidst the integration versus liberation debate, Amit Shah took a jibe at naysayers, saying that the day is historic one and will be celebrated despite opposition tactics. Prime Minister Modi departed from the national capital for Madhya Pradesh for the release of cheetahs flying in from Namibia. Prime Minister also donned a scarf with cheetah imprint as he said for grand welcome of the big cats. Kerala government announced measures including a statewide mass vaccination campaign for vaccinating stray and pet dogs and opening up of more animal birth control centers after several incidents of stray dogs biting unsuspecting strangers were reported in the state.
A very short break. Lots on the other side. Celebrations kick in as cheetahs are back in India after 70 years. Amit Shah sets the record straight, says India will celebrate Liberation Day. Fulfill your dream of studying at the world's leading universities, and that too at a reduced cost with Amity's Global Study Program. Study in India with Amity for some years. Then take a transfer to leading universities in the USA, UK, Canada or Australia and earn a foreign university degree. Apply at amity.edu/global study. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pita Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset. Not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series. Has the need for a uniform civil code become imperative today? Honorable guest speakers Shri Arif Muhammad Khan, Justice Kurian Joseph, Shrimati Madhavi Goradia Diwan, Shri Asaduddin Owaisi, Shri Baijayant Jay Panda, Shri Faizan Mustafa. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series, 17th September from 5 p.m. to 7 p.m. only on Republic TV. भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, we will create a global news organization from the soil of India. जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़ दोनों दिशा. You may be one of the channels which is a national channel going regional and international both at the same time. My best wishes to you and your group. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है. वर्ल्ड में, विश्व में, जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि जी. एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, you cannot term them as a Pakistani and Bangladeshi. They are Hindu, they are proud Hindu. They are India. The most renowned speakers, the most acclaimed legal eagles, the most distinguished academicians, and the biggest newsmakers come together on the most esteemed stage. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई? हर घर तिरंगा का जो पर्व मना अभिनंदन और इस जोशीले स्वागत के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद. हम आगामी क्रम में बढ़ेंगे. आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम निवेदन करेंगे, प्रदेश के माननीय अतिथि सत्कार हम सबकी एक अनिवार्य परंपरा रही है और इसी परंपरा के उपक्रम का हम निर्वहन करने जा रहे हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए विनम्र आग्रह है मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी से पुष्प गुच्छ भेंटकर
हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हार्दिक धन्यवाद। हमारा आग्रह प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर करें। हमारा आग्रह आप सभी की ओर से स्व सहायता समूह की बहनों की ओर से आपके प्रतिनिधि के रूप में सुनीता आदिवासी से हमारा आग्रह है, आप सभी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अनुपम और अद्भुत दृश्य है ये, सभी बहनों की ओर से स्वागत कर रही है बहन माननीय प्रधानमंत्री जी का। अब मैं एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत स्व सहायता समूह की बहन सुनीता कुशवाहा और अनसुईया आदिवासी से आग्रह करती हूं कि सभी स्व सहायता समूह की बहनों की ओर से शिवपुरी जिले की जैकेट और अशोकनगर जिले की चंदेरी का स्टॉल माननीय प्रधानमंत्री जी को उपहार स्वरूप भेंट करें। कम बोलने के लिए बोल रहे हैं एसपी जी। बहुत ही अनुपम और अद्भुत दृश्य, आप सभी की करतल ध्वनि स्वागत कर रहे हैं हम प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का। आगामी क्रम में बढ़ते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए हमारा विनम्र आग्रह है माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, वी विल क्रिएट अ ग्लोबल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सॉइल ऑफ इंडिया। जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़ दोनों दिशा। यू मे बी वन ऑफ द चैनल्स which is a national channel going regional and international both at the same time. My best wishes to you and your group. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। वर्ल्ड में, विश्व में जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि है जी। एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, you cannot term them as a Pakistani and Bangladeshi. They are Hindu, they are proud Hindu. They are India. The most renowned speakers, the most acclaimed legal eagles, the most distinguished academicians, and the biggest newsmakers come together on the most esteemed stage. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई? हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया कितना अच्छा लगा। अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे या अपने झंडे के ऊपर गर्व नहीं करेंगे या अपने नेशनलिस्ट होने का गर्व नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको ही क्वेश्चनेबल है। आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट वी नीड टू बी प्राउड दैट वी आर इंडियंस। For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? Mr. Jethmalani felt very passionately about this issue and had written several articles. He was an ardent believer that the issue promoted both social harmony and indeed promoted nationalism as well. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. There's a very famous saying in
इस छोटे से जिले में गांव गरीब किसानों से मिलने के लिए, हमारी बहनों के उत्साहवर्धन करने के लिए आज हमारे प्रिय नेता और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के मध्य पधारे हैं। मैं आप सब की ओर से उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। किसी भी स्थान पर माननीय प्रधानमंत्री जी का पहुंचना यह अपने आप में एक बड़ी घटना होती है। The most renowned speakers, the most acclaimed legal eagles, the most distinguished academicians, and the biggest newsmakers come together on the most esteemed stage. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई? हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया कितना अच्छा लगा। अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे या अपने झंडे के ऊपर गर्व नहीं करेंगे या अपने नेशनलिस्ट होने का गर्व नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको ही क्वेश्चनेबल है। आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट वी नीड टू बी प्राउड दैट वी आर इंडियंस। For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? Mr. Jethmalani felt very passionately about this issue and had written several articles. He was an ardent believer that the issue promoted both social harmony and indeed promoted nationalism as well. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pida Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset, not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series. Has the need for a uniform civil code become imperative today? Honorable guest speakers Shri Arif Muhammad Khan, Justice Kurian Joseph, Shrimati Madhavi Goradia Diwan, Shri Asaduddin Owaisi, Shri Baijayant Jay Panda, जनरल इलेक्शन हो गए। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मी हतोत्साहित नहीं होंगे और आगामी दिनों में ममता बनर्जी जी और उनकी पार्टी को निश्चित तौर पर ठीक तरीके से जवाब देंगे। और वक्तव्य शेष करने के पहले मैं सारे बंधुओं को, भाइयों बहनों को, भारतीय जनता पार्टी के कर्मियों को जो घोर रूप से आहत है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी उनको कहना चाहती हूँ कि हम सब आप सबके साथ खड़े हैं। और सुजाता मंडल को कहूंगी, बाकी लोगों को कहूंगी कि मन को छोटा ना करें, युद्ध जारी रहेगा और जीत हमारी होगी। और यह बात बहुत विनम्रता के साथ कह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है एक बात जरूर कहूंगी, प्रशासन से आई हूँ, 24 साल मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम किया है, कहना चाहूंगी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को कि प्रशासनिक अधिकारी राजनीति में ना आए, उनका राजनीतिकरण न हो, टीएमसी वर्कर की तरह काम ना करे तो बेहतर होगा।
और ये जो मेरे भाइयों और बहनों को निश्चित तौर पर कहूंगी कि ये जो सितंबर 13 सितंबर को जो कुछ भी हुआ, इसका जवाब हम सब मिलकर देंगे। धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद अपना के लिए। आप जो है समीर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। धन्यवाद सनोली महोदय। जिस प्रकार से पिछले 13 सितंबर को यहाँ बंगाल के अंदर जो घटनाएं हुई, यह घटना बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से यहाँ बंगाल की सरकार के अंदर हमारे लोग जो झेल रहे हैं, यहाँ अराजकता की स्थिति है, पूरा गुंडा राज है, और यहाँ की सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है अपने लिए कट मनी जमा करने के लिए सरकार में बैठी है। जनता की तनिक भी चिंता नहीं है और ना उनकी सुरक्षा की कोई बात है। यहाँ के जनता, यहाँ के युवा लोकतंत्र में अपने अधिकार की मांग को करने के लिए जब आवाज लगाते हैं तो उन आवाजों को दबाने का काम यहाँ के सरकार ने यहाँ के पुलिस को ही गुंडा के रूप में प्रोत्साहित और संरक्षित और आदेश करके उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहा है। जो कि आज यहाँ जो प्रभावित सारे लोगों से बात करके जो यह पता चल रहा है कि यहाँ जो महिला हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके ऊपर जो है पुलिस, जो पुरुष पुलिस है, वो लोग बर्बरतापूर्वक अमानवीय व्यवहार करते हुए इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया। और मैं तो यह भी कह सकता हूँ कि बंगाल के अंदर में एक पुलिस है जो कि जनता की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ स्थापित है, लेकिन वो लोग उल्टे जो है जनता को लूटने के लिए और जनता को जो है पीटने के लिए यहाँ पर काम कर रही है। उसी प्रकार से हम मोह मतलब होता है कि समुदाय समूह, वो समूह सिर्फ और सिर्फ इसी बंगाल के तृणमूल सरकार का एक दूसरा गुंडा है। जो पुलिस एक तरफ है, एक तरफ दूसरा गुंडा है। ये पुलिस और गुंडा दोनों जब एक ही काम करेगा तो जनता की रक्षा क्या होगा? ये दोनों लोग यहाँ के जनता को लूटने का काम कर रहा है। इसलिए स्पष्ट है कि ये जंगल राज है। ये जो है जिस प्रकार से ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक जो व्यवहार किया है, अमानवीय व्यवहार किया है, बहुत ही निंदनीय है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप इतना सब कुछ करते हुए, संघर्ष करते हुए आपकी जो हौसला बहुत बुलंद है और आने वाले दिनों को आप लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, हमारे लिए भी बहुत ही ये देख करके गर्व का विषय हो रहा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे नेता जी ने कहा कि आने वाला लक्ष्य को लेकर के जो चुनाव का समय है, उसके लिए हम सब लोग जो है एक साथ आगे बढ़ेंगे और हम आपके इस लड़ाई में साथ में है। और निश्चित रूप से हम बंगाल के अंदर में जिस प्रकार से एक लोगों के मन को मैं देख रहा हूँ कि अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, इसको मिटा के ही रहेंगे। जिस प्रकार से देश की यशस्वी प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे के साथ चल रहे, उस नारा के साथ आप कदम से कदम मिला करके आगे चल रहे, हम भी आपके साथ आगे चलेंगे। यही बात करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। माननीय ब्रजलाल जी की अनुमति के बाद एक वाक्य बोलना चाहूंगी, आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 का रिपोर्ट आया है, हस्तगत हुआ है, हम सब ने पढ़ा है और दिल दहलाने वाले आंकड़े हैं महिलाओं के लिए। पश्चिम बंगाल में 20% महिला अपराध बढ़ गए हैं। 2019 और 2021 में अगर आप तुलना करें तो 20% बढ़े हैं। और यहाँ का जो कन्विक्शन रेट है वो सिर्फ 2% है बंधु, और यह उत्तर प्रदेश में 55% है और नागालैंड में 80% है। तो इस बात को याद रखिए। कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं अगर पूछना तो। नो क्वेश्चन।
हमारी जो महिलाएं जो घायल हुई हैं, मैं चाहूँगा इसमें सुजाता जी बोलना चाहेंगी? हाँ, प्रेस क्या पूछ रही है? हाँ जी, बताएं। जी, एक सवाल आ रहे हैं, वो यहाँ के जो सत्य में जो है उन लोगों की तरफ से, वो कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में कुछ घटना होती है, राजस्थान में घटना होती है, तब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं बनाए जाते हैं सेंट्रल की ओर से, लेकिन बंगाल में कुछ भी हो तो इस कुछ भी होने के नाते यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजा गया है सेंट्रल के तरफ से। ये बात आ रही है टीएमसी के तरफ से, ममता जी के जो लोग हैं वो ये पूछ रहे हैं। ऐसा है, शायद उनका इशारा अभी उत्तर प्रदेश में जहां 2 अनुसूचित जाति की बालिकाओं के साथ हत्या हुई। मैं बताना चाहूँगा, मैं उत्तर प्रदेश का डीजीपी रहा हूँ अपने पुलिस। Well, there you have, viewers, the press conference that is being addressed by the BJP's fact-finding panel in Kolkata, claiming that their criticism of the government, in fact, will go on since it is a jungle raj that is being perpetrated by the TMC goons on the ground. And viewers, shifting our focus now to Kerala, where according to the police, Bakal police in fact has registered a case under the section of 153A against Samir, a man from Kasargod who was walking with an air gun in front of children going to the madrasa to protect them from stray dogs. Now, these are some shocking images as well that we are putting out on your screens right now. These are CCTV footages that we have accessed. And we are getting to you the latest when it comes to this 50-year-old who has been named as Samir, who escorted children to madrasa by carrying an air gun with him. And the children are seen walking behind him. And we are putting out those images on your screens right now where this man named Samir can be seen in these visuals, who is also carrying a air gun with him. And Samir has said that the menace has become unbearable, that students face difficulties in walking on the road. Now, in protest, the man in fact has decided to carry an air gun to protect the children who are in fact going to the madrasa from dog bites. Now, we are seeing that a case has in fact been registered. Police officials have told your channel that a case in fact has been registered under the sections of 153A against Samir, this man who can be seen in this video, who is carrying an air gun, claiming that he is doing so to protect the children that he has been escorting to the madrasa. And he's saying that this is in reference to the dog menace that is on the rise. And viewers, we're picking up several voices on this developing story. Let's listen into those and then we'll get you all the breaking updates. നായ്ക്കൾ അക്രമാസക്തരാകുന്നതും കൂട്ടം കൂടുന്നതും അവയുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല. മാലിന്യങ്ങൾ And that's the latest, viewers, as far as this video that has come to light is concerned, where this man named Samir in fact has been booked under the sections of 153 of the Indian Penal Code, which also talks about whoever commits an offence specified with respect to religious worship, assembly engaging in performance of religious worship as well. And we see that this man named Samir in fact had been escorting this group of students to the madrasa, and he had been carrying an air gun, claiming that this is in defense of stray dogs. अमरूद का बगीचा भी लगाया है और मेरी इसके अलावा सर जी मैंने खुशी से
For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? Mr. Jethmalani felt very passionately about this issue and had written several articles. He was an ardent believer that the issue promoted both social harmony and indeed promoted nationalism as well. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pida Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset. Not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series. Has the need for a uniform civil code become imperative today? Honorable guest speakers Shri Arif Muhammad Khan, Justice Kurian Joseph, Shrimati Madhavi Goradia Diwan, Shri Asaduddin Owaisi, Shri Baijayant Jay Panda, Shri Faizan Mustafa. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series, 17th September from 5 p.m. to 7 p.m. only on Republic TV. भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, we will create a global news organization from the soil of India. जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़ दोनों दिशा. You may be one of the channels which is a national channel going regional and international both at the same time. My best wishes to you and your group. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है. वर्ल्ड में, विश्व में जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि जी. एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, you cannot term them as a Pakistani and Bangladeshi. They are Hindu, they are proud Hindu. They are India. The most renowned speakers, the most acclaimed legal eagles, the most distinguished academicians, and the biggest newsmakers. Welcome back, viewers. Straight away getting across to some more breaking updates that we are getting this time with respect to the Sonali Phogat murder case and the investigation that is being carried out as well. The CBI team, now we're learning, has reached the Grand Leone Resort. Now, this was the place where Sonali Phogat had stayed in this particular resort as well. And once again, the CBI team, in fact, will collect the evidences that they have gathered from the rooms where Sonali Phogat, Sukhwinder and Sudhir, in fact, had been staying. This rooms, in fact, we are learning, had been sealed by the Goa police, and now that the investigation has been handed over to the CBI, they have also reached to the Grand Leone Resort, where they are going to be looking into the rooms where Sonali Phogat, Sukhwinder and Sudhir, in fact, had been staying. Of course, remember, viewers, the investigation has revealed how the conspiracy had run a lot longer to get Sonali Phogat to Goa, and then, of course, subsequently how she had been murdered as well. And now we are seeing the investigation that is being carried out by the CBI that has reached the Grand Leone Resort.
My colleague Sandeep is also joining me on the broadcast with more updates on this. Sandeep, tell us more about the CBI team that has reached the Grand Leone Resort. What is the course of investigation that they will be taking forward now? Because will they be looking into the entire conspiracy angle as well? Tell our viewers the latest when it comes to the investigation that is being done by the CBI. See, as far as the investigation is concerned, 2 days ago, CBI officials in fact had arrived Goa, and in fact we are out here at the Grand Leone Resort, wherein Sonali Phogat, Sudhir Sangwan and his associate Sukhwinder were in fact staying. On 22nd of August, they arrived out here at the Grand Leone Resort, and in fact we have just got some exclusive visuals from this resort, wherein the CFSL team is collecting the evidences from the rooms where Sonali Phogat and Sudhir Sangwan were in fact staying, and in fact videography and photography has also been done. So definitely evidences is being collected by the CBI from their end. And from another part of this story is the Goa police was in fact investigating this matter since last 20 days, and Goa police has given all the statements that were recorded in last 20 days. Also, the evidences that were collected by Goa police were also been given to CBI. So in upcoming days, it will be very much crucial what kind of course of action does CBI takes. But at this point of time, the CBI officials are out here at Grand Leone Resort, and apart from that, CBI officials are going to visit the Curly's pub, the infamous Curly pub located in Anjuna. CBI officials will also be going there, and the CFSL team, the forensic experts, will also go there to collect all the evidences from Curly's pub. So it will be very much crucial, and one of the most important point is that CBI is into some legal procedures now and will be seeking the custody of the prime accused in this case, Sudhir Sangwan and Sukhwinder. So this would be very big if CBI will be in fact seeking their custody in the court. So at this point of time, they are collecting all the evidences out here in Goa, the Grand Leone Resort, and will be going to Curly's in fact, and they will be in fact, CBI will be approaching the court in order to take a question Sudhir Sangwan and Sukhwinder, who were in fact present with Sonali Phogat and in the main accused in this case. Sandeep, stay with us and let's take a step back and explain to our viewers this entire bigger investigation that is being carried out by the CBI now, and also with respect to the conspiracy angle that the local police had also looked into and found evidences of. Walk our viewers through the kind of evidences that have already been collected by the CBI and the working theory of the entire murder case that they have as of now. See, as far as the Goa police investigation is concerned, because Goa police was in fact investigating this matter since last 20 days. So Goa police recorded the statement of Sudhir Sangwan and Sukhwinder. Apart from that, when we talk about the murder conspiracy, on 22nd of August, Sonali Phogat with Sudhir Sangwan and Sukhwinder arrived out here at Goa, and in fact they booked a resort out here, and in fact they visited Curly's later on. Now the CBI team is out here in Goa investigating this matter. We are giving you back-to-back updates on Sonali Phogat murder case from Goa. Stay tuned. Fulfill your dream of studying at the world's leading universities, and that too at a reduced cost with Amity's Global Study Program. Study in India with Amity for some years. Then take a transfer to leading universities in the USA, UK, Canada or Australia and earn a foreign university degree. Apply at amity.edu/global study. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series. Has the need for a uniform civil code become imperative today? Honorable guest speakers Shri Arif Muhammad Khan, Justice Kurian Joseph,
श्रीमती माधवी गोराडिया दीवान, श्री असादुद्दीन ओवैसी, श्री बैजयंत जय पांडा, श्री फैजान मुस्तफा. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series, 17th September from 5 p.m. to 7 p.m. only on Republic TV. भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, we will create a global news organization from the soil of India. जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. यू मे बी वन ऑफ द चैनल्स which is a national channel going regional and international both at the same time. My best wishes to you and your group. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है. वर्ल्ड में, विश्व में जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि जी. एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, you cannot term them as a Pakistani and Bangladeshi. They are Hindu, they are proud Hindu. They are India. The most renowned speakers, the most acclaimed legal eagles, the most distinguished academicians, and the biggest newsmakers come together on the most esteemed stage. फिर घूम जाओ, चलो चलो सीधे 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 घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ. हाँ ठीक है. ठीक है. उसके बाद पता याद रखना. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है. वर्ल्ड में, विश्व में जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि जी. एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, you cannot term them as a Pakistani and Bangladeshi. They are Hindu, they are proud Hindu. They are India. The most renowned speakers, the most acclaimed legal eagles, the most distinguished academicians, and the biggest newsmakers come together on the most esteemed stage. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई? हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया कितना अच्छा लगा. अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे, या अपने झंडे के ऊपर गर्व नहीं करेंगे, या अपने नेशनलिस्ट होने का गर्व नहीं करेंगे, तो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको ही क्वेश्चनेबल है. आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट वी नीड टू बी प्राउड दैट वी आर इंडियंस. For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? Mr. Jethmalani felt very passionately about this issue and had written several articles. He was an ardent believer that the issue promoted both social harmony and indeed promoted nationalism as well.
Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pita Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset, not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series. Has the need for a uniform civil code become imperative today? Honorable guest speakers Shri Arif Muhammad Khan, Justice Kurian Joseph, Shrimati Madhavi Goradia Diwan, Shri Asaduddin Owaisi, Shri Baijayant Jay Panda, Shri Faizan Mustafa. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series, 17th September from 5 p.m. to 7 p.m. only on Republic TV. भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, श्री राणो जी और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं अपनी इस खुशी का इजहार करना चाहता हूं कि आप लोगों ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के द्वारा आयोजित कार्यक्रम जिसकी थीम है राष्ट्र सर्वोपरि, उसमें विचार करने के लिए आमंत्रित किया है। रिपब्लिक मीडिया समूह के बारे में जितनी हमारी जानकारी है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि थोड़े समय में ही इस रिपब्लिक मीडिया समूह ने जन सामान्य का विश्वास हासिल करने में जो कामयाबी हासिल की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मुझे यह भी बताया गया है कि देश भर में लगभग 30 करोड़ से अधिक लोगों तक रीच बनाने में यह मीडिया समूह ने अपनी कामयाबी हासिल की है। मैं समझता हूं इस मीडिया समूह के लिए बहुत ही एक गौरव का विषय है और रिपब्लिक भारत द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम न केवल आयोजन की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है, बल्कि मैं यह मानता हूं कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जिस पृष्ठभूमि में यह कार्यक्रम हो रहा है वह भी अपने में महत्वपूर्ण है। और थीम का जहां तक प्रश्न है, थीम तो अपने में महत्वपूर्ण है ही, इसको कोई नकार नहीं सकता। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश प्रगति के पथ पर जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देशवासियों का राष्ट्र प्रेम की भावना जो उनके अंदर है, इस भावना के परिणाम स्वरूप एकजुट होकर वह कार्य कर रहे हैं। बिना राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना और बिना एकजुटता के दुनिया का कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है, यह हमारी मान्यता है। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि थीम पर यह आयोजन मैं मानता हूं कि अपने संकल्पों की और साथ ही साथ अपने उद्देश्यों की भी यह अभिव्यक्ति है और साथ ही देश की जनता की भावना, राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में भी एक यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। और रिपब्लिक भारत मीडिया समूह के इस प्रयास के लिए मैं पुनः रिपब्लिक
भारत मीडिया को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं समझता हूं कि यह हमारे राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक यह महामंत्र है। हम अपने मन, वचन और कर्म से राष्ट्र को केंद्र में रखें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे साथीगण, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायक साथी, विशाल संख्या में पधारे हुए अन्य सभी महानुभाव और आज इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु में है, जिनके लिए ये कार्यक्रम है, ऐसी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित स्वयं सहायता समूह से जुड़ी माताओं बहनों को प्रणाम। आप सभी का स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर ने मेरे जन्मदिवस को याद किया। मुझे ज्यादा याद नहीं रहता है, लेकिन अगर सुविधा रही, अगर कोई कार्यक्रम जिम में नहीं है, तो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के, अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य आज मेरी मां जब देखेगी, उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। अब इतनी बड़ी तादाद में माताएं, बहनें, बेटियां, ये आपका आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, मोटिवेशन है। और मेरे लिए तो देश की माताएं, बहनें, देश की बेटियां, वो मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। शक्ति का स्रोत है। मेरी प्रेरणा है। इतनी बड़ी विशाल संख्या में आए भाई बहन,
आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है। आज विश्वकर्मा पूजा भी हो रही है। विश्वकर्मा जयंती पर स्वयं सहायता समूहों का इतना बड़ा सम्मेलन अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता के रूप में मैं देखता हूं। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को विश्वकर्मा पूजा की भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। अब से कुछ देर पहले मुझे कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने का सौभाग्य मिला। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, करूं आग्रह? आप जवाब दे तो करूं, आग्रह करूं, आग्रह करूं सबको, ये मंच वालों को भी आग्रह करूं। सबका कहना है कि मैं आग्रह करूं। आज इस मैदान से हम पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं। आज जब 8 चीते 75 साल करीब उसके बाद हमारी देश की धरती पर लौट आए हैं, दूर अफ्रीका से आए हैं, लंबी सफर करके आए हैं, हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं। इन मेहमानों के सम्मान में मैं एक काम कहता हूं, करोगे? इन मेहमानों के सम्मान में हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके हमारे मेहमानों का स्वागत करें। जोर से ताली बजाएं और जिन्होंने हमें ये चीते दिए हैं उन देशवासियों का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने लंबे अरसे के बाद हमारी ये कामना पूरी की है। जोरों से ताली बजाइए साथियों, इन चीतों के सम्मान में ताली बजाइए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को इस ऐतिहासिक अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन इससे भी ज्यादा मैं आप सबको, इस इलाके के नागरिकों को एक विशेष बधाई देता हूं। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, जंगल भी बहुत है, वन्य पशु भी बहुत जगह पे हैं, लेकिन ये चीते आपके यहां आने का भारत सरकार ने निर्णय क्यों किया? क्या कभी आपने सोचा है? यही तो सबसे बड़ी बात है। ये चीता आपको सुपुर्द इसलिए किया है कि आप पर हमारा भरोसा है। आप मुसीबत झेलेंगे लेकिन चीते पर मुसीबत नहीं आने देंगे, ये मेरा विश्वास। इसी के कारण आज मैं आप सबको ये 8 चीतों की जिम्मेवारी सुपुर्द करने के लिए आया हूं।
और मुझे पूरा विश्वास है इस देश के लोगों ने कभी मेरे भरोसे को तोड़ा नहीं है। मध्य प्रदेश के लोगों ने कभी भी मेरे भरोसे पर आंच नहीं आने दी है और ये श्योपुर इलाके के लोगों को भी मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे भरोसे पर आंच नहीं आने देंगे। आज मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों द्वारा राज्य में 10 लाख पौधों का रोपण भी किया जा रहा है। पर्यावरण की रक्षा के लिए आप सभी का ये संगठित प्रयास, भारत का पर्यावरण के प्रति प्रेम, पौधे में भी परमात्मा देखने वाला मेरा देश, आज के आप इन प्रयासों से भारत को एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। साथियों, पिछली शताब्दी के भारत और इस शताब्दी के नए भारत में एक बहुत बड़ा अंतर हमारी नारी शक्ति के प्रति। आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां श्योपुर जिले में एक मेरी आदिवासी बहन जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है। बैठिए। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 बहनें जनप्रतिनिधि के रूप में चुनी गई है। ये बड़े बदलाव का संकेत है, बड़े परिवर्तन का आह्वान है। साथियों, आजादी की लड़ाई में सशस्त्र संघर्ष से लेकर सत्याग्रह तक देश की बेटियां किसी से पीछे नहीं रही है। आज जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हम सबने देखा है कैसे जब हर घर में तिरंगा फहरा तो उसमें आप सभी बहनों ने, महिला स्वयं सहायता समूहों ने कितना बड़ा काम किया है। आपके बनाए तिरंगों ने राष्ट्रीय गौरव के क्षण को 4 चांद लगा दिए। कोरोना काल में, संकट की उस घड़ी में मानव मात्र की सेवा करने के इरादे से आपने बहुत बड़ी मात्रा में मास्क बनाए, पीपीई किट्स बनाने से लेकर लाखों लाख तिरंगे, यानी एक के बाद एक हर काम में देश की नारी शक्ति ने हर मौके पर, हर चुनौती को अपनी उद्यमिता के कारण देश में नया विश्वास पैदा किया और नारी शक्ति का परिचय दे दिया है। और इसलिए आज मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ एक स्टेटमेंट करना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेवारी के साथ करना चाहता हूं। पिछले 20-22 साल के शासन व्यवस्था के अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं, आपके समूह का जब जन्म होता है
10-12 बहनें इकट्ठी होकर के कोई काम शुरू करती हैं। जब आपका इस एक्टिविटी के लिए जन्म होता है, तब तो आप स्वयं सहायता समूह होते हैं। जब आपके कार्य की शुरुआत होती है, एक एक डग रख करके काम शुरू करते हैं, कुछ पैसे इधर से कुछ पैसे इधर से इकट्ठा करके कोशिश करते हैं, तब तक तो आप स्वयं सहायता समूह है। लेकिन मैं देखता हूं आपके पुरुषार्थ के कारण, आपके संकल्प के कारण, देखते ही देखते ये स्वयं सहायता समूह राष्ट्र सहायता समूह बन जाते हैं। और इसलिए कल आप स्वयं सहायता समूह होंगे, लेकिन आज आप राष्ट्र सहायता समूह बन चुके हैं, राष्ट्र की सहायता कर रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की यही ताकत आजादी के अमृत काल में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत अहम भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आज प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। साथियों, मेरा यह अनुभव रहा है कि जिस भी सेक्टर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, उस क्षेत्र में, उस कार्य में सफलता अपने आप तय हो जाती है। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसको महिलाओं ने नेतृत्व दिया है। आज गांव में खेती हो, पशुपालन का काम हो, डिजिटल सेवाएं हो, शिक्षा हो, बैंकिंग सेवाएं हो, बीमा से जुड़ी सेवाएं हो, मार्केटिंग हो, भंडारण हो, पोषण हो, अधिक से अधिक क्षेत्रों में बहनों बेटियों को प्रबंधन से जोड़ा जा रहा है। मुझे संतोष है कि इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारी आज जो बहनें हैं, उसके भी काम देखिए, कैसे कैसे विविध मोर्चों को संभालती है। कुछ महिलाएं पशु सखी के रूप में, कोई कृषि सखी के रूप में, कोई बैंक सखी के रूप में, कोई पोषण सखी के रूप में, ऐसी अनेक सेवाओं की ट्रेनिंग लेकर वे शानदार काम कर रही है। आपके सफल नेतृत्व, सफल भागीदारी का एक उत्तम उदाहरण जल जीवन मिशन भी है। अभी मुझे एक बहन से कुछ बातचीत करने का उससे मौका भी मिला। हर घर पाइप से जल पहुंचाने के इस अभियान में सिर्फ 3 वर्षों में 7 करोड़ नए पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इनमें से मध्य प्रदेश में भी 40 लाख परिवारों को नल से जल पहुंचाया जा चुका है। और जहां जहां नल से जल पहुंच रहा है, वहां माताएं बहनें डबल इंजन की सरकार को बहुत आशीर्वाद देती है। मैं इस सफल अभियान का सबसे अधिक श्रेय मेरे देश की माताओं बहनों को, आपको देता हूं। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 3000 से अधिक
नल जल परियोजनाओं का प्रबंधन आज स्वयं सहायता समूहों के हाथ में है। वे राष्ट्र सहायता समूह बन चुके हैं। पानी समितियों में बहनों की भागीदारी हो, पाइपलाइन का रखरखाव हो या पानी से जुड़ी टेस्टिंग हो, बहनें बेटियां बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही है। ये जो किट्स आज यहां दी गई है, ये पानी के प्रबंधन में बहनों बेटियों की भूमिका को बढ़ाने का ही प्रयास है। साथियों, पिछले 8 वर्षों में स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने हमने हर प्रकार से मदद की है। आज पूरे देश में 8 करोड़ से अधिक बहनें, 8 करोड़ से भी अधिक बहनें इस अभियान से जुड़ चुकी है। मतलब एक प्रकार से 8 करोड़ परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर ग्रामीण परिवार से कम एक महिला, एक बहन हो, बेटी हो, मां हो, इस अभियान से जुड़े। यहां मध्य प्रदेश की भी 40 लाख से अधिक बहनें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 वर्षों में जितनी मदद दी गई, बीते 7 साल में उसमें लगभग 13 गुना बढ़ोतरी हुई है। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये सीमा भी 2 गुनी यानी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप उस नई यूनिट लगाने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक की मदद दी जा रही है। देखिए माताओं बहनों पर, उनकी ईमानदारी पर, उनके प्रयासों पर, उनकी क्षमता पर कितना भरोसा है सरकार का कि इन समूहों को 3 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथियों, गांव की अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए नई संभावनाएं बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से हम हर जिले के लोकल उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी हो रहा है। थोड़ी देर पहले यहां 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अभियान से जुड़ी बहनों के साथ मुझे बातचीत करने का मौका मिला, कुछ उत्पाद को देखने का मौका मिला और कुछ उत्पाद मुझे उन्होंने उपहार में भी दिए हैं। ग्रामीण बहनों द्वारा बनाए गए ये उत्पाद मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अनमोल है। मुझे खुशी है कि यहां मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज जी की सरकार ऐसे उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। सरकार ने अनेक ग्रामीण बाजार स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों के लिए ही
बनाए हैं। मुझे बताया गया है कि इन बाजारों में स्वयं सहायता समूह ने 500 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादों की बिक्री की है। 500 करोड़, यानी इतना सारा पैसा आपकी मेहनत से गांव की बहनों के पास पहुंचा है। साथियों, आदिवासी अंचलों में जो वन उपज है उनको बेहतरीन उत्पादों में बदलने के लिए हमारी आदिवासी बहनें प्रशंसनीय काम कर रही है। मध्य प्रदेश सहित देश की लाखों आदिवासी बहनें प्रधानमंत्री वन धन योजना का लाभ उठा रही है। मध्य प्रदेश में आदिवासी बहनों द्वारा बनाए बेहतरीन उत्पादों की बहुत अधिक प्रशंसा भी होती रही है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में नए स्किलिंग सेंटर से इस प्रकार के प्रयासों को और बल मिलेगा। माताओं बहनों, आजकल ऑनलाइन खरीदारी का प्रचलन बढ़ रहा है, इसलिए सरकार का जो GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है, उस पर भी आपके उत्पादों के लिए सरस नाम से विशेष एक स्थान रखा गया है। इसके माध्यम से आप अपने उत्पाद सीधे सरकार को, सरकारी विभागों को बेच सकते हैं। जैसे यहां श्योपुर में लकड़ी पर नक्काशी का इतना अच्छा काम होता है, इसकी देश में बहुत बड़ी डिमांड है। मेरा आग्रह है कि आप अधिक से अधिक इसमें खुद को, अपने उत्पादों को ये जेम में रजिस्टर करवाइए। साथियों, सितंबर का ये महीना देश में पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। भारत की कोशिशों से संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को, अगला वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज के रूप में मनाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश तो पोषण से भरे इस मोटे अनाज के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में है। विशेष रूप से हमारे आदिवासी अंचलों में इसकी एक समृद्ध परिपाटी है। हमारी सरकार द्वारा कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाज को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। और मैंने तो तय किया है, अगर भारत सरकार में किसी विदेशी मेहमान के लिए खाना देना है तो उसमें कुछ न कुछ तो मोटे अनाज का होना ही चाहिए, ताकि मेरा जो छोटा किसान काम करता है वो विदेशी मेहमान की थाली में भी वो परोसा जाना चाहिए। स्वयं सहायता समूहों के लिए इसमें बहुत अधिक अवसर है। साथियों, एक समय था जब घर परिवार के भीतर ही माताओं बहनों की अनेक समस्याएं थी। घर के फैसलों में भूमिका बहुत सीमित होती थी। अनेक घर ऐसे होते थे, अगर बाप और बेटा बात कर रहे हैं व्यापार की, काम की, और अगर मां घर से किचन में से बाहर आ गई तो तुरंत बेटा बोल देता है या तो बाप बोल देता है, जा जा तू रसोड़े में काम कर, हमको जरा बात करने दे। आज ऐसा नहीं है। आज माताओं बहनों के विचार, सुझाव, परिवार में भी उसका महात्म्य बढ़ने लगा है। लेकिन इसके पीछे योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने प्रयास किए हैं। पहले ऐसे सोचे समझे प्रयास नहीं होते थे। 2014 के बाद से ही देश
महिलाओं की गरिमा बढ़ाने, महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान में जुटा हुआ है। शौचालय के अभाव में जो दिक्कतें आती थी, रसोई में लकड़ी के धुएं से जो तकलीफ होती थी, पानी लेने के लिए 2-2, 4-4 किलोमीटर जाना पड़ता था, आप ये सारी बातें अच्छी तरह जानती हैं। देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर, 9 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के गैस कनेक्शन देकर और करोड़ों परिवारों में नल से जल दे करके आपका जीवन आसान बनाया है। माताओं बहनों, गर्भावस्था के दौरान कितनी समस्याएं थी, ये आप बेहतर जानती हैं। ठीक से खाना पीना भी नहीं हो पाता था, चेकअप की सुविधाओं का भी अभाव था। इसलिए हमने मातृ वंदना योजना शुरू की। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। मध्य प्रदेश की भी बहनों को इसके तहत करीब 1300 करोड़ रुपए ऐसी गर्भवती महिलाओं के खाते में पहुंचे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत मिल रहे 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज ने भी गरीब परिवार की बहनों की बहुत बड़ी मदद की है। माताओं बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अच्छे परिणाम आज देश अनुभव कर रहा है। बेटियां ठीक से पढ़ाई कर सके, उनको स्कूल बीच में छोड़नी ना पड़े, इसके लिए स्कूलों में बेटियों के लिए अलग शौचालय बनाए, सैनिटरी पैड्स की व्यवस्था की गई। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लगभग 2.5 करोड़ बच्चियों के अकाउंट खोले गए। साथियों, आज जनधन बैंक खाते में देश में महिला सशक्तिकरण के बहुत बड़े माध्यम बने हैं। कोरोना काल में सरकार अगर आप बहनों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाई है, तो उसके पीछे जनधन अकाउंट की ताकत है। हमारे यहां संपत्ति के मामले में ज्यादातर नियंत्रण पुरुषों के पास ही रहता है। अगर खेत है तो पुरुष के नाम पर, दुकान है तो पुरुष के नाम पर, घर है तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी है तो पुरुष के नाम पर, स्कूटर है तो पुरुष के नाम पर, महिला के नाम पर कुछ नहीं। और पति नहीं रहे तो बेटे के नाम पर चला जाए। हमने इस परिपाटी को खत्म करके मेरी माताओं बहनों को ताकत दी है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाला घर हम सीधा महिलाओं के नाम पर देते हैं। महिला उसकी मालिक बन जाती है। हमारी सरकार ने देश की 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को अपने घर की मालकिन बनाया है। ये बहुत बड़ा काम है माताओं बहनों। मुद्रा योजना के तहत भी अभी तक देश भर में 19 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी का ऋण छोटे छोटे व्यापार कारोबार के लिए दिया जा चुका है। ये जो पैसा है उसमें से लगभग 70% मेरी माताएं बहनें जो उद्यम करती हैं उन्होंने प्राप्त किया है। मुझे खुशी है कि सरकार के ऐसे प्रयासों के कारण आज घर के आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है। साथियों,
महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण उन्हें समाज में भी उतना ही सशक्त बनाता है। हमारी सरकार ने बेटियों के लिए सारे जितने दरवाजे बंद थे ना, सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अब बेटियां सैनिक स्कूलों में भी दाखिल हो रही है, पुलिस कमांडो में जाकर के देश की सेवा कर रही है। इतना ही नहीं, सीमा पर भारत मां की बेटी भारत मां की रक्षा करने का काम फौज में जाकर के कर रही है। पिछले 8 वर्षों में देश भर की पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या 1 लाख से बढ़कर 2 गुनी यानी 2 लाख से भी अधिक हो चुकी है। केंद्रीय बलों में भी अलग अलग जो सुरक्षा बल है, आज हमारी 35,000 से अधिक बेटियां देश के दुश्मनों से, आतंकवादियों से टक्कर ले रही हैं। दोस्तों, आतंकवादियों को धूल चटा रही है। ये संख्या 8 साल पहले की तुलना में लगभग 2 गुनी हो गई है। यानी परिवर्तन आ रहा है, हर क्षेत्र में आ रहा है। मुझे आपकी ताकत पर पूरा भरोसा है। सबका प्रयास से एक बेहतर समाज और सशक्त राष्ट्र बनाने में हम जरूर सफल होंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आकर के हमें आशीर्वाद दिए हैं। आपके लिए अधिक काम करने की आपने मुझे प्रेरणा दी है, आपने मुझे शक्ति दी है। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हम सबके लिए भावुक कर देने वाले ये पल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य पाकर निश्चित ही गौरवान्वित हम सभी महसूस कर रहे हैं। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें, उनका अभिनंदन करें, आभार व्यक्त करें इतनी सारी सौगातें हम सब के लिए देने के लिए। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, आभार व्यक्त करें। भारत And viewers, slipping into a very short break, but bringing you all the updates of how India has welcomed the 8 cheetahs that have been released into the Kuno National Park. Stay tuned to Republic, getting you updates on the other side. नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई? हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया कितना अच्छा लगा। अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे या अपने झंडे के ऊपर गर्व नहीं करेंगे या अपने नेशनलिस्ट होने का गर्व नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको ही क्वेश्चनेबल है। आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट वी नीड टू बी प्राउड दैट वी आर इंडियंस।
For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? Mr. Jethmalani felt very passionately about this issue and had written several articles. He was an ardent believer that the issue promoted both social harmony and indeed promoted nationalism as well. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pida Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset. Not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series. Has the need for a uniform civil code become imperative today? Honorable guest speakers Shri Arif Muhammad Khan, Justice Kurian Joseph, Shrimati Madhavi Goradia Diwan, Shri Asaduddin Owaisi, Shri Baijayant Jay Panda, Shri Faizan Mustafa. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series, 17th September from 5 p.m. to 7 p.m. only on Republic TV. भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, we will create a global news organization from the soil of India. जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय Welcome back, viewers. Cutting across to some more breaking updates that we are getting. A shocking development, in fact, a bomb explosion that has been occurred on the terrace of Cheetah Free India High School. And we're being told that the bomb explosion had taken place while the school was going on in the North 24 Pragnas district, is what we are learning. Of course, we are getting you all the updates as far as this bomb explosion we are learning that has taken place on the terrace of a school, of a high school in fact. And we are being told that while the explosion had taken place, the high school was in session, the school was going on, and on the terrace of this school is where the bomb explosion has taken place in Bengal. For more details, let me go across to my colleague Ishan Dev, who's joining me on the broadcast. Ishan Dev, tell our viewers more about this bomb explosion that has taken place. Has there been any investigation as to how this explosion had come to take place on a terrace of a high school? Yeah, exactly. This is very astonishing and astounding that on the terrace of a high school, and when the school is going on, at the time such an explosion happens, and this has created intense reactions throughout West Bengal. As you were mentioning, Cheetah, it comes under the North 24 Parganas area, but it comes under the Barakpur industrial belt, and that is completely adjacent to Kolkata. So a place which is such a near to the capital of West Bengal, in that place a school is going on and at that time such an explosion is happening at the terrace of the school. This is really a very, very horrible situation there. And as the police has taken over the investigation of the situation instantly, so the Deputy Commissioner of Barakpur Police Commissionerate, Mr. Ashish Maurya, he has visited the place, and as he has said that it was a bomb explosion, but whether it was a crude bomb explosion or the bomb was a different kind of bomb, that is not clear yet from the
statement of the police. Police is yet to make any detailed statement on the about the explosion, but it was an explosion and it was a bomb explosion when the school was going on. This has been confirmed by the Barakpur Police Commissionerate itself. And not only the police, but the political functionaries are also visiting the place. Arjun Singh, who was who is an MP of that place, who was elected on a BJP ticket, but who is now in TMC, he has also visited the place. He is saying that this is a very unfortunate situation, such a thing, that an explosion is happening inside a school when the classes are going on. That has never happened in his area earlier. So someone is trying to frighten the people, someone is trying to terrorize the people, and that's why maybe this has happened. Everything will come out, the truth will come out when the investigation will be complete. This is the statement from Arjun Singh. But intense political debate is happening around this explosion, as BJP is claiming that law and order situation is completely broken in West Bengal. And the fact-finding committee sent by BJP National President JP Nadda is visiting West Bengal today. They are the fact-finding committee which is trying to find the facts about the allegations of police atrocities on BJP supporters and workers during Nabanna Abhijan. And Brijlal, who is an MP and who was the former DG of UP, he has made a statement in West Bengal today that jungle raj is going on here in West Bengal. And on the same date, significantly, such an incident happens. A bomb explodes inside a school, on the terrace of the school, and when the students of the school were there, very worrisome facts of this entire situation. Could you also elaborate for our viewers, because you are telling us that the class had been in session when this bomb had gone off. So was the evacuation done safely? Has everybody been evacuated safely? Have there been any reports of any injuries? And also, as you're mentioning about the fact-finding committee, what are the allegations as of now as far as the investigation is concerned? Tell our viewers all these details, please. As per the reports are coming from there, from Titagarh, the students are not injured. The students are completely safe because the bomb which went off on the terrace, and the part of the building is a bit damaged, but that has not told upon the students or the teachers there. And as the reports are coming, that this a bomb went off there, but whether it's a crude bomb or a different kind of bomb, police has not made it clear yet. So we will get minute-to-minute updates on this. But before that, we have to move into a short break right now. There's a very famous saying in Pakistani Punjab: "Khanda pida laheda, baki Ahmad Shahida." Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be. Is something that has deeply scarred the Pakistani mindset, not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction, is bound to fail. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series. Has the need for a uniform civil code become imperative today? Honorable guest speakers Shri Arif Muhammad Khan, Justice Kurian Joseph, Shrimati Madhavi Goradia Diwan, Shri Asaduddin Owaisi, Shri Baijayant Jay Panda, Shri Faizan Mustafa. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series, 17th September from 5 p.m. to 7 p.m. only on Republic TV. भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, we will create a global news organization from the soil of India. जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़, दोनों दिशा. You may be one of the channels
which is a national channel going regional and international both at the same time. My best wishes to you and your group. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। वर्ल्ड में, विश्व में जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि है। जी। एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, you cannot term them as a Pakistani and Bangladeshi. They are Hindu, they are proud Hindu. They are India. The most renowned speakers, the most acclaimed legal eagles, the most distinguished academicians, and the biggest newsmakers come together on the most esteemed stage. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई? हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया कितना अच्छा लगा। अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे या अपने झंडे Now viewers, shifting our focus to what's happening in Kerala, where according to the police, a case has now been registered under the section 153A, where we are seeing in this video a man named Sameer, in fact, who is armed with an air gun, escorting several students to madrasa, and he is claiming that that gun was being carried by him to tackle the menace of the stray dogs who had become a frequent attack that they were carrying out on the students as well, because of which he had to escort these students with an air gun in his hand, and he has been identified as Sameer. And we have seen that the police has said that the case has been registered under the section 153A as well of the IPC. And viewers, we're getting several reactions on this. Let's listen into what the Chief Minister Pinarayi Vijayan also had to say about this entire incident. Then we'll get you all the breaking updates. അക്രമാസക്തരാകുന്നതും കൂട്ടം കൂടുന്നതും അവയുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല. മാലിന്യങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നായ്ക്കളുടെ കൂട്ടം ചേരലിന് ഒരു പ്രധാന കാരണമായി കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നാം പൊതുവേ കാണേണ്ട പ്രശ്നം നായ്ക്കളെ കൊന്നൊടുക്കിയത് കൊണ്ട് ഇത് പരിഹരിക്കാനാവുന്നതല്ല. വളർത്തുനായകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സംസ്ഥാനത്ത് നിർബന്ധമാക്കും. ഇപ്പോൾ പേവിഷബാധയേറ്റ് ഈ വർഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 21 മരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. ഇവരിൽ 15 പേരും പേവിഷബാധക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനും IDRV, ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിനും ERIG എടുക്കാത്തവരാണ്. Well, there you have it. The Chief Minister Pinarayi Vijayan has also taken cognizance of this entire issue that has come to light of this man named Sameer, who is armed with an air gun and is seen in these videos escorting several students to madrasas as well. And on one side, we're also putting out those videos of the stray dog attacks and the menace that had been increasing, as claimed by this man named Sameer, who is seen in this video being armed with an air gun escorting children as well. My colleague Ashwin has been on the ground and he has filed several reports from the ground as well. Let's take a look at that, viewers. While the government has promised that it will While the government has promised by September 20th, it will speed up the process of vaccination and sterilization of the dogs, the activists have stated that for the last few decades, there has been empty promises that has been made and no enforcement.
However, what needs to be seen is whether the government will take a final solution, and that sterilization must be done at a war footing to ensure that people on the road and also dogs on the street both are safe. With video journalist Mani S from Kovalam, Ashwin Nandakumar, Republic TV. And there you have it, viewers. The authorities, in fact, have taken cognizance of this kind of a video that has really come to light of this man named Samir, who is escorting students with a gun, with an air gun that he is handed with, and escorting the students. And he has claimed that this is because of the growing menace of the stray dogs as well. And we are seeing several videos of those increased in the attacks as well, where the stray dogs are attacking the passerbys. And we are now seeing another such video of a man armed with an air gun escorting the students, claiming that he had been forced to do so because there was a growing menace of the stray dogs on the streets. And slipping into a very short break here now, viewers, getting you details on the other side of the Prime Minister turning 72 and wishes pour in from across the globe. Stay tuned to Republic, getting you all the updates on the other side. Fulfill your dream of studying at the world's leading universities, and that too at a reduced cost with Amity's Global Study Program. Study in India with Amity for some years. Then take a transfer to leading universities in the USA, UK, Canada or Australia and earn a foreign university degree. Apply at amity.edu/global study. भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, we will create a global news organization from the soil of India. जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. You may be one of the channels which is a national channel going regional and international both at the same time. My best wishes to you and your group. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है. वर्ल्ड में, विश्व में जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि है. जी. एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, you cannot term them as a Pakistani and Bangladeshi. They are Hindu, they are proud Hindu. They are India. The most renowned speakers, the most acclaimed legal eagles, the most distinguished academicians, and the biggest newsmakers come together on the most esteemed stage. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई? हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया कितना अच्छा लगा. अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे या अपने झंडे के ऊपर गर्व नहीं करेंगे या अपने नेशनलिस्ट होने का गर्व नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको ही क्वेश्चनेबल है. आई हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट वी नीड टू बी प्राउड दैट वी आर इंडियंस. ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे.
From Namibia to India, cheetahs are back in the country after 70 years. A historic day for India, but Vadra Congress politics on claims credit for the move. Liberation versus integration debate rages on, but mega celebrations across Hyderabad. वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने निजाम की सेना और रजाकारों को पुलिस एक्शन से परास्त कर इस समग्र प्रदेश को आजादी की सांस लेने का अधिकार दिया था। Shah sets the record straight, but India will celebrate Liberation Day. Prime Minister Modi turns 72, wishes pour in from across the globe. Thanks for tuning in this Saturday afternoon. We are live and breaking. I'm Samiksha Srivastava. Our top focus this hour, in another honor to the father of the Indian Constitution, a book has been released titled Ambedkar and Modi, Reformers, Ideas, Performers, Implementation. But what makes the book even more striking is the parallel drawn between B.R. Ambedkar and Prime Minister Modi's lives. In another honor to the father of Indian Constitution, a book has been released titled Ambedkar and Modi, Reformers, Ideas, Performance, Implementation. Former President Kovind released the much-anticipated book on Friday in presence of Union Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur and several other dignitaries. The book draws a parallel between the lives of B.R. Ambedkar and PM Modi and throws a light on how Prime Minister Modi have been working in the directions of the ideas that Ambedkar believed in. Featuring the foreword by music composer and Rajya Sabha member, the book gives an in-depth insight into the life and works of Dr. Bhimrao Ambedkar. In its 12 chapters, the book focuses on different fields like infrastructure, education, socio-economic mobility, gender equality, self-reliance, and many more. The book gives a glimpse of Dr. Ambedkar's vision of India and at the same time sees them in the light of works done by Prime Minister Modi's government. From banking services to extending health insurance and taking the idea of women empowerment to that of women-led empowerment, how the picture of Indian society has changed throughout the years in PM Modi's regime has been projected in the book. The book is a big addition to the relentless research on Ambedkar and his ideas and will be a significant contribution in that direction. Bureau Report, Republic TV. Now, there are leaders who make a lasting impression on their people, and Prime Minister Modi is one of them. As he turned 72, here are some of the recollections of his empathetic and understanding nature. Prime Minister Modi makes an impression wherever he goes. As he turned 72 today, his colleagues and supporters recollect his empathetic and understanding nature. ग्राम प्रधान महिला जो थी थोड़े छोटे कद की थी, तो मंच पर जो पोडियम और उसके ऊपर माइक लगाया गया वो अपने छोटे कद के कारण उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। बड़ी मन को छूने वाली सी घटना थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा, वो अपने स्थान से उठे, पोडियम तक गए और उन्होंने अपने हाथ से स्वयं उस माइक को नीचे करके महिला के चेहरे तक लाकर उसको एडजस्ट किया और उसके बाद वो जो हमारी ग्राम प्रधान थी उन्होंने सरलता के साथ अपना भाषण दिया। कि जब हम उनसे मिलते हैं तो मिलने के पहले लगता है कि हम विश्वमान्य नेता के साथ मिलने जा रहे हैं, देश के ऐसे प्रधानमंत्री के साथ मिलने जा रहे हैं जो नरेंद्र मोदी, जिनके दुनिया के बड़े बड़े
शक्तिशाली राष्ट्र उनके लिए वो 5 मिनट पहले ही खड़े हो जाते हैं कि उतरने वाले हैं, आने वाले हैं। उनसे जब आप मिलिए तो मुझे लगता है कि मैं तो किसी मंडल अध्यक्ष से मिल रहा हूँ। One was of this young girl who had a valve which was in the heart which was not working, and she needed a valve replacement surgery. She could not afford the cost of the valve. Once Ayushman Bharat started and she was entitled to it, she got the valve replacement done at our hospital. I remember talking to her mother and she was so grateful to the Prime Minister. She kept taking his name and saying that because of him, her daughter is now doing so well. मैंने गुजरात में देखा है कि एक सदर्न स्टेट से वो सीएम का कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे सारे मंत्री और ये सब साथ में, तो एक सज्जन बाहर रोड पे खड़े थे। नरेंद्र भाई ने अपनी गाड़ी रोकी और पूछा क्यों खड़े हो, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि शायद वो छुट्टी पे या कुछ आए थे गुजरात अपनी पत्नी के साथ, और पत्नी शायद केरल के सज्जन थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट विच स्टेट। पत्नी बीमार हो गई थी तो अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी और उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे। तो मुझे याद है नरेंद्र भाई ने कहा था कि मैं पैसे दे दूंगा, चिंता नहीं करो। Such is Prime Minister Modi's persona that anyone who meets him is sure to be left spellbound. कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अगर हर गरीब परिवार तक वैसी ही ज़िंदगी अगर हम दे सकें, रहने के लिए अच्छा घर हो, खाना बनाने के लिए गैस हो, बिजली कनेक्शन हो, बच्चों का टीकाकरण हो, क्रेडिट की मुहैया हो, उनके अपने स्वयं सहायता समूह या संगठन हो, तो जहाँ तक ये एसेट बेस इम्प्रूव करेगा तो वो परिवार अपने आय और एम्प्लॉयमेंट सभी चीज़ की देखरेख फिर अच्छे से कर लेगा। तो ये सोच बहुत मजबूत रही है माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हमारा इंटरव्यू पोस्टपोन किया और उनको ले लिया। जो मालधारी बहन थे उनको ले लिया और मोदी साहब ने उनको इतना अच्छी तरह से सुना और उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया। मैंने पहली दफ़ा किसी नेता को देखा कि वो जो आम जनता के जो प्रश्न थे वो अपने प्रश्न समझ के उसको सुलझना। As wishes pour in for Prime Minister Modi's 72nd birthday, he is fondly hailed as India's understanding Prime Minister with a difference. Bureau Report, Republic TV. And from Namibia to India, cheetahs are back in India after 70 years. The most renowned speakers, the most acclaimed legal eagles, the most distinguished academicians, and the biggest newsmakers come together on the most esteemed stage. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई? हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया कितना अच्छा लगा। अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे या अपने झंडे के ऊपर गर्व नहीं करेंगे या अपने नेशनलिस्ट होने का गर्व नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको ही क्वेश्चनेबल है। I've traveled almost every country in the world and I'm proudly saying that we need to be proud that we are Indians. For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? Mr. Jethmalani felt very passionately about this issue and had written several articles. He was an ardent believer that the issue promoted both social harmony and indeed promoted nationalism as well. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pita Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset. Not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail.
third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series has the need for a uniform civil code become imperative to Now, as Prime Minister Modi turned 72, Rajya Sabha MP and former Union Minister for Environment, Forests and Climate Change, Prakash Javadekar, spoke about Prime Minister Modi's bold initiatives in protecting India's wildlife and the environment. As Prime Minister Modi turned 72, the nation hails his contribution, not just to the environment, but preserving India's wildlife. और अब तो चीते जो लुप्त हुए थे वो भी प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं। तो ये उनका प्यार है प्रकृति का, और इसलिए भारत फले फूले और भारतीय जीवन शैली का उन्होंने दुनिया में प्रचार किया और नारा दिया कि वन प्लैनेट मेनी एफर्ट्स। And who can forget how Prime Minister Modi put the nation on the world map, giving wings to the International Solar Alliance. जहाँ सोलर एनर्जी बहुत अच्छी तरह से आ सकती हो सकती है, उन देशों का संगठन बनाना चाहिए, लेकिन उस समय नहीं बना। प्रधानमंत्री ने पेरिस में वो सफल कर दिखाया। आज 100 से अधिक देश इस अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के पार्टनर है। ये मोदी जी की लीडरशिप है। With 109 countries joining the alliance, the signatories have vowed towards making solar energy 24/7 affordable to all. Bureau Report, Republic TV. A very short break will get you live updates on the other side as world leaders begin to arrive for Queen Elizabeth II's funeral. For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? Mr. Jethmalani felt very passionately about this issue and had written several articles. He was an ardent believer that the issue promoted both social harmony and indeed promoted nationalism as well. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th, only on Republic TV. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pida Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset, not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series has the need for a uniform civil code become imperative today. Honorable guest speakers Shri Arif Muhammad Khan, Justice Kurian Joseph, Shrimati Madhavi Goradia Diwan, Shri Asaduddin Owaisi, Shri Baijayant Jay Panda, Shri Faizan Mustafa. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series, 17th September from 5 p.m. to 7 p.m. only on Republic TV. भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, we will create a global news organization from the soil of India. जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़, दोनों दिशा. You may be one of the channels
which is a national channel going regional and international both at the same time. My best wishes to you and your group. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान. Welcome back. Now, former ISRO chief K. Sivan recollected how Prime Minister Modi lent a shoulder of support at the time of failure of Chandrayaan-2 mission. India has come a long way in its space story. Prime Minister Modi's space appetite was testament to launching India's ambitious mission, the Chandrayaan-2, in 2019. If successful, could put India in League of Nations to land on the moon. But as luck would have it, ISRO lost contact with Vikram lander and it crashed on the moon's surface due to the last-minute technical glitch. And on to breaking news coming in. Now we are given to understand that the CBI has moved a special court in the national capital seeking cancellation of bail that was granted to Tejasvi Yadav over his press conference where he allegedly threatened the officers of the CBI. So CBI moving court over the alleged threat to officers by Tejasvi Yadav. CBI is there seeking cancellation of bail that was granted to Tejasvi Yadav. We'll try and go across to Prakash as well to get us more details, but that's the breaking news coming in. In fact, speaking at a press conference on 25th of August, Tejasvi Yadav had said, and I quote, "Do CBI officials not have a mother and children, or do they have a family? Will they always remain CBI officers? Will they not retire? Will only this party remain in power?" That was in fact the remark that was made by Tejasvi Yadav while he was doing this press conference on 25th of August. CBI there moving court seeking cancellation of the bail that was granted to Tejasvi Yadav. So fresh trouble there mounting for Tejasvi Yadav. We have a senior editor, Shravan Sen, also joining us. Shravan, if you could give us more details on this fresh trouble for Tejasvi Yadav. Well, in fact, the latest details we are picking up is that based on the comments that were made by the Deputy Chief Minister of Bihar, Tejasvi Yadav, which effectively the Central Bureau of Investigation saw it as threatening the officials. This came just perhaps hours after the Central Bureau of Investigation had carried out searches at multiple locations in the Land for Jobs scam. It turns out that not only this, there is another case that they are essentially looking at, in which they are looking at the role of a CBI investigating officer. The investigating officer in this particular case met with an accident while he was on his way to his hometown. So they are essentially finding out whether at all this is a pre-planned conspiracy to target the investigating officer of the Land for Jobs scam, and whether at all there is any link with those who are accused in this particular case. Right now, it remains to be seen how exactly will the CBI court essentially respond to it, given the fact that there is evidence that has been gathered by the Central Bureau of Investigation, and they are pressing upon the fact that they want immediate action to be taken against the Deputy Chief Minister of Bihar, Tejasvi Yadav, on the grounds that he has basically threatened officials who are carrying out their own duties. Yes. All right, Shravan, thank you for getting us all those details. So CBI there moving court over threats to officers that were given by the Deputy Chief Minister of Bihar. CBI there, in fact, arguing in the court that Tejasvi Yadav tried to influence and there was, in this particular case, and there was a conspiracy that was hatched, is what the CBI is alleging. Remains to be seen what really happens next. But that's the breaking news coming in. Trouble there mounting for the Bihar Deputy Chief Minister. So, tracking closely all the updates coming in on this big story on special, in fact, the CBI moving court and seeking cancellation of the bail that was granted to Tejasvi Yadav over his press conference where he had allegedly threatened the officers of the CBI. And these remarks were in fact made by Tejasvi Yadav while he was addressing a press conference on 25th of August. We are also given to understand that in its application for cancellation of bail, the CBI has alleged that Tejasvi Yadav threatened CBI officials, thereby influencing the case, which amounts to defying of the bail conditions.
Slipping into a very short break, but on the other side, we'll get you more details on this case as CBI moves court seeking cancellation of bail to the Bihar Deputy Chief Minister. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series. Has the need for a uniform civil code become imperative today? Honorable guest speakers Shri Arif Muhammad Khan, Justice Kurian Joseph, Shrimati Madhavi Goradia Diwan, Shri Asaduddin Owaisi, Shri Baijayant Jay Panda, Shri Faizan Mustafa. The third edition of Ram Jethmalani Memorial Lecture Series, 17th September from 5 p.m. to 7 p.m. only on Republic TV. भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, we will create a global news organization from the soil of India. जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़ दोनों दिशा यू मे बी वन ऑफ द चैनल्स which is a national channel going regional and international both at the same time. My best wishes to you and your group. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। वर्ल्ड में, विश्व में जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि जी। एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, you cannot term them as a Pakistani and Bangladeshi. They are Hindu, they are proud Hindu. They are India. The most renowned speakers, the most acclaimed legal eagles, the most distinguished academicians, and the biggest newsmakers come together on the most esteemed stage. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई? हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया कितना अच्छा लगा। अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे या अपने झंडे के ऊपर गर्व नहीं करेंगे या अपने नेशनलिस्ट होने का गर्व नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको ही क्वेश्चनेबल है। आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट वी नीड टू बी प्राउड दैट वी आर इंडियंस। For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? Mr. Jethmalani felt very passionately about this issue and had written several articles. He was an ardent believer that the issue promoted both social harmony and indeed promoted nationalism as well. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. Eight cheetahs from Namibia found their new homes in India after they were released in the Kuno National Park in Madhya Pradesh. Prime Minister Narendra Modi, who is celebrating his birthday, released the wildcats into an enclosure spread over 10 kilometers, 7 decades after the species was declared extinct in the country. At Kuno National Park, PM Modi stood on the dais under which cheetah cages were kept and released 3 of them into an enclosure by operating a lever. The 3 wildcats quickly pranced into the wild.
The park is situated on the northern side of the mountains and is spread across 344 square kilometers. The release of wild cheetahs is a part of Diversify India's wildlife and its habitat under Project Cheetahs, the world's first intercontinental large wild carnivore translocation project. Bureau Report, Republic TV. Slipping into a very short break, on the other side we'll get you more updates as the world leaders gather to pay final tributes to Queen Elizabeth II. Fulfill your dream of studying at the world's leading universities, and that too at a reduced cost with Amity's Global Study Program. Study in India with Amity for some years. Then take a transfer to leading universities in the USA, UK, Canada or Australia and earn a foreign university degree. Apply at amity.edu/globalstudy. आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। वर्ल्ड में, विश्व में जहां में भी हिंदू है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि है जी। एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, you cannot term them as a Pakistani and Bangladeshi. They are Hindu, they are proud Hindu. They are India. The most renowned speakers, the most acclaimed legal eagles, the most distinguished academicians, and the biggest newsmakers come together on the most esteemed stage. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. नेशनलिज्म की कितनी जरूरत है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स हमारी जो एक सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल अरीना में ये क्यों शुरू हुई? हर घर तिरंगा का जो पर्व मनाया गया कितना अच्छा लगा। अगर आप अपने देश का गर्व नहीं करेंगे या अपने झंडे के ऊपर गर्व नहीं करेंगे या अपने नेशनलिस्ट होने का गर्व नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको ही क्वेश्चनेबल है। आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट वी नीड टू बी प्राउड दैट वी आर इंडियंस। For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? Mr. Jethmalani felt very passionately about this issue and had written several articles. He was an ardent believer that the issue promoted both social harmony and indeed promoted nationalism as well. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pida Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. There's a very famous saying in Pakistani Punjab, Khanda Pida Laheda, Baki Ahmad Shahida. Whatever you eat is yours, and everything else, including the clothes on your body, belong to Ahmad Shah. This is the truth of what the invaders did. But Pakistanis would celebrate those invasions because that is what they wish to be, is something that has deeply scarred the Pakistani mindset, not knowing who they are, not knowing where they are going. Any society, any nation without a compass, without a sense of direction is bound to fail. स्मृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आज बहुत व्यस्त शेड्यूल है, मुझे पता है, और उसके बीच आप हमारे लिए आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं और एक बात कहना चाहता हूँ अपने इंट्रोडक्शन में कि मैं जब भी आपके साथ बातचीत करने का मौका मिलता है तो मैं थोड़ा सा बैकफुट पे रहता हूँ, बिकॉज मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप टीवी एंकर होती तो किसी और को बोलने नहीं देती। इसलिए जितना हो सके मैं
आज अभी बोल देता हूं कि मैंने स्मृति ईरानी के पॉलिटिकल करियर को और प्रोफेशनल करियर को विथ एडमिरेशन, विथ ग्रेट एडमिरेशन, मैंने मोर देन 20 इयर्स से मैंने ऑब्जर्व किया है। जब से आपने पहली बार दिल्ली से यू फॉट एन इलेक्शन एंड पीपल अंडर एस्टिमेटेड यू, और आपको हर बार आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स ने, आपके आलोचकों ने, कई लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया है, एंड यू ऑलवेज कम ऑन टॉप, एंड आई थिंक देयरफॉर शी फुल्ली डिजर्व्स अ स्ट्रॉन्गर राउंड ऑफ अपलॉज एट द स्टार्ट for the kind of leader she is, for the professional she is, and if there is a self-made person in politics and in her professional life, it is, I'm sure Anupam ji will agree with me, it is one and only Smriti Irani. So I wanted to say all this. धन्यवाद अर्नब जी। मैं तो अचंभित थी जब आप अनुपम जी के साथ क्लिष्ट हिंदी में वार्तालाप कर रहे थे। अरे मेरे एग्जामिनेशन में फेल कर चुका हूं, और मैं आनंदित थी कि ये मौका मुझे भी मिलेगा। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि मैं इस कुर्सी पर बैठी और आप अंग्रेजी में बोलने लगे। लेकिन मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने, सही मायने में बहुत कम लोग हैं हिंदुस्तान की मीडिया में जिन्होंने मेरे राजनीतिक सफ़र को और मेरे मीडिया के कार्यकाल को देखा होगा। ये भी कहना उचित होगा कि आज आप जो प्रशंसा मुझ पर यहाँ पर बौछार कर रहे हैं, जिस प्रशंसा की, आप उतनी ही तीखी वाणी में कई बार मेरे खिलाफ टिप्पणी भी कर चुके हैं। मुझे लगता है यही एक सच्चे पत्रकार की सबसे अच्छी निशानी है। जी जी, कई बार हो चुका है, कई बार हो चुका है जी, और शायद कई बार हो भी सकता है, बिल्कुल, इन द फ्यूचर। मेरी तलवार हमेशा थी भी और आज भी धारदार है, जब कहें मयान से निकालने के लिए तैयार हूँ। जी, बहुत वायरल क्लिप्स है आपके। स्मृति जी, अभी मैं शुरुआत करता हूँ, अनुपम खेर जी ने जो बात कही इधर, तो मैंने इनको सवाल पूछा था कि इस देश में कई ऐसे लोग हैं जिनकी बात को सुन के हमें गुस्सा आता है, और हम राष्ट्रवादी चैनल हैं, हम नेशनलिस्ट चैनल हैं, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, बांग्ला हो, हमारे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। हम अपने आप को देश के सबसे नंबर 1 पत्रकार या सबसे बेबाक चैनल या फिर सबसे तेज़ चैनल ये नहीं कहते, मगर हम कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं। और इसलिए हमें गुस्सा आता है जब लोग राष्ट्र के खिलाफ बात करते हैं। और बहुत गुस्सा आया था पिछले हफ्ते जब मुझे पता चला कि जिस शहर में मैं रहता हूँ, मुंबई में, वहाँ पर याकूब मेमन के लिए एक मेमोरियल बनाई जा रही है। याकूब मेमन के लिए मार्बल की मेमोरियल बनाई जा रही है, याकूब मेमन के लिए। और गुस्सा आता है जब लोग अफजल गुरु कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। मगर अनुपम खेर जी को, जो मैं जिनको बहुत मानता हूं, मेरे बड़े भाई की तरह, उन्होंने कहा अर्नब आप इग्नोर करो। और मैंने सुना, और अब तक मैं सोच रहा हूं अनुपम जी कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है इग्नोर करने में। आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेकर? देखिए, सहनशीलता सदैव एक राष्ट्रवादी का श्रृंगार नहीं हो सकता। बार बार ये कहना कि सर झुकाकर सब कुछ सुनो, सब कुछ सहो, यही तुम्हारा संस्कार है, ये किसी भी राष्ट्रवादी को मंजूर नहीं। आप अनुपम खेर जी की तरफ संकेत दे रहे हैं, ठीक उनके साथ पुष्पेंद्र जी बैठे हैं जी। तो शायद मेरे धर्म का, मेरी कौम का, मेरे समुदाय का अगर कोई विशेष अंश है तो वो ये कि हर प्रकार का तर्क रखने वाला आपको व्यक्ति मिल जाएगा। कुछ जो सज्जनता से कहें, कुछ जो संवेदनशील हैं, कुछ जो सहनशील हैं, लेकिन कुछ जो ठोस मुद्दों पर क्रोधित होने से भी शर्माते नहीं हैं। क्योंकि सालों साल से समाज में ये कहा गया है कि अगर गाल पर एक चांटा मारा जाए तो दूसरा गाल आगे कर दो जी। प्रश्न ये उठता है कि दूसरा गाल कब तक और क्यों आगे बढ़ाओ। प्रश्न ये उठता है कि जिनको आप इग्नोर करते हैं वो आपकी चुप्पी देखकर कानून को किस मर्यादा तक खींचते हैं और कितने आनंद के साथ उस कानून को तोड़ते हैं। तो अगर आपको गुस्सा आता है कि एक आतंकवाद में लिप्त व्यक्ति की संगमरमर की क्यों एक दहलीज बनाई जाती है, मज़ार बनाई जाती है, तो ये क्रोध आपको हाइपर नेशनलिस्ट नहीं, एक राष्ट्रवादी बनाता है। क्योंकि अगर आतंकवाद का धर्म नहीं तो आतंकवादी की मज़ार कैसे हो सकती है?
तो इसीलिए गुस्सा होना वाजिबी है। और ये अनुपम जी मेरे सीनियर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो मैं कभी भी इनकी बात से सार्वजनिक असहमति कभी भी प्रदर्शित नहीं करती। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसके रगों में हिंदुस्तान का खून दौड़ता है वो हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी है। इसमें 90 और 10 का कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं। इसलिए हर हिंदुस्तानी जो संविधान को न सिर्फ सम्मान देता है बल्कि उसके संरक्षण में कोई भी कदम उठाने के लिए कानून की मर्यादा में तैयारी दिखाता है, वो हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी का मतलब क्या? राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना। हम राष्ट्र को माँ कहते हैं, तो क्या कभी बच्चे से कहते हैं अपनी माँ को प्रेम करो लेकिन ज़्यादा मत करो? कभी किसी बच्चे से कहते हैं अगर ज़्यादा प्रेम कर लिया तो यू आर हाइपर एज ए चाइल्ड टुवर्ड्स योर मदर? कभी नहीं कहते। तो इसको मेरी दृष्टि से अगर आप पूछें तो मैं राष्ट्र को जननी मानती हूँ, और आपकी माँ का अगर अपमान हो तो क्या आप सर झुकाकर इग्नोर करेंगे? ये प्रश्न हर हिंदुस्तानी को अपने आप से पूछना चाहिए। और इन विषयों पर चर्चा होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे एक और आयरनी है कि जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र, और कहते हैं डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो गई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो गई, इमरजेंसी जैसी माहौल बन गई फिर से। वही लोग ने दम तब तोड़ा, और मैं इसलिए आपको भी रोक रही हूँ। ये लोग जो कहते हैं डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी उस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दम तब तोड़ती है जब आप मेरिट के आधार पर नहीं, जेनेटिक्स के आधार पर नेता तय करते हैं। डेमोक्रेसी दम तब तोड़ती है जब आप एक प्रधानमंत्री को, एक शख्स को नॉमिनेट करते हैं और उनके सर पर सुपर प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं जो पार्लियामेंट के अधीन नहीं। डेमोक्रेसी तब दम तोड़ती है जब आप उस व्यक्ति के साथ जो प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित मात्र इसलिए हैं क्योंकि आपने नॉमिनेट किया, उस व्यक्ति को विवश करते हैं कि आओ एक ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाओ, उसकी पीठ पर हाथ रखो जिसने ना सिर्फ कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारा बल्कि एयरफोर्स के ऑफिसर्स को भी नहीं छोड़ा। डेमोक्रेसी तब दम तोड़ती है जब आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधानमंत्री का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। और डेमोक्रेसी तब दम तोड़ती है जब एक महिला का आप तिरस्कार और उसका अपमान मात्र इसलिए करते हैं क्योंकि वह आदिवासी समुदाय से है और क्योंकि उसको एक राजनीतिक पक्ष ने उस महिला को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के नाते समर्थन दिया और घोषित किया। तो डेमोक्रेसी ने कैसे कैसे यूपीए के शासन में दम तोड़ा, इसके तो आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। उदाहरण तो है, मगर मेरा सवाल ये था कि जो लोग डेथ ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं स्मृति जी, वो कहते हैं कि देखिए हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी है और हम राष्ट्र की आलोचना नहीं कर रहे, हम नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मगर मैं जरा एक जब आप अपने पक्ष में एक ऐसा नेता खड़ा करते हैं और उसको उत्तर प्रदेश में समर्थन देते हैं जो सरेआम ऐलान करता है कि नरेंद्र मोदी को मैं मौत के घाट उतार दूंगा, जब आप एक ऐसी यात्रा करते हैं जिसमें आप कहते हैं कि मैं राष्ट्र को जोड़ने की बात करता हूं, लेकिन जिसने एक यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान के टुकड़े होने का नारा दिया उसकी पीठ थपथपाते हैं, तब आपको लोकतंत्र तो आप कह रहे हैं आप इग्नोर नहीं कर पाते उसको? नहीं, तब आपको चिंता नहीं होती लोकतंत्र की। लोकतंत्र क्या अपनी यात्रा के लिए सब्जी वाले को पीटना है चंदा बटोरने के लिए? आज अनुपम जी बात कर रहे थे कश्मीर फाइल्स की, आकर समर्थन दिया, कभी भी बोला फिल्म तो छोड़ दीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा आज कर्तव्य पथ पर विराजमान है, राष्ट्र का वो गौरव है। कहीं भी उस राजनीतिक पक्ष से आपने आनंद की अनुभूति देखी? मैं सिर्फ तो जो खुद सिकुड़ चुके हैं। नहीं, मैं सिर्फ दूसरे पक्ष को आपके सामने रखते हुए
जो अंग्रेजी में आप कॉन्ट्रेरियन पोजीशन मान ले, और मैं आपको खोलकर कहना चाहता हूं, ऑडियंस भी जानती है कि मैं आपसे पूरी सहमति में हूं, मगर कॉन्ट्रेरियन पोजीशन ये होगा कि सिंबोलिज्म की जरूरत क्या है। जो कहते हैं कि एक सेकंड, हर घर उनको एक सेकंड सिंबोलिज्म की जरूरत क्या है? सिंबोलिज्म की जरूरत नहीं तो हर पथ से जहां पर गांधी खानदान का नाम है वहां से नाम हटाएं। अगर सिंबोलिज्म की जरूरत नहीं है तो हर हवाई अड्डे, बस अड्डे पे जहां पर उस खानदान का नाम है, नाम हटाएं। अगर सिंबोलिज्म की जरूरत नहीं है तो उस खानदान का अध्यक्ष पद पर रहना भी जरूरी नहीं है। तो आप खानदान का नाम हटाते क्यों नहीं? सरकार तो आपकी है। देखिए, मैं तो आनंदित हूं अगर कांग्रेस पार्टी इम्प्लोड करती है। आप इस खुशफहमी में मत रहिए कि मैं बहुत ही चिंतित हूं कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। मैं तो सरेआम कहती हूं आनंदित हूं, क्योंकि जिन्होंने वर्षों से गरीबों का घर फूंका आज उनका घर जल रहा है, ये मेरे लिए आनंद की बात है। जिन्होंने वर्षों से हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश की, आज उनकी पार्टी टूट रही है, ये मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है। मैं तो आनंदित हूं। कल के बनाए आज बनाए, उससे भारत देश हमारा, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा उसका? कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर गांधी परिवार, वाड्रा परिवार, गांधी परिवार को भारत 2 जनरल इलेक्शंस में नकार चुका है। अगर खानदान अभी भी जागृत नहीं हुआ तो मैं तो इतना कहती हूं कि देश जागृत हो चुका है, मेरिट के और विकास के पथ पर चल चुका है। वो चले या ना चले क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो खानदान को बचाने के लिए चल रहे हैं, हम राष्ट्र को बचाने के लिए चल रहे हैं। ये फर्क है। किस चीज से बचाने की कोशिश है? उस सोच से जो मेरिट को ध्वस्त करती है, उस सोच से जो गरीब को उसके अधिकारों से वंचित रखती है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूं आपको। इस विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक स्तर पर अगर आप कोई हेल्थ प्लान देखें तो वो है आयुष्मान भारत योजना। 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए की सालाना मदद 24,000 अस्पतालों में। जब इसकी घोषणा हुई तो कई कांग्रेस के नेताओं ने इसका मजाक उड़ाया कि कैसे संभव होगा कि गरीब राष्ट्र में हर गरीब की सुविधा हो जाए इसमें। आज एक महिला होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ, हमारे समाज में कहा जाता था कि ब्रेस्ट कैंसर हो या सर्विक्स का कैंसर हो, सामाजिक बाधाएं और सांस्कृतिक और संस्कारी बाधाएं इतनी है कि महिला कभी भी उसके बारे में खुलेआम चर्चा नहीं करती। विशेष लोग ये टिप्पणी करते थे कि ग्रामीण अंचल की महिला तो बिल्कुल भी ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए बाहर भी नहीं निकलती। अर्नब जी, आज आयुष्मान भारत की अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है बाकी उपलब्धियों के साथ, वो ये कि देश की 8 करोड़ गरीब महिलाओं ने अपने आप को किसी अस्पताल में जाकर मुफ्त आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग कराया, सर्विक्स के कैंसर का स्क्रीनिंग कराया। वो गरीब औरत इंतज़ार में थी कि कोई तो ऐसा आता और मुझे कोई तो ऐसा सरकार में साधन देता। प्रश्न ही उठता है कि ये लोग कहते थे कि सरकार में इतना दमखम नहीं है कि इस देश की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझा जाए। अगर तुम में दमखम था तो इन 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए तुमने ये योजना क्यों नहीं बनाई? उन्होंने कहा हमने मनरेगा बनाई। हमने मनरेगा में क्या बनाया? सब्सिडीज दी। मनरेगा में क्या बनाया? नौकरियां दी। मनरेगा में क्या बनाया? नौकरियां दी। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने आकर कहा, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, नौकरी की बात कर रहे हैं भाई साहब। मैं अमेठी की सांसद हूँ, 499 फैक्ट्रीज तो अमेठी में बंद करा दी 10 साल में महाशय ने। किस नौकरी की बात कर रहे हैं आप? एक ही आदमी, एक ही परिवार नौकरी में था। मनरेगा में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कहा देश के लिए कैपिटल एसेट्स बनाइए। सीधा एक व्यक्ति के बैंक के खाते में, ठेकेदार को नहीं बल्कि व्यक्ति के बैंक के खाते में पैसा डालिए। व्याकुलता उनकी इस बात से है कि सीधा गरीब के बैंक के अकाउंट में पैसा जा रहा है भारत की तिजोरी से, वाया मीडिया उनकी जेब में नहीं आ रहा। व्याकुलता मात्र इस बात की है। आप बताएं,
आज वो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी क्या प्रफुल्लित हुई थी जब वो सदन में 370 का समर्थन कर रहे थे और नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे? डेमोक्रेसी क्या प्रफुल्लित हुई थी जब उन्हें देश की सेना से जवाब मांगा कि बताओ बालाकोट में क्या हुआ? डेमोक्रेसी क्या प्रफुल्लित हो रही थी जब वो देश को किस प्रकार से और खंडित कर सकें ऐसे राजनीतिक प्रस्ताव वो ला रहे थे देश की संसद में? मगर लोकतंत्र को फायदा क्या होगा अगर हमारा देश ऐसा बने और हमारी जो राजनीतिक ढांचा है वो इस तरह का बन जाए कि भारत में सिर्फ एक ही पार्टी हो? नहीं, मैं बात रख लूं। क्या डेमोक्रेसी प्रफुल्लित हो जाएगी स्मृति जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एक राष्ट्रीय लेवल की कोई एक पार्टी खड़ी ना हो, और अगर 2024 के चुनाव में या 2029 के चुनाव में एक भी पार्टी आपको नेशनल लेवल पे कंपीट ना कर पाए, तो क्या हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है? भारतीय जनता पार्टी इसलिए खड़ी है क्योंकि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। ऑपोजिशन इसलिए ध्वस्त है क्योंकि देश की जनता ने वो खेमा छोड़ दिया है। वो तो और ऑपोजिशन को जिंदा रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जिनकी है वो इस वक्त टहल रहे हैं देश में। वो कह रहे हैं जितना हम हो सकते हैं, जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारे खिलाफ ये एजेंसीज को लगा देती है भारतीय जनता पार्टी। आप लूटे देश को फिर कहें कि कोतवाल मेरा दरवाजा ना खटखटाए, ये संभव है? और जितने भी ये केस हैं ये कब शुरू हुए थे? जब कार्यकाल यूपीए का था। मगर कोतवाल 7 साल तक कहां थे? मगर कोतवाल 7 साल तक कहां थे? अभी अचानक देखिए, या तो आप ये कहें कि बिना पक्षपात के इन्वेस्टिगेशन हो, या तो आप ये कहें कि कोतवाल पॉलिटिसाइज्ड है। अगर बिना पक्षपात के इन्वेस्टिगेशन होगी तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को अपनी प्रक्रिया के हिसाब, अपने समय के अनुसार चलना पड़ेगा। बहुत समय लग जाता है, कभी कभी ढींगरा